इतना इतना बड़ी इतना इ- इतना बड़ी हो गई हो, बिया नहीं हुआ क्या? हम्म, लगता है कोई अभी तक तुमको छुआ नहीं। हम्म, गड़म 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 गड़म। क्या हार गई क्या? कितना? किसने मार दिया भाई इतना? नारायण मूर्ति। उसका बस एक ही काम है, वो जा वो जाता है, मारता है बस। हम्म, 5 5 छक्के मारे बेंच से तुझने? देख कितना अच्छा जोक मारा है इसने, देख कितना हंस रहा है इसमें। तो हंस ले भाई, तो हंस ले। हाय, रोल क्यों नहीं हो रहा है? सतहत्तर। जो धोया। बेचारा हार गया भाई। नहीं नहीं, वो अच्छा खेले वो लास्ट में आके हक दिया उन्होंने बस। 1-1 था। 2-1। नहीं नहीं, ये फेज वर्सेस स्पिरिट कल था। पता नहीं यार, कहीं फर्क पड़ता है। केवीसर का तो ऐसे भी गलत हो गया। अगली बार ना कि पिकएम केवीसर बताएंगे, ठीक है ना केवीसर? यस। हाँ। पीवीआर मैं तो ले लेता है ना हमारे। बी बैठ जा बैठ जा बैठ जा। तीन पे तीन। 854 है। पीछे गए। ए पे नेड आया। एक बंदा ये आ जाओ, नीड नहीं हो डिकॉय का एक बंदा बी है। लाइव भी देख लियो। वल्गन तू लाइव कर, एप्स का क्लियर है, एप्स क्लियर है। मी टू वॉक इन। कहां में बैठा रहता है? मी टेक है 2 एक बी। एक और मैं shot है, छुपा नहीं यार साइड एक। आ रहा हूँ। एक पिट की इधर पे। हाइड रेन नाइस को शॉट, लास्ट साइड वेट कर आंदे। शॉट गया, Flag हो रहा है। पिक मत ले पिक मत ले।
नीचे ए, नीचे शॉट लैग कम लैग है। लैग। बॉम्ब है मैं बॉम्ब। छुपाऊं, अब मैं छुपाऊं। आप पास देख रहा हूँ। हम्म। ऐप से भाई, और मैं बच सोच गया रहा हूँ मेरा नेट हग रहा है ये। नहीं यार ये पता नहीं क्या सीन है भाई इसका CS2। CS2 के सर्वर ही टट्टी है भाई। देखा देखा भाई, देखो देखो केवल नाम देखा? का अपग्रेड है, बाकी देखा भाई, देखा वो मेरे कैसे को चिल्ला बोलते रहा थे हूँ, भाई। देखा देखा। देखो मेरे को, फिर मेरे को बोलते थे भाई। देखा हाँ, तूने देखा, देखा? पूरा देखा। भाई तेरा नेट खराब है भाई, बाकी गेम में तो सही आ रहा है, CS क्यों खराब हो रहा है मेरा? Apex क्योंकि में तेरा नेट खेलता खराब था है। spot। भाई मेरा FPS में ठीक आता है। मैं मिड मॉली कर रहा हूँ अभी भी। वो क्लोज कर दे मैं डीप पे। तेरे पे Keep down. Wants to fucking die. अरे Keep better- set. कोई और लाइव करोगे? ये एक साला बहुत लो है यार। 10 FPS में चल रहा है ये। अटक गया भाई, keep क्या काम है? एक बंदा था बनाना पहले। यही आ रहे अच्छा हैं, है। यही आ जाओ दिखी तो ना। हाँ, ये तो इसकी तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कोई ढंग के बंदे से लाइव कराओ। बंद करेगा। समझे लेना। और मिड दो। SMG वन पे दो। एक बंदा लो है। शॉट। तीन चार। नाइस नाइस नेड। सारे लोटे पे। वेलकम छुप जा। मिड देख लेगा बॉम्ब। बॉम्ब भी देख लेना होगा तो। बॉम्ब है। एप्स एप्स ला। हाँ समझे। जो यहाँ खड़े खड़े डिगल से शॉट नहीं लगते, वो भागते भागते मार गया मैं। और पता है कामे को कितने किल मिले एक नेट से? देना है ड्रॉप देना है। तो 2 किल मिले। 4 3 2 वो मिले दे रहा ना, हूँ, ड्रॉप दे दे रहा रहा हूँ, हूँ। ड्रॉप दे रहा हूँ। कामे के ख्याल से किल्स का माइनस कर देते ना। कामे तेरे अब 2 किल बस। ओके ब्रो। अभी के भी ऐसे बहुत ज्यादा है। डीप क्लोज कर। करो। अब सही चल रही है। क्या चल रहा है? शॉट आ रहे कम। एप्स ओ भाई ज्यादा दौड़ दो। एप्स में हाइड आर शेयर करियो। एक साइड है, पिट है। मैं अटक गया कहीं तो। आजा मैं कहीं तो अटक गया। कोई नहीं, होल्ड कर लो आराम से, हाइड रहे। एक शॉर्ट का मेरे को दिखने पता ही तो नहीं कहाँ हूँ मैं। तो पता ही नहीं है वो कौन सी एक दीवार साइड पे है, एक पिट मिनी पिट है। पिट और साइड। अबे यार मैं नेड मार पिट है, दिया। साइड है। पिट वाला लो है। किट है मेरे पास। पिट है गब्बू। हाँ है तो मेरे पास। ऊपर दोनों का देख रहा था। दोनों एक ही जगह हैं। साइड मिनी पिट है। अबे घूम के आए सिटी से आ गया वो साइड वाला। 83 रपिट वाला। एक को मैंने 82 मारा और चला। उसका तो मैंने माने नहीं। एक तो तेरा मैंने मारा था 44 वाला। उसको मैंने 51 दिया था प्रीवियस मार। टिकल दियो वर्कन है। मैंने 46 मैं एस से राउंड ए जा रहा हूँ। जूस ले जाओगा। साइड पे ही खेल रहा हूँ यार मैं। भाई मत लगाया करो चूतिया में। अरे तो यार मैप ही नहीं बचा था। चढ़ नहीं पा रहा, जूस कर दे कुकड़ी। मेरे को तो यहीं खड़ा होना था। मेरा मिस हो जाए तो अंकल एक भी तर मैं जा रहा हूँ। दो भी? जाओ मैं भी जा रहा हूँ।
सॉरी अरे अरे यार हक दिया मैंने। एक बंदा डार्क गया है। आ जाओ रोटेशन दे दो आ guys। रहा एक 30 टैग है बंदा डार्क वाला। Shit यार। बहुत बढ़िया काम है। एक न्यू बॉक्स लास्ट न्यू बॉक्स न्यू बॉक्स से थोड़ा सा खाया 30-40 खाया मेरे से। सिटी पे करना है 43 खाया था मैंने। शेर से तेज किसको भागना है? शेर से तेज किसको भागना है? वैसे ही बोलूंगा मुझे सबसे ऊपर नहीं आना, मुझे वल्कन से ऊपर आना। चलो हटो बहन के लौड़ो, क्या खड़े हो गए दोनों के दोनों? गाड़ पड़ूं। घुसते ना इधर पे। बोल के क्या करो स्मोक करते हो जो किसी दिन मरेगा बेटा तो बैंग बैन कोई जाए एफ देख एक बनाना। सबका नाम ले दिया आई एम बेटिंग यू स्मोक कर देना पहले स्मोक स्मोक करके एक मिड है। एक मिड है कम है के वाला। एक और मॉली की रही तेरे पे मॉली है ठीक है स्मोक होएंगे तो मॉली कर दियो वहीं रुक अरे अपने अपनी इधर मॉली इनके पास वो स्मोक मॉली है यार वो टेक 9 के अभी दोनों ही साथ इधर ही आ जाना, हट के नीचे डबल पिक हो जाएगा। अब इतना घूम के थोड़ी आऊंगा 19 सेकंड रह गए सेव करा दिया तुम लोगों को बी चले जा जीते ही हैं मिड आना मिड आना। क्या कर रहा है ये? बॉयलर देख रहा हूं तेरा। वो मिल गया गाइस वो देखो टीस्पून से चला रहा है एक किल लिया तो एक ही से। अब हम पिछले राउंड ना टीस्पून खड़े थे तब भी आदमी अटक गया और हमें से बोल रहा होगा क्या है ये हरवाने के लिए बुलाता हूँ आप भी प्ले को दे गुजर में क्या? अभी तो वो चल खुद दे रहा है क्या फर्क पड़ता है? डीप करियो। उसको पैसा मिल रहा है पैसा। साथ में मैं भी जा रहा हूं बॉयज। ऊपर बना ओए ऐप से साउंड है एक चढ़ा मुझे बूस्ट ले ले। वापस जा रहा हूं मैं, देख लेना तुम। यल्ला इसको Throwing smoke. Incendiary. Laying down smoke. बी के दोस्त में तो है गाइस भी आना। Grenade. वो दो बंदे ठीक है एक का पता भी एक और बनाना है। दो साइड बोथ साइड साइड ही था ये। साइड में ऊपर है पिक मत लेना। Grenade out. फ्लैशिंग साइड Deploying flashbang. डार्क की तरफ है वो प्लान नहीं ठीक है होल्ड रहने दो प्लांट करेगा वो। कहां जाएगा? स्मोक कर डार्क दूं में ही है। नहीं बी रिलोड कर रहा है नेट मार ले। नहीं अब मत पिक ले। नहीं अभी मत करो हो गया उसका बीबी फ्लैश है ना मैं पिक कर टाइम के बाद लूंगा मारेंगे, टाइम के बाद रुक जाओ। अच्छा ठीक ऐसे मत करो यार।
इंसानियत है तुम में ये। बीबी फ्लैश करता है साइड पे, टाइम के बाद हम जाएंगे तो। ये फ्लैश करते बनाना से। मैं बताता हूँ, लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड। हाँ ये रहा। आगे आगे साइड आगे। कर कर कर। अरे मैं वो बच के आया नहीं, वो बच भाग के के आ आया। गया बहनचोद, क्या करता? तो मर जाते ना, प्लांट थोड़ी बड़ी देते क्या ही रहता। गधा है भाई, एक नंबर का। अबे प्लांट हो जाता ना। नहीं होता यार। नहीं साले तूने ऑफ ले ली, वो साला एक ही के लिए भाग रहा था। अबे मुझे क्या पता, वो एक एक के लिए बोल तो रहा है नहीं, वो एक के लिए वो एक ही देखा वो ऑफ देखा, ऑफ लेने वाला था तो तूने स्विच कर लिया। और बीबी अरे मैं ऑफ लेने आ रहा था। वही तो मैं बोला। वो एक के डाल के अरे तो मेरे को क्या पता तू उठा लेगा जुतिए। मैं साल- इतनी देर से खड़ा है, उतनी देर से तो उसको देख रहा है तू। डिप कर रहा हूँ मैं, वो भी लास्ट सेकंड में उठाया। आया बनाना रश। ओ दो बन गए। आ जाओ गाइस, Throwing flashbang. एक और है। एक और है दो हैं, एक और है। यहाँ पे। सब फ्लैश हुए, सब फ्लैश हुए। इनके पुंगी बजा दी बे। भाई क्या मारा मैंने। Roger. इसमें 2-3 दिन के गैप से आया कर गब्बू तू। अच्छा नहीं होता। ये Come on, chop chop. ये एफटी क्यों खड़े हैं सारे? कौन है? कौन है? वो सर के मुंह में लंड ठूस रहेगा ऐसा लग रहा है। मैं डिप कर रहा हूँ। Throwing fire. Throwing grenade. आजा फॉरवर्ड ले लो। Grenade out. Throwing flashbang. Lead. एक और है। एक और है, टीरम पे था ऊपर। कितना प्रेस करेंगे ये? अरे मैं पूरा ब्लाइंड हो रखा हूँ। सामने Throwing smoke. क्या चेक कर रहे हो? ये चले ये जाओ, ये आ रहे हैं। Throwing flashbang. सिटी पे आ रहा है, सिटी आ रहा है, एक सिटी आ रहा है। अबे लगा कुछ नहीं इसको। वहाँ मतलब आज था वो लाइब्रेरी के कहाँ बाद मरा बे? शुरू में ऊपर से मर गया था ये। पानी लेके आता हूँ, तब मरना मत गब्बू। चल एंगल छोड़ यार। Smoke. और मेरे को लगा ही था वहां से आ रहा हो। Tango mine. मैं ड्रॉप दे सकता हूँ। ये तो ज्यादा अमीर बैठे हैं सब। रिस्की। We are good to go. कौन है कर? गब्बू क्या वो? Throwing fire. Incendiary in the area. Flashbang. इसमें Throwing a grenade. मैं मर जाएगा ऐसे, क्या कर रहा है अल्लाह? उनको थोड़ी बड़ा Laying ना down लड़ा हो। smoke. Incendiary. Laying down दोनों मर smoke. गए। मेरे से एक मिस होने दे। Grenade out. स्मोक बचा के रख। एक मिड पे है। लास्ट मिड है। मैं स्मोक ले रहा हूँ अपना। Deploying flashbang. मैं फॉरवर्ड ही चलते हैं ये। तू रैंप देख ले, मैं इधर देख रहा हूँ। देख रहा हूँ मैं यहाँ से। Where is this shit? गटर हो सकता है। गटर मेरे को पीछे साइड से नहीं दिखा। टीवी रूम क्या? टीवी रूम? वो कौन सा टीम या है? या वो ये रहा एप्स से बालकनी। ठीक है। या
हट ना नहीं अबे टैग है 50 टैग लो इसने लो नहीं किया यार इसको वर्क है हाँ मैं सपने आ रहे थे ये नाइफ करेगा हम दो हाँ तो ऐसे कैसे खड़ा है वो पूरे मैप में आप लोग कुछ कर नहीं रहे ऐसे प्लेयर दिख जाए बोले कि यार ले काम में 2 गोली मार दी तो नाइफ कर दे बचपन में लग गई थी क्या तेरे दिमाग पे देख रहा है वल्कन बहन चुला कितना चौड़ा हो रहा है अच्छा तो तू नहीं खेल पा रहा दो कौड़े का इंसान डिप करियो आ गए पीछा 2 और लगी लगी नहीं भेज दिया अबे अब मारना दीदी है क्या हुआ अच्छा नहीं खेल पा रहा मारा तो मैंने बहुत ये देख ओए लास्ट वो हीरा भी टैग था देख वो भी टैग था बहुत के नहीं है इसकी वाले मारी Where is the case? इन योर पाँव In your ass? पाँव तूने तो एक ही Skin मारा दिखाइए, ना skin तेरे को दिखाइए। एमवीपी क्यों मिला रे Skin दिखा भाई वल्कन That's a negative. सस्ती नकली है ये तो बहुत नकली These fellas are gonna regret waking up this morning. मॉली बचा रहा है अपना अब क्या हो गया तू कर मैं फ्लैश नेट करता हूँ डीप करूँ क्या हाँ डिप कर Flashbang. ये मर गया गाइस उसको लेग शॉट लगा लेग शॉट Throwing smoke. बाकी वो हैकर तो बोलेंगे साले भाई मेरे एक भी बहुत सारा- दो भी आ रहा है क्लोज क्लोज एक और है अबे हट जा आज ही कॉल दोगे ना ओए बीच है। कंस्ट्रक्शन ले मैं जा रहा हूं वो एक आया दिखा अपना खेल तू बस कॉल दे गाइस कंस्ट्रक्शन एक बंदा काम है ठीक है एक सेकंड मिनट है अबे टिंक है यार कंस्ट्रक्शन Second हट minute बे है। कंस्ट्रक्शन वाला टिंक है ए प्लांट हुआ है पे प्लांट है हैं वही तो हाँ। एक लाइब्रेरी होगा ऊपर वो लो है ठीक है मॉली एप्स है मॉली कर रहा हूं पिट एक बंदा एप्स के एक बंदा स्मोक है स्मोक है स्मोक कर दे बम को शॉट शॉट आ गया कसम से वल्कन अरे उसके साइड में गोली चल गई यार 50 हो रिएक्ट सके उस पे मारना साइड में क्यों मार रहा है ये क्वेश्चन गन से मिल जाता तो हम सब डीएसएल होते ड्रॉप मैं दे रहा हूं इसको ड्रॉप गाइस काम ही ले ले हमको पर मेरे को तो दे दे रहा हूं 3000 वाला तो रुक जाता ना काम तेरे को बड़ी चुल रहा है बेंच क्या हो गया हो तो क्या और मेरे पास नहीं कुछ भी नहीं है Deep मेरे कर पास रहा हूँ। कुछ फोड़ नहीं दिया है Throwing fire. Smoke. Grenade out. Throwing flashbang. Flashbang. Grenade. बॉम्ब है बी पे Throwing smoke. ये लग रहा है बीपीएस स्मोक कहां है चार में जाता हूं जाओ क्रॉसिंग है स्मोक वो मॉली ओए वहां पे रहना फेक भी हो सकता है हाँ, मैं होल्ड कर रहा हूँ सेकंड मिनट वाला एंगल होल्ड कर रहा हूँ ये आ जाओ गाइस 2-3 है फेक है कब्बू है यहाँ पे एक और है आएगा तो मैं मार दूंगा तू जा वरना हेल्प चाहिए तो मांग लो नहीं शॉट मॉली कर दे Grenade out. Incendiary out. आया बी आया है नहीं शायद जा रहा है जो भी है
एक एप्स में भी है। एक मिनट खेलना है। Flashbang. ए जा 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 वल्कन जा। भाई ये हमें फ्री तेरा, फायर। तेरा दिख रहा था उसको साइड अच्छा शॉट। आ जाओ बेंच में कहां अटक रहा हूं? दोबारा पिक नहीं लोड़ा प्रॉपर डाउन ब्रेक। ऊपर मर गया था वैसे, बाकी दूसरे ने उठाया तो पता नहीं। दोनों मर जाते। एक पिट है एक क्लोज में है तेरे। पेट वाला लो है थोड़ा। हाँ 19.5 खाया था यार ये। नहीं 58। You spruced up knuckleheads ready to do this or what? जाओ तीनों सेकंड में जाओ। पीवी बनाना जाएगा अपन। मैं बिट देख। Good. बॉम्ब में मैं ले जा रहा हूँ ठीक है। Let's go. बॉम्ब डाल। Throwing a flashbang. बॉयलर है हाँ। एप्स के लिए फ्लैश कर रहा दो हूं। नेड है, बी पे दो नेड है, दोनों पे आत्मा। अरे यार बॉलर है क्या? ये भी मिड आ रहा हूं, आ रहा हूं। बॉलर से आ रहा। 2 मिनट है। वो दो है बी दो है। 2 मिनट है। रुक जा। अबे यार अब आई नहीं। अरे फ्लैश किया मुझे किसी ने। अब मैं ही था वो तो। अबे मेरे को उसने भी नहीं मारा पीछे वाले को। हाँ उसने मारा देख पीछे वाले ने। अबे क्या कर रहा है? पता नहीं भाई। नहीं ओए आ जाओ फ्रेंड चलो। अरे लगा नहीं पाया यार यहाँ पे होगा। अभी तो आपने देखा था इस स्किन को। अबे वो मुझे दूसरी लगा skin ये मारी राइट आपने। वाला मारा है जो वो है। यार काम में फ्लैश मत कर मेरे को। उसको करना फ्लैश। कोशिश तो वही थी थोड़ा सा। 38 का नहीं है क्या? बका काम कर रहा है ये? मैं बोला कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। मैं साला आया फ्लैश ही कर दिया मेरे को और फिर उसके बाद खुद फाइट ले रहा है। क्या बोल रहे हैं? बॉयलर को जाता है दिखाओ। एक बॉयलर देख रहा हूं मैं बॉलर से आगे। वो है काम। आया। अबे यार लैग हो रही है यार। बे यार साला। हो गया। गन मिल गया तुझे। डोर पे साउंड आया तुझे? अबे नहीं। मिड पे मॉली कर देना अपना। मॉली कर रहा हूं। बनाना मॉली कर देना कोई। मैं कर वो एक बनाना। Come on, let's go. Quick fix. बनाना मैं दे दूंगा अगर चाहिए। नहीं उसी मॉली पे स्मोक कर देना। बल्कि मैं कर रहा हूं मॉली। तो मैं मॉली करूंगा ना उसी पे स्मोक कर देना। डेढ़ में टकरा गया था। एक सीटी गया। हो गया रुक जा शांत। बॉलर है क्या? हाँ। मादर एक और गब्बू एक और। लेफ्ट है मिड फ्लैश दे रहा हूं। मिड टू लेफ्ट ले फ्लैश दिया। एक साइड है। फ्लैशिंग साइड। मैंने फ्लैश किया। फ्लैशिंग साइड। बी पे 2 है 1 लो है। तो वो है एक ही है फिर साइड पे। चलो आ जाओ। छोड़ दो यूटिंग छोड़ दे बल्कि रुक जा बस। अरे पिक है राइट है। नाइस क्लियर एक लो है। तेरे पास कौन सी गन थी फल्कन? मेरे पास तो वो थी। इसी साइड आएंगे बहुत अच्छा है। इसीलिए भाई तू नाच क्यों रहा है? कौन सा प्लांट है? तेरा प्लांट। तेरा ही है। अभी भी मैं
मैं बोलने वाला था फेक है। अबे नहीं लास्ट ले रहा है तुम्हारा सही मैं इसीलिए नहीं हाँ बोला मैंने, इसीलिए नहीं मैं ही बोला। कहने वाला था बीबीएस क्लिक करेगा इसको इस बार तो तू बोलता तब भी वो पिक करता ही करता। साले तेरा फ्लैश है, इस बार तो मैं करता ही भाई। फ्लैश भी था तेरे पे भाई। अबे नहीं देगा वो छोड़, ये गब्बू की शॉपिंग क्या चल रही है दूसरी का? तू भाई, क्या एक कर तो रहा एक- था बहन? तू नाच क्यों रहा था? ना सिटी स्मोकर ना कुछ, बहन तू नाच रहा वहाँ। कहाँ क्या करना है, क्या करना मुझे है? लगा स्मोक है। राउंड थ्रो कर दिया बहन को। और वो साइड डालने से पहले कैसे मर गया तुम ये बताओ मेरे को। पता नहीं भाई। ये एप्स पे कूद रहा था, गन ढूंढ रहा था चूतिया। एप्स पे भी नहीं, वो कार्ड पे है। अरे भाई ऊपर चढ़ रहा था ना, मुझे थोड़ी पता था मारेगा तो भाई। क्रिट खेल लेना बहन, तू मारेंगे कि क्यों नहीं मारेंगे तेरे को? तू ससुर लग रहा है उनका। यस देयर माय दामाद। तेरे को तो और बड़े करेंगे भाई। एक और ओए मिट्टी से एप्स वाला रखे मैं मॉली डू हां हां ठीक है। पीछे भाग गया भाई मेरा प्रो यहीं फ्लैश। पे पूछते, यहाँ पे पूछते, यहाँ पे पूछते। एप्स एक अबे ये ही नहीं लग रहा। लो है फाउंटेन पे। एप्स एक है, आरसे एक है। बालकनी सिटी चले जाता ना स्मोक से। जा बॉम्ब ले। शॉट ऊपर है। बी पे एक बंदा लो है। एक फाउंटेन खेल रहा था, डार्क हो सकता है, लो है क्योंकि एक सिटी साइड चेक करना, साइड कंस्ट्रक्शन से मारा गया ब्रश कर लो एक। चलो काफी आप बोल से फ्लैश पे उनकी गांड फट जाएगी। अबे ऊपर आया था लास्ट राउंड में, मैंने फ्लैश किया पीछे भाग गया। चलो स्मोक लिया मैंने एक। ये मेरे पास होटल है। सब जाके मैं ही हूं ठीक है। फ्लैश कर दे। फ्लैश कर दो। एक सिटी है। सिटी नाइस, बड़े। ठीक, जंप मर गया। मैं मॉली डू। ठीक है। बैकस्टेप आ रहा शायद एक। स्मोक मार कर लो। बैकस्टेप बैकस्टेप देख, बैकस्टेप देख। आ गया दो बंदे बीबी मॉली था ना तो बैकस्टेप वाले को कर। बे यार क्या लैग। अरे मैं स्ट्रीम बंद कर। कल भी नहीं रिकॉर्ड कर। मैं कर देता हूं। हाँ खाली अगले और स्ट्रीम को ब्लेम कर दिया। मैं रिकॉर्ड किया आप ही के लिए, मेरे को पता था। आप पहले रिकॉर्ड कर दिया ना। देख लिया। भाई एक राउंड तो निकाल लो यार, क्या कर रहे हो? वो राउंड निकल गया था यार, गब्बू बहन चो पूरा थ्रो कर दिया वो राउंड। एक बॉल है। मत तोड़ो वाला। एप्स में है कि एप्स में मैं मॉली डूंगा। नाइस। ओए बॉयलर चलो ये आओ बॉल आ रहा मशीन बॉल आ रहा। एक और हो सकता है। एक लाइब्रेरी फ्लैशिंग। ओए अबे जी कोई बनता नहीं। एक लाइब्रेरी दो है आगे ठीक है। दो हैं वो जा रहा है लाइब्रेरी को छोड़ के। कहां पे था ये? एप्स था एक। एप्स बालकनी। आप अरे यार पिट नाइस। एक साइड सामने ही है, ठीक सामने यहीं पे। अबे सब सही जा रहा होता तो महंचोद एक साथ कैसे मर जाते हो यार? 2-3 भाई वो लोग भी तो एक साथ दो मर रहे हैं ऐसे तो। साला उसने मार भाई, उसने मार दिया सीधा टिंग। मैं क्या करूं?
ऑफ लगा रहा हूँ मिड पे। Not a bad तो bloody आप ही idea. नहीं रहे वैसे वो। आ रहा मैं खेल रहा हूँ कहीं ना कहीं चल कर। अब ले सकते हो वैसे भी एक को समझ। अरे यार वो लाइब्रेरी वाला दिखा, मुझे लगा वो क्लियर है। अरे उसने मुझे डिंक मार दिया बस। हाँ वो आपका तो ठीक है। गलत है गन गलत की है। मॉली मिड स्मोक हुआ है। एक ऐप वो एक बॉयलर बॉयलर बॉयलर। ओए व्हाट लैग हो रहा है यार ऐप्स में। नाइस, एक और ऐप्स मैं देख रहा हूँ बनाना में देख रहा हूँ। क्रॉस भी हो सकता है वो ऐश। बॉयलर देख रहा हूँ। वैसे एक ऐप्स कुछ टी स्पोन की तरफ जा सकता है, देख लेना टी ऐप्स। मैं टी-स्पोन देख रहा हूँ। बनाना निकल जाओ मैं। भाई जैसे हटाया वैसे आ गया। बॉयलर राइट। बालकनी है शायद। अबे मेरे को पुश गटर से मारा क्या? नहीं बी Backstab आ गया। वो बी पुश हो गया। अरे बैकस्टेप देखने के चक्कर में ना पूरा पूरा वो हो गया। मिड तो ऑफर है। मैं लैग हो रहा हूँ या ये लैग हो रहा है? ये हुआ। लैग हो क्या सब lag हो रहा है। एक काम करो सेकंड मिड से खेलते वो चलते हैं आर्चे चलते हैं। ये लोग एप्स ले रहे हैं। मिड पे ये लोग स्मोक कर रहे हैं ठीक है तो एप्स पे खेलते मॉली कर दो मैं मिड से राइट में स्मोक करता हूँ और घुस जाना फिर। मिड में हूँ मैं ठीक है। चलो भाई एप्स मॉली कर देना। हाँ। बर्तन तू ही करेगा ना पिछली बार की तरह। नहीं पिछली बार भी करेंगे। ये वाला पता नहीं दीवार पे मार रहा है मॉली को। अरे वो मैं अटक गया था। बस तोड़ना बुरा था मैंने। मिड दो जाओ आर्टिस्ट क्या बहुत बढ़िया। कहाँ जाना है? बी जाना है, क्या करना है? दो तुमने मार दिया ना साइड है क्या मारने का ट्राई। क्या ये? बहुत बढ़िया। ओए ओए Throwing flash. दोनों में से एक खेलता ऑपर है और एक असॉल्ट है। लो लास्ट आज किधर ही है यार। फ्लैश किया ना उसने बीबी। तेरा प्लान नहीं है उस तरफ अपना ठीक है। बीच वाला डब्बा उसके उस तरफ प्लांट है उस साइड। बहुत बढ़िया ऑफ ले ले। हां लाइब्रेरी साइड है। एक बहुत बढ़िया। मैं कॉल क्लियर नहीं टाइम आउट की लेना भाई। टाइम आउट लेना अगर टाइम आउट अपने ना आए दे तो। दो अभी। क्या कॉल क्लियर नहीं थी मिड टू बी जाना था, क्या करना था? भाई मिड टू भी करना था बट तुमने दो बंदे आज मार दिए ना जाके सही से। अगर मान लो कोई नहीं मरता तब तो मिड टू भी करते। ये पहले नहीं बताया था भाई। अरे भाई अब तूने पूछा अदरवाइज तो अदरवाइज तुम कर देते फिर अगर आपको ये जानी भी निकल हमें अभी जाती 1.5 मिनट है आप और ये तो बता दो। भाई तूने छोड़ा क्यों है। लैग होता है यार बहुत, पता नहीं क्या बीच में अटक गया। मुझे तो मिड पे उन्होंने मॉली खेलता मॉली कर दिया मैं स्मोक फेंका कैसे करके। ये लेवल कर। थोड़ा गलत सा हो रहा था। अरे भाई वो शूट कर रहे थे और मैं मॉली में जल रहा था। स्मोक से मार दिया। ये लेवल गन पेश कर। ऑफ कर रहा है क्या तू? I think I can handle that. इसको करनी है। नहीं तो कर रहा तो कर ले। मैं ऑफ पकड़ूंगा बेंचो, तुम पहले ही मर जाते हो ऑफ पकड़ने से। तो आए? ये देख एक तो ये हर पहले राउंड में सबसे लास्ट में कर रहा हूं मैं हर राउंड में। ये देख भोसड़ी के टाइम आउट लेना ना। 1 मिनट है भाई 50 अभी। सेकंड है। हुआ क्या है। लैग लैग हो रहा है आ गया। तो आवाज बढ़ाओ यार। अबे तो तूने किया है गेम रिस्टार्ट किया है। हाँ। राउटर रिस्टार्ट करेगा तो डिस्कॉर्ड पे कैसे रहेगा। बदजलन बेहया। तो आ क्यों नहीं रहा फिर? क्या करूं मैं, खुद से गेम चलाऊं? अब पीसी चला रहा है खुद से। ओ यहाँ पे किसने रेस्ट ली? काम है? आवाज आ रही है तेरे को? बोल भी नहीं रहा भाई ये। डिस्कॉर्ड I will not respond to such nonsense. भाई तेरी आवाज नहीं आ रही है। मैं हेलो हेलो। नहीं आ रही है आवाज यार, क्या है? अबे कौन सी रोड है इतनी भयंकर स्पीड में गाड़ियां जा रही हैं? सुपर वाइज जा रही ना। हां मैं डिस्कॉर्ड पे आ जा भाई। डिस्कॉर्ड पे है क्या ये?
बोल तो रहा हूँ तब से हेलो। अबे बकचोद नहीं कर रहा है ये। तुम बॉट हो ना, तुम भी तो नहीं आवाज दे रहे, बाद में सीखोगे। अबे तो हमें भी तो ले लेते मजे। हम भी तो मजे ले रहे थे। आ गए ना मजे, आ गए मजे। चूतिया अगर उसको हिट नहीं पड़ा है ना तो चूतिया गया। रुक कोई क्या बात आप से गाइस मिड देखना कुछ देर। देख रहा हूँ। आ रहा वो आप देखना आ रहा बॉल रहा कोई नहीं है। 1 गाइस एक बंदा एक और बंदा है मिड पे ऊपर है। रुक जा Be clear. आ रहा हूँ। चूतिया गया मैं ये करते चूतिया गया मैं। क्या कह रहा है बीबी? लेट मी ऑफ, मेरे को देना। गांडू गेम ये वाला मारा था क्या तूने उसको? हाँ भाई कितना लेग शॉट? अबे लगा ही नहीं ना, वो हिट ही नहीं हुआ। रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड वाले कर देता है जॉइन वीडियो का इंस्टॉल केयर करना। बॉलर एक बंदा आ रहा है मेरे लिए। आपके लिए आ रहा है स्पेशल, सुपारी हाँ, मिली उसको। भाई मैं बॉयलर का एक मत ने से क्या एक का इको है। एक यहाँ पे है बॉयलर के पास। मेरे सामने एडी कर रहा। शॉट एक है। दो एक और है वो उसको भी पड़ा थोड़ा बहुत। आजा ये आओ गाइस। एक भी था लास्ट लो है। स्मोक मत करना। अच्छा अकेले नहीं जा सकता है वो बनाना। ले लिया होगा उसने। अब सर उधर पीक लो हाँ मेरे को ये देख। जा बाकन गो हंट। पैसा है पैसा। बी है स्मोक किया उसने सिटी। स्मोक कर लिया उसने पहले। चूतिया से स्मोक किया। मेरे को मारेंगे। कंस्ट्रक्शन 96 है चूतिया। 93 खाया वो। एक 93 एक 96। यस मैंने मारा भी 4। तो ये तो बताओ एक 96 एक 93। ठीक है दूं? मैं इतना गंदा हो गया इनके साथ यार। इनके साथ क्या गंदा? ये चाहता है मार जाए भाई। कामे को रिपोर्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट होके आया था। क्या हो रही है? अरे गप्पू यार। पीछे गया। मिस किया मैंने। बी सेटअप कर सकते गाइस। आ जाओ सारे बॉम्ब लेके भी आ जाओ। आ रहा मैं। स्मोक करने दो उनका दूसरा। एक सिटी रुक बस हो गया। रुक जाओ इतना हल्ला मत मचाओ बी पे। रुक जा बी पे हल्ला मत मचा यार, मत मचाओ। स्मोक कहां पे गिरा? यहाँ पे मैं बैठा हूँ। मॉली भी गिरा दे। न्यू बॉक्स मॉली आगे आ जाओ एके वाले। ऑफ लेके तोड़ जाऊंगा मैं। आजा वल्कन, तेरे को अलग से तोड़ना पड़ेगा क्या? आओ आ रहे बस एक मिनट से आ रहे। गाइस थोड़ा सा ओपन फ्रंट है। टिक बनाना है बीबी। अब मिड है मॉली कर दे। इधर तो दिखाने को गाइस। एक बनाना था। एक टीरे फ्लाई दे रहा हूं। राइट लेफ्ट राइट वाला डेड। लास्ट यहाँ गटर है। गटर साइड है। उसके मार नहीं है बच्चा हमें मार दे। नहीं है
अबे गेट के थ्रू मर जाता है, सही आ जाता, चीखते रहता रात भर। हाँ स्टन किया था। हैकर आया था, हैकर। यार रिपोर्ट काउंट दिखना चाहिए था। लास्ट राउंड निकाल लो भाई। वो सर है ना, रिपोर्ट काउंट दिखता तो एक सर्टेन अमाउंट के बाद खुद ही बैन कर देते। हाँ तो अपने को इतने बैन थोड़ी करते। क्या पता। गाइस थोड़ा इको सा होगा उनका। उन्होंने बैन करना तो अभी कर देते बैक एंड में भी। एक मिड लेफ्ट। शॉट एक। बॉयलर बॉयलर। अबे क्या बॉल। शॉट ले दे चलता हूं। शॉट शॉट ले। एक बालकनी शॉट ले दूं। एक बार नहीं। बहुत शॉट ले दूं गप्पू। ले। पिट है बहुत लो है। मैं फ्लैश हो गया। आर्चेस है क्या? Throwing flashbang. एक आठ स्मॉल करूंगा। आर्चेस नेट क्या पे। इधर एक साइड पे या राइट साइड पे कहीं पे है, वो लो है। अरे मैं देख रहा हूं तुम्हारा। मिनी पिट किया, मार दिया मैंने। आ जाओ नाइस प्लांट। हो गया सेफ किल अब से। वेट देता हूं। वो एक आर्च के लोड़ो। अबू ने स्मोक के थ्रू दे दिया। अबू ने स्मोक के थ्रू दे दिया मचा भाई। रखी है खटपट। मैंने 5 गोली मारी, एक मर गया। कुछ नहीं सुनाई दे रहा भाई। चलाए जा रहे। वो नहीं आती हजार वाली लड़ी लेके आते हैं। आगे ही है वो। बस कौन लगा हुआ है? खुद भी तो इंडियन है, हिंदी क्यों कर रहा है? फॉर्की होगा। क्या होगा? अपन बहन का लोड़ा क्या होगा? भूतने का। पनिशर आ जा यार। हो गया। वल्कन 8 किल। खेलता भाग जाता है, 2 गेम खेलेगा। ए वल्कन व्हाट इज दिस 8 किल क्या है बे तेरे? गेम खेलो भाई। व्हाट इज 8 किल्स? सॉरी। कोई नहीं, तेरा रिकॉर्ड में तोड़ेगा अभी आके। लिविया व्हाट इज द स्किल? इन्फर्नो में इतना ही हो पाएगा भाई। ये वो क्लच किया वो कम था। बहाना तैयार है इसका। व्हाट इज दिस बाय स्किल? इन्फर्नो तो मैं पहले पेन करता हूँ भाई। गब्बू ए कहां है? बता। नीचे लोगों ने हमेशा नीचे लोगों को दबाया है। वो बोला था गब्बू बोलेगा वेंचर केवी व्हाट इज दिस चॉइस। केवी वो बोल रहा काम है कि व्हाट इज दिस। मेरे को तो ये गेम ही नहीं खेलना। कैसा लगा कामे? अच्छा बहुत ही अच्छा। साला बट टी साइड में हमने गलती से एक राउंड जीते तभी जीते, कुछ होता। अबे यार मैं पहले रीस्टार्ट करा था ना, आ जाता मैं तुम दोनों से ऊपर पॉट्स। फनी, वेरी फनी। बहुत लैग हो रहा था बे। एक बार कैंसिल करियो। मेरा भी यही था। मेरे को स्किन लगाना है टेक 9 का। अबे पीटो पकड़ के पेलो इससे। अरे तो भाई इसके नाम पे ऐसे क्लिक कर, किक का ऑप्शन आता है एक। हो गया तेरा लौड़े। हो गया। बोल अरे वो कर दो। ऐसी कौन सी टेक्निक? अरे ढूंढ रहा था। अरे स्टार ट्रैक कोई है अरे आइजैक। बहन इसको कमेंट अबे कर दे यार भाई जरा। ये बहन चो देख के कमेंट है इसके पास। गेम में करेंगे। लेके घूम रहा है साला मेरे को किसी ने नहीं किया, मैं सबको किया। कमेंट मी। क्या कमेंट भूसड़ी के? मैं 2 महीने बाद तो गेम खोला है। अभी कर, सबसे पहले आते मुझे कमेंट चाहिए। इसका 206, इसका 29, मेरे को चाहिए एटलीस्ट 20। तो अभी होना चाहिए मेरा 24 20 इस गेम के स्टार्टिंग में ही। डिड यू गॉट इट? टीम फ्लैशर लिखूंगा इस भोसड़ी वाले को। नेगेटिव रेड कमेंट टीम में फ्लैशर। कमेंट नहीं करना है, कमेंट करना है। ये क्या है? अबे बहन इसको कुछ पता ही नहीं, छोड़।
मेरी स्ट्रीम पे आना, मैं बताऊंगा तुझे, ठीक है? मैसेज स्ट्रीम आऊंगा कल ऑन से ही रोज है। सुबह। अबे रोज जा सुबह प्रैक्टिस करनी है तुझे इस चीज की। कमेंट करने के सुबह 5 बजे उठ के प्रैक्टिस करना, अच्छा 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 ठीक है? अच्छा। अबे हाँ पहली बार वो वाला नाइफ से खेलूंगा अभी। अबे देख अच्छा सबके नाम पे क्लिक कर, जो नीचे दिख रहा है ना नम स्माइली और यो ये साहिल यो 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 क्राउन वाला टाइप का, वो बढ़ते हैं उससे कमेंट से। तेरा एक ही है। कमेंट कर रहा था गब्बू को टीम फ्लैश से। टीम प्लेशर डाल रहा था मैं, एक्सेप्ट नेगेटिव कर ले रैप कामे। हमें है ही नहीं। अरे अरे यार कमेंट इन गेम ही होता है ना। मतलब अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो मतलब काम ही नहीं किया। तेरी आवाज नहीं आ रही, बाकी तो सब बकर बकर कर ही रहे हैं। ए गब्बू, इनको ना बाद में करता कमेंट। ऐश तू भी बकर बकर कर रहा था। ए गब्बू, हाँ क्या क्या है चेक योर ट्रेड ऑफर। क्यों ट्रेड ऑफर क्या बेच रहा है तू? इसको मैंने इसकी वो दे दी वापस। गुड गुड गर्ल क्या वापस दे दी? नाइफ नाइफ दे रहा क्या गब्बू? दे दे मेरे को भी दे दे। नाइस कौन दे दे? 4 टुकड़े करता हूँ मैं अपना वाला नाइफ दिखाता हूँ तेरे को। कौन सा खेलना है? मिराज खेलना है? तूने नाइफ ले लिया? नहीं भाई, क्यों मिराज को बहुत खेला? पहले मिराज का खेल है। लिया उनका बहुत हाई है भाई इसमें। तो क्या हुआ भाई? मैच नहीं देख रहे, देखा था यार तुम्हारी और अभी तो क्या? G2 का देखूंगा प्रॉपर्ली तो क्या हुआ? रोएंगे तो नहीं हम? अभी देखियो। अब मैं तो नहीं रहूंगा। जाओ अभी जाओ एक सेकंड, 2 लोगों की आवाज 3 लोगों की आवाज कम करनी पड़ेगी ऐश। बता रहा है ये मुझे पता है। What है? ये देख अबे वो बाइंड बना के दे मेरे को। डेफन का क्या? इसको तो कितने में लिया तूने? अबे कितने में कैमरे को लिया? म्यूट करने का दे दे हाँ मैं भी क्या बोल रहा है? म्यूट कर। कितने में लिया? हाउ मच फॉर नाइफ? 33 रुपए। पता नहीं 16-17 हजार। साला अबे 17 रुपए। 16,000 में तो यार बहुत अच्छा दिलाए थे तेरे को। अरे मैं खरीदा थोड़ी ना। फॉलो मी कौन सा गाइस, फॉलो मी। कौन सा नाइफ है निकालो। बेट मी, कौन सा नाइफ? इसका तो क्लासिक है ओ स्कॉच। भाई साहब। बेट मी। पनिशर मेरे को ट्रेड कर देता, भूल गया इतने टाइम के लिए गया था। ए मैं कूदते घुस जाऊंगा साइड में, तुम पीछे से पहलते रहना, ठीक है? मैंने पहले सोचा था कर लूं बात टीम के बंदे से, मैंने कहा बेकार मैं करो शूट नाइफ। नहीं करूंगा। मेरे का काम है केवल साइड में घुसने का। कर लियो, कर ठीक है लियो, जंप कुत्ता कर दे। कुत्ता चाहिए। क्लोज में है राइट। पिलर। बैकस्टैब है मेरे पास साइड। नाइस। उस भोसड़ी वाले ने 2 बंदे क्रॉस करवाए। ओए क्या एफके बैठा है? ये क्या मैं इसको देख रहा हूँ यार। अरे यार क्या है ये? कबू तो क्या कर रहा है? बैकस्टैब देख रहा हूँ मैं अरे आप तो आगे जाके मरे गेम देख लेते तो बस। अबे यार कबू तो आगे होता ना, मैं पीछे घूम गया यार। भाई मैं बैकस्टैब देख रहा हूँ मैं पहले बोल दिया बैकस्टैब देख रहा हूँ मैं एक बंदा तो बैकस्टैब देख बोल दे, फाइट भाई, करने के लिए जा रहे हो आराम से गेम देखते अरे हैं। फाइट नहीं, मैं वहीं पे अच्छा 94 99 है गेम बंदे कौन देखेगा? खेल देख के वो म्यूट हटा ले। क्या हो गया? वहाँ पे गेम वहाँ चैटिंग कर रहा होगा ना। अरे भाई मैं कर देता। अरे अभी तो मैं साला हाँ वल्कन को चैट, तुम कैसे हो? हाँ हेलो गाइस, हाउ आर यू? भाई एक बंदा है 94 एक बंदा 99 भाई कसम 2 से दिन से मैं ऑनलाइन नहीं आ पाया, सॉरी गाइस। सॉरी गाइस फिर देखेगा मरवा रहा था कि मैं इसलिए। 21 लेटर्स ही है खाली इसका व्यूअर। रेजो इज 1260 बी पुश एक हिट लगा है। अरे नहीं यार टाइमिंग हो गई, एक बैकस्टैब आ रहा कम है। नाइस, एक तेरे बैकस्टैब है जल्दी। एक को नीचे कूद गया। अबे तो आ गया, दोनों ने मारा मुझे। नाइस, दो ऑर्डर्स में है बी की तरफ। अच्छा 2 हिट पड़े थे, 66 था चुकी है। ये वाला मैप तो खेला है ना तूने? Don't
दे रहा हूँ मिड का स्मोक दे रहा हूँ मस्त जाओ मैं एक कुछ दे रहा हूँ। ये दो आए थे पंचर को स्मोक आता है? हमें नहीं आता भाई। भाई ये दोनों यही करते हैं। स्मोकिंग कौन पार्ट है कर रहा हूँ। इतना लो स्मोक करता है। मैं जा रहा हूँ स्मोक है। ए मैं जा रहा हूँ। विंडो केयर, विंडो केयर, विंडो केयर। ओल्ड ब्लू, आई गो। कहाँ से पड़ रही है? ये भी क्लोज राइट है। नहीं यार हट। नाइस। एक और था वो ये नहीं मरा। वो मरा नहीं अभी। राइट में था। लेफ्ट में क्या होगा? नाइस मर गया। एक और गया। मेन आ गया। टेंपल है। गाइस अबे लो है यार। गाइस ट्रिपल लो। वॉक करो ये आने का ट्राई करो। ए जाओ ए क्लियर है गाइस। हेवन की तरफ जा। नाइस। आ जाओ जल्दी। एक बी से फ्लैश फेंका था उसने ये बेस्ट है बोल कर फनिशर नीचे यहाँ नीचे वाटर भाई लो है भाई एक बंदा हेवन से आ रहा है। वाटर देख वाटर आ रहा है। एक बंदा मिड पे मिड मिड से गया एक बंदा लो है बहुत। साउंड मत दे फनिशर इतना। एक क्लोज में है। लास्ट लो अबे भाई छोड़ना अपना प्लांट है। मत जा फनिशर को मारने दो भाई। एक एचपी हो। मत जा भाई ओ भाई मार रहा है पता नहीं मैं शैडो दिख रहा है क्या इसको? हाँ शैडो आता है वहां से। ओए बच गया। क्या? व्हाट? शैडो कैसे बच गया भाई? शैडो कमिंग थे। अरे इंपैक्ट यहाँ तक पहुंचा नहीं। इंपैक्ट वेव पहुंची नहीं यहाँ तक। नहीं वो फटते टाइम ही बंद खत्म हो गया था। बॉम्ब तो हमें मत डाल। बी के बाहर पे बूस्ट देना वो स्टेयर के पास ठीक है? आजा। ये ओके। स्मोक दे दो मेरे को। आफ्टर यू दाई आई स्मोक इट। अरे बीम इनको शॉट करना ठीक है? मिड देखो इको उनका नहीं भाई। कहां पे? स्टेयर के पीछे यहां पे। खड़े हो जाओ भाई क्या ये वाला बंदा रोटेट हुआ है। आ जाओ तो फ्लैश करके घुसेंगे। रुक जा नहीं स्मोक है। एक टेंपल वन मोर कैमरा दे अबे नहीं यार एक तरफ के वापस जाओ। गाइस ये आ जाओ। लास्ट भी देख के मिड है वाटर्स मैं भाग के आ रहा हूँ। आ जाओ। तू उसके पास चले जा कवर ओवर देने। अरे यार वाटर से ठीक है दो लोग हो ना वहाँ पे तो बस मिड देख ले। वही देख रहा हूँ एक ही मैन आ गया मैन आ रहा हूँ। बहुत बड़े एक है उसके पास। मेन से इसको एक चले किस पे गया देखो थैंक यू। मैं दे रहा हूँ। इनकी अजीब सी लग रही है भाई मैंने बहुत हका भाई उस पे। मैं अरे पंचर में 93 खाया था वो जो ये पे तुमने मारा है स्मोक करके आ जाओ। ए वाला बंदा रोटेट कर जाता है बहुत फास्ट ये भी हट कौन कर रहा है ये कितने प्लेस? एक अरे मैं अपने पीक के लिए कर रहा था भोसड़ी के बोल तो सही। टैप था। बी पे 2 मरे गाइस। आ जाओ बॉम्ब लेके आओ। एक मिनट बना है नीचे से आ रहा हूँ केव से आ रहा हूँ एक मिनट
अबे वो घूमता ही है वो फ्लैश के लिए, देखा नहीं घूम के बैठा था वो। हाँ नहीं भाई ए मेन के लिए फ्लैश करूँ क्या मैं? कम है चलो कम से कम बोल के तो करता। बॉम्ब गिरा देगा। तेरे को पता ही है, तू फिर से आगे बढ़ आवाज नहीं आ रही उसकी। मैं फ्लैश कर रहा हूँ। की आवाज नहीं आ रही। कम है फ्लैशिंग फॉर ए मेन। रुक जाओ रेडी भाई पता है मिड एसएमजी क्लोज है। विंडो के करना। मैंने लो है एक ही लिए उसने भी जा गाइस ए आ जाओ। एक और क्लोज लेफ्ट गया था। क्लोज वन मोर पास मिड था ये। बैठ के क्यों आ रहा है ये? गुड कॉल का मैं। क्या बोला उसने? एक और यस कॉल है। अबे भाई ए पे 3 थे। तो ये गुड कॉल है। एक और ऐसे तो मैं भी बोल दूंगा एक और हर बारी। कैसे पता तेरे को पता था एक साले बोल दूंगा बोलने साले में तेरे को चार बंदे सामने लड़के 4 बंदे सामने 5 बंदे साले 4 ही है भाई 4 है। अबे साले- आएगा ना एक अभी। साले तेरे को ये तो पता नहीं होता साले प्लांट क्या डिफ्यूजर है कि नहीं हो रहा। मेरे को कैसे पता चलेगा तो डिफ्यूज हो रहा है नहीं हो रहा है? उसको कैसे पता चलेगा एक और बंदा है वहाँ पे? साउंड आएगा ना उसका तो। साउंड नहीं आया। भोसड़ी के स्मोक में कर रहा हूँ मैं अपने हिसाब से, वैसे ही तू मिड जाता नहीं बेंचो, क्यों बैठ जाता है स्मोक कर? भाई तू आधे घंटे में स्मोक करता है। मैं ही जा रहा हूँ ना उसके बाद, तेरे को क्या दिक्कत है? आधे घंटे में करता है ना तू फिर। मेरे को अपना केव का करना है। सबको मत कर केव का, मैं देख रहा हूँ इस बार। ठीक है जा। मिड क्या करते हैं? मिड वाला एक बंदा पूछते देख लेना इसका ऊपर। अरे हर राउंड में मिड देख ही रहा हूँ बेंचो, फिर भी आके गांड टिका लेगा यहाँ पे आके। गांड मार देना वहीं पे। यार ये जहाँ बहुत पे गांड टिका रहा है यार गांड टिका रहा है वहीं यार पे ये बहुत धीरे धीरे स्मोक करता है वे। मैं तो मैं तो तेरे को क्या दिक्कत है? मैं तू तो मिड जा नहीं रहा भोसड़ी के। अबे तो मैं केव का स्मोक करता हूँ ना यहाँ से। जहाँ पे गांड टिका है ना वहीं पे चोद दे। सही बोल रहा है। वैसे भी नाइफ के किल्स बढ़ाने हैं। मेरे को करेगा ना माइनस होंगे साले। किल काउंटर में माइनस होता है वो स्टार ट्रेक में। हां भोसड़ी के। No, mate. No. ये देख ये भी है स्टार ट्रेक, इसमें ये भी अभी नया मिला था। देखा क्या ढूंढ रहा बेबी? जी भाई ब्लॉक क्यों चाहिए मेरे को? मेरे पास टेक 9 है, टेक 9 है। ले बे वापस दे टिकल। आई हैव टेक 9 फुल इंजेक्टर। मैं होता कभी नहीं देता टिकल वापस। ना डीगल में चलाते ही नहीं ना। मैं फिर भी रखता। तू ये रख, टेक 9 रख ये वाला। ना हट पे अच्छी है। घड़ी के ये क्या ढूंढ रहा है? ये क्या ढूंढ रहा है? कुछ नहीं ढूंढ रहा भाई, मैं कुछ नहीं ढूंढ रहा। फ्यूल इंजेक्टर मेरे पास देख रहा है? देख साले बट दिखाइए यू ऑल टेक। चलो 45 स्टार्ट हो गया। ओके सर भी आओ। जब उनका स्मोक जाने वाला होगा ना वो लेन और साइड के बीच वाली जगह है ना वहाँ पे स्मोक कर देना, ठीक है? मैं कर दूंगा। और मैं राइट साइड स्मोक कर दूंगा पिलर पे। तो सर क्या स्मोक कर रहे हो? केव। ये अच्छा कर दो। स्मोकिंग केव। स्काउट है, केव स्काउट है। अभी क्यों घुस गए स्मोक से पहले? भाई होल्ड कर लो। बॉम्ब ड्रॉप हो गया भाई। रुक जा इसको आने दो भाई। बैक स्टेप आ रहा Throwing flashbang. मर गया। बैक स्टेप जाओ। ये आ जाओ साइड पे देख ले पनिशर। देख लिया केव देखना। केव बताया तो केव है।
का स्काउटर है 82 है भाई कसम से वो। अरे स्काउटर ही था केव। मरा भी मेरे हूँ को मैं नहीं पता उसी था से। यार, मेरे को बॉम्ब है करके। अबे बी में भाई स्मोक तो है, क्या वो सर आप स्मोक क्यों दे रहे हो? केवी सर आप उसको पुश क्यों कर रहे हो? अरे मेरे को नहीं पता था मेरे पे बॉम्ब है, मैं आगे जा रहा था। अरे बॉम्ब नहीं, ये स्मोक पुश क्यों कर रहे हो आप बी में वाला? रुक जाओ ना। अरे वो स्मोक फेड होने वाला था। अरे मिड वैसे भी उनका रोटेशन आता है एक का। अबे तो मेरे को मॉल ड्रॉप दो, मेरे को। भाई जो तो मिड एक मार दिया था, अबे तो रोटेशन मॉली आने करो वाला ना, ही था। वहां पे मॉली स्मोक कर दो। लेफ्ट में मॉली, लेफ्ट में स्मोक कर दो, राइट स्ट्रेट में मैंने जाके मॉली। डार्क में किया था यार, वो साइट वाले में। ड्रॉप सुन लिया भोसड़ी के। यार देख नहीं रहे हो फिर? 82 15 मारा देख था रहा मैंने हूँ इसको। आके। वो तू डार्क की साइड स्मोक कर दे, बाकी साइड का स्मोक वहीं से डाल देंगे। बीवे कहाँ जा रहा है? बीबी मिड जाएगा, मिड स्मोक कर दे उसके लिए। मिड तो कर ही रहा हूँ हर राउंड। ऐसे और आ फ्लैश गया। करके घुसोगे भी सर? अबे बहन करा तो था इसने फ्लैश। नहीं नहीं, आप क्या करो ना, राइट साइड वाली वॉल पे टकराओ ताकि फ्लैश लेफ्ट जाए, ठीक है? और फिर घुसना। हाँ वहीं पे खड़े होते भाई ना अगर तेरे को यहाँ पे। पुश करना है तो फिर तो मेरे से यहाँ पे मांग ले, टकराओ। रुक जा मैं 2 फ्लैश ले लेता हूँ। अभी नहीं जा रहा मैं, अभी नहीं जा रहा। हाँ हाँ उनका लाइक स्मोक होने दे। कोई नहीं दे रहा मेरे को। गंदा केयर smoke करना push बूस्ट, करेंगे। नहीं केयर करना, बूस्ट पुश करना, आगे के लिए स्मोक है, अच्छा स्मोक है। क्वार्टर्स देख रहा हूँ बीबे में, ठीक। नहीं यार, टाइमिंग पर केव ये पीक नहीं दे रहा। भाग रहा है। कहाँ चल रहा हूँ मैं बे? अगर Smoke ये करा था शॉट मैं। मिस हो रहे तो भाई कौन से लगेंगे ये बता। मेरे में तू राइट चला गया था थोड़ा सा। इसको भी वेलो की तरह कर दिया। तो थोड़ा सा हिल जाओ। है ना। अरे फुल ऑफ प्रैक्टिस फुल। मैं कर बस रहा मैं हूँ, नौकर बनना है मेरे को भाई। मैं कर रहा हूँ, आप फक यू। चलो मिड लेते हैं यार। मिड तो मिल ही रहा है वो, एक- भी नहीं दे रहा। एक बंदा यहाँ पे बैठ के बी पुश देख लो ना आराम से। अबे दो बंदे सुन दो बंदे बी खेल रहे हैं और एक बंदा ए खेल रहा है, एक बंदा मिड खेल रहा है। बस मिड से एम कर सकते हैं हम। मिड एक ऑफ मैं- लगा चार ही रहा तो है है, चार ही तो है ये। हाँ तभी तो बोल रहा हूँ। मिड को ना, मिड पे एक बंदा मरता है ना, सीधे एक ही तरफ भागना फ्रंट पे स्मोक। बी पुश देख रहा हूँ। केव देख रहा हूँ। मिड ऑफ। अरे मेरे को झूठ पीछे क्या केव वाला, सॉरी मिड वाला पीछे गया। एक ए पे गया है। मैं बी स्मोक बी पे एक और है। नाइस वन। बी पे एक 2 मिड मारे, ऊपर था, एक मिड ऊपर था। मिडल एक ऑपर भी पीछे side क्या है था। अभी भी। मैं स्मोक का वेट कर रहा हूँ, स्मोक के बाद जाऊंगा। फ्लैश दे सकता है। नहीं है, ऑपर एक टेंपल ऑफ मिड वाला है वो। हेवन नेट किया, स्किन कर रहा हूँ। बैक स्टेप देख रहा हूँ मैं। भाई साइड क्लियर है। सीटी है सीटी। प्लांट तो मैं हेवन देख के बैक स्टेप देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया। टीसीटी ऑपर सीटी ऑपर सीटी। बी साइड। बहुत बढ़िया। ऑफ बन लेना। केव पे एक के मिल जाएगी। क्या आपने नाइफ खरीदा या निकला अभी? जब गया था घर पे तभी निकला। ट्रेड किया था ना मैंने एक AK की स्किन और एक पुराने वाले नाइफ के साथ, नवा के साथ। ओ सेम वो करो, एक सेम करो, कितने सेम करो। हम थोड़ा कब्बू भाई मुझे भी कैरी कर दो। पिक मिलते ही दूसरी कब्बू भाई कहाँ कैरी कर रहे हैं, कर रहे हैं क्या? ओके नाइस। वो 5000 का नाइफ और एक की स्किन कितने की थी? क्या? एक की स्किन जो ट्रेड की वो कितने की थी? AK की स्किन लगभग 3500 समथिंग की थी। तो बॉम्ब यहीं पे गिरा हूं। एक लेफ्ट पे हट जाओ, अरे मैं ले लूंगा केव वाले को। मेन केयर कर रहे हो, मेन केयर करो, मेन केयर कर रहे हो। मैं देख नहीं रहा, मैं जा रहा था। बी पे फुल हल्ला मचा है, रोटेशन नहीं है। भाई ए पुश हो गया, ए पुश हो गया, ए पुश हो गया, ए पुश हो गया। बोला भी था अरे भाई वो टाइमिंग के साथ आ गया, शॉटगन उसके पास। भाई क्या है? मिड भी ऊपर है। भाई क्या मत
मारा है उसको, वो टैग दे 2 बॉडी। मैं भाई 3 एंगल देख। कॉल भी दे देता, एम इन पुश देख लेना। मेरे को अबे दोनों भाई drop एम एन करके पुश वहाँ पे। देखा, टाइमिंग हो गया, केव देख रहा था। केव क्यों पिक लेगा वो एक बार मरने के बाद? ए पुश कर वो करना क्या? ए पुश सॉरी ए पुश कर लो, मैं फ्लैश करता हूँ, मॉली कर दूंगा साइट, और क्या बोलते हैं केव पे वो कर दूंगा। ऊपर से चलना फिर। ठीक है। कनेक्टर वाला स्मोक चाहिए मुझे। हाँ कनेक्टर ही करूंगा, जा भाग यहाँ से। मैं जा रहा हूँ, मैं कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ। लेट आइयो फिनिशर, बहुत लेट आना, ठीक है? जब हम बी साइड पुश वाले होंगे। ऊपर से करना है ना वॉक इन? ऊपर से आना। हां यहां से वॉक इन? हाँ जाओ ना आगे, पहले ड्रॉप तो करो, मैं फ्लैश करूंगा हाँ ए मैन। हाँ ठीक। हमें तेरे को मेरे पास है। वाह बताना बहुत जल्दी है ना। बोलो। जाओ। एक और क्या? स्मोक्स एक लेफ्ट में था। अरे यार मैं कैसे मर गया भाई, ये बंदा फ्री फायर मार रहा है यार। साइड घुस गया स्मोक में। डेड है। बैक साइड देखो भाई। देख रहा हूँ। एक और है वहां पे। नाइस वन, हेवन केयर। बैक साइड सेक्टर देख लो। नाइफ देख कर रहा इसका। हूँ। नाइफ कर रहा हूं रेंडो। अब लोग ऑफ ले ली मैंने, बीबी ऑफ ले ली। ऑफ हो गई है। एक पड़ी यहां पे एक। अबे M4 लेता ना। गलील कौन है? नाइस। मेरे को दे दो एक ड्रॉप। गिव मी। ये बंदा हमेशा मेरे को फ्री फायर मार रहा भाई, केपी या वो जिगी। अरे वहाँ पे शैडो आती है एमएन पे। बंदा फ्लैश था कि नहीं था? बस मार रहा है। मत फ्लैश। फ्लैश नहीं था। कोई फ्लैश नहीं एमिन था। वाले को तो पहले मार दिया। मत फ्लैश था, मत फ्लैश किया मैंने, मत। There's no बॉम्ब लेके आना ओए। मिड। एक बंदा मिड था यहाँ पे। एमएन देखना। देख रहा हूं। कबू तेरे पीछे C4 गिरा है। Molotov out. एमिन स्मोक है। सीबी मीमेन को देख एक बार। फोड़ू स्मोक फोड़ू। रुक। एक मिड है, एक बी पुश है। बी मेन और मिड, बी पुश और मिड। टेक्स्ट देख तू। ये जा सकते हो। कंट्रोल होगा उन पे। एक बंदा मिड है। हाँ। मॉली कर रहा हूँ हेवन। फ्लैश क्या साइड? बैक स्टेप जाओ। स्मोक पुश। रुक जा, प्लांट मत करियो। हेवन एक। सेफ। आजा बहुत यार। हेवन एक है। अरे और एक बंदा कैमरा है। बहुत बढ़िया। 7 देख रहा हूं। हेवन से छुप के प्लांट दे सकता है? नहीं रुक। हेवन ही देख रहा हूं मैं तेरा। ये कैमरा लेना एक शॉट। शॉट लेने को कहा था, मारने को कहा ही नहीं था। अबे तो वही तो होता है एक शॉट। Watch out. These boys have got a bit of an arsenal and they don't mind using it. मैंने एक राउंड ऑफ नहीं चलाई, मेरे हाथ में ऑफ क्यों दिखा रहे थे? अरे उनका बंदा आ गया बे। हाँ। पहले मैं बोला भी तेरे को विड देखियो, उसी टाइम आया वो हरामखोर साला बी से। अब मैं क्या करूँ? तो साला मिड वाले भी पीक ले लिया उसी टाइम। टाइमिंग हो गया चूतिया। मैं भी के साथ मिड खेलेगा। नो यार। मिड स्मोक एक मिड है। एक ही फ्लैश है पीछे। अबे पीछे पीछे है जाता ना। ओए कुछ भी भाई, कुछ भी। पीछे मैं भी जा। आ गया। साइड एक साइड है। दो मेन। बहुत बड़े पनिशर। नाइस। केव केयर। एक प्लांट। आ गया केव से। केव आ गया पीपीओ। ठीक है केव वाला। एक बार हो जाओ। केव डेड।
अरे भाई करियो दिख ही नहीं रहा वेंचर बॉम्ब। नाइस शॉट। अबे टैप कर भोसड़ी का उल्टी उल्टी तरफ से साला दीवार में सर पीट रहा है। सुनो ई दबा के रखो और फिर मूव करो, तब घूमते भी पकड़ रहो। लेता वो। अबे नहीं भाई स्ट्रोक में पता ही नहीं चल रहा। भाई याद है याद है। डोल बेटा ले रहा है। भाई वो हरामखोर मुंह पे चढ़ के डोल बेटा से नहीं मार पा रहा है। मैं यूएसपी लेके खेल रहा हूं लेफ्ट राइट। कौन था मेरे साथ बीपे? कैसे पनिशर मारो को बैठा दे दिवाली वैसे भी है, गंदा। हां अरे 2 मार के मरा हूं बेशरम में क्या भाई है। 70 दिया उसको बेंच को। कर दिया। कोई मैंने नहीं तो मिला मेरे जो को, मारा मैं तो तीनों को हेडशॉट मारा है। ले मैंने तीनों को 100 दिया। तीन बंदे लो करके दिए। अबे तीनों को 100 मारा मैंने। झूठ बोल रहे भाई, शर्त लगा लो। क्या 184 मैंने दिया 70 इसने दिया तो 3 तो हाँ रिकॉर्ड कर लो, लगा लो, शर्त लगा लो। हां शर्ट लगा ले चल। मेरी इन्वेंटरी की सबसे महंगी आइटम और आपके इन्वेंटरी की सबसे महंगी आइटम लगे। नावी जीत गई। लेट्स ओए बीपे मार। एक एक मेन आ केव गया, से- एक साइड आ गया केव से। तुम बॉट हो क्या? केव से ही ना के बैठा है वो। जल्दी आ जाओ। जो मैन के बाद केव ऑफ हम केव चोटी कर रही है। सुन अबे केव मैं गन है। फ्लैश क्यों कर रहा था? मैं कहाँ मेरी है गोलियां भाई? खत्म हो गई, मैं उछल रहा हूं। तो तू साले उससे तो मरा भी नहीं कर रहा अबे मैं पीछे से मर गया ना उससे मैं। भाई। मैं तो घुस के 2 को आरएनजी नावी ऑन। करके आया हूं ना बाहर। नाइस मेरा पिकअप नावी था। नावी जीत गए बॉयज। नाइस मेरा हो गया। लेट्स गो बेबी। बराबरी में आ गए हम। स्मोक कर दे बेबी, स्मोक करियो। मिड Throwing fire. बी के बाहर पे साउंड आ रहा है। Incendiary out. केव देखियो मेरा तो बीम पुश देख रहा हूं मैं। देख रहा ठीक हूँ है मैं पीछे हो रहा हूँ बेबी मेरे पास। Grenade. एक के बार एक है। भाई ओ अबे ऐसे ही मेरे को मारा। भाई चोट केव आ गया। Grenade out. बैठा नहीं था मैं भाग ही रहा था अटक गया। ये बहन के लोड़े दौड़ के मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किट है मेरे पास। मॉली निकाली सरप्राइज मदरफकर। वीडियो से मुझे क्या मारा भाई? अबे मेरे को ही डंडा मार के गया डबल डिंग भाग के। तुम्हारा 2 लोगों का बाई नहीं है। एसएमजी ईगल। दे ईगल दे अपना एसएमजी ले ले, हेड ऑन में मत लेना। ए स्मोक कर रहा हूं मैं। मिड डार्क खेलते हैं। खेल लो बॉट्स, वो डार्क से ही ना जा रहे। अबे डार्क स्मोक कर दो ना, फिर डार्क के आगे खेल लो वहां पे। Remember, this is laying down smoke. Shoot everything that moves. Throwing smoke. Flashbang. यही जा रहे हैं। नहीं रे बी है। एक है कि मैं देख रहा हूं। मिल गया होगा उनको वैसे। एक ही बार पे है। दो तीन एक और है। दो एक और है। शॉट शॉट बैक स्टेप देख साइड में देखता हूं। मिड से आ रहा है। सॉरी सो हैकर है भाई। माल दिया मैंने तब तो। लास्ट वाले पे एम लॉक हुआ गाइस। लास्ट वाले का तो एम लॉक है लेकिन उससे पिछले वाले को बढ़िया पड़ा था बे। वो वाला जो वॉल थ्रू चालू कर दिए गब्बू। तब को माल दूंगा मैं। से बेंचो तो एम के बार पे डिगल हो जाके फिर भाग गया। वो बंदा ढूंढ रहा था मेरे को, पता नहीं कहां। अरे इसको आरएनजी करने आए बहनचोद जो टप्पे खाए हैं ना। Laying down smoke.
एक बंदा बच्चों वाटर से भाग भाग के यहाँ पे आ गया था। स्लॉट है नेक्स्ट, अभी तो फुल है ब्रो। ये लो हो गया, ऑफ लेगा, स्मोक कर देना उधर। लगा ले डोर, लगा ले डोर, ठीक है। Smoke. Incendiary. गाइस बी केयर। राइट साइड आ गया पीबी। दो बंदे हैं, एक केव आएगा, मारा है भी केव। एक के पास दो बंदे हैं। जा जा जा, बीजा बीजा बीजा, बी चले जा। केव इन। एक बंदा एक के बाहर है। केव में दो केव Throwing fire. एक लेगा वो। मेन की तरफ है। बहुत बढ़िया। लास्ट भी में आज मेन है। सेव कर लो सेव कर लो सेव कर लो सेव कर लो। साइड प्लांटिंग। अरे आ गया, लेफ्ट आ गया। तू स्मोक था क्या? मैं देखा ही नहीं। हेडशॉट था वो। मेरे को बीच से निकल गई गोली। टेंपल ऑफ। भाई बंदे में कूदा तो है वो, 3 बंदे जिंदा है, 3v1 में स्टिक किया उसने प्लांट। अरे साला मुझे लगा, मुझे नहीं पता था किसका के भी स्मोक था। केवी का तो गेम बन गया एकदम बहन, जो वो चेक भी नहीं करता, उतनी दूर जाके भी उसने मुड़ा नहीं। मेरे को लग रहा था कि वो मुड़ जाएगा वो सबसे पहले वाला। डीगल दे रहा हूं बीबी, पिस्टल मेरे को दे। एक फ्लैश दियो बीमेन का, स्विंग करता हूं। ठीक है, चल सीख के रहूंगा मैं। तेरे राइट में दूंगा, ठीक है? तू बीमेन की तरफ देखना। CS2 की ओपिंग में मैं सीख के साइड पे रहेगा। गिरा दूंगा, वापस से उठा लियो, ठीक है फिर। अरे मेरे पे है, तू जा। डीवी स्मोक नहीं कर रहा है। Flashbang. Deploying flashbang. Throwing a grenade. Throwing flashbang. एक और है। नहीं हो Incendiary. Throwing smoke. पीछे था लेकिन मैं इधर देख रहा हूँ, ठीक है। Flashbang. तेरे हम पीछे फेंके हो। Deploying अबे flashbang. पुश कर दिया। वाटर कूद है, लो है वो बंदा, एक मिनट है, मर गया वो। मिनट कर दो। ये गेम मैंने Throwing fire. गाइस मैं बहुत लो हूं। एमएन था गब्बू। एमेन ना साउंड आया मेरे पे एमएन का। छोड़ दे बहन, ये वैसे भी लो है। आ सकते हैं वैसे बी मिड देख का। ले ये आगे मिड और ए। मेरे पे किट है, अगर तू एक बंदे को साउंड कम दे पहले। आजा बादल तो सेव करना है। जा आगे मार। मैं मलू। हां हिट है ना उसने। साइड एक्साइट है गेम मैंने। अरे अरे बहन, पूछली के अरे मार तो करा हुआ है। अबे इसकी पोजीशन इसकी गलती नहीं है, ये 4x3 वाला है। अच्छा। इसको दिखाई मैं नहीं। सोच रहा हूँ वो दिख गया इसको इसको। दिखाई नहीं कौन सा साइड वाला? हाँ। अबे वो साइड वाला नहीं अबे अरे नहीं, जब तू राइट मुड़ा ना, एमएन की हाँ। तरफ घुमा ना तब हाँ। उसने पीक लिया, तेरे को दिखाई नहीं। हाँ भाई इको करो। अरे डीगल दो। क्या है भाई क्या तो छिल भाई रहा? बी पे एक मार रहे, क्या छिल रहे हो बेशरम में क्या? भाई भाई, ये बहुत प्रेशर यार, मार इनके रहा अंदर आएंगे। बीप बहन जो दो कर रहा हूँ बंदे मैं। निकाल दो, ये भोसड़ी के गाड़ बना रहे। अच्छा डबल यहां के अंदर। स्मोक आया एमएन की साउंड है। क्रॉसिंग स्मोक बीबी होल्ड एक कर रोज रहे बैठ हैं मेरे को बेंच दिखा मेरे को एक, ठीक है बी के बाद यहाँ दिखा बैठ, पीछे बैठ यहाँ बैठ। मिनट में। मैं एक शॉट लेके निकलूंगा, तू मार लेना। आ गया। ओए एक वाटर कूदा। बी आ मैं जाओ जा रहा गाइस, हूँ बी आ जाओ, बी का गेम है। जाओ अरे यार नहीं, मैं नाइस बीबी मार के निकल रहा था बस। नाइस। एक ही बार एक है वाटर सा है। लो है हाई मिड हाई मिड लो है। मैं बैक स्टेप कर रहा हूं, जा वो देख केव देखना। वही देख रहा हूँ। प्रेशर केव के अंदर जाओ।
बहुत बढ़िया लास्ट एक केव, लास्ट केव, लास्ट केव। लास्ट केव 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 बॉम्ब मेरे पे छोड़ दे, आजा। ओए मिड पे करना जा। आ रहा हूँ। भाई बॉट बंदे आए हैं भाई, गलत गेम में पनिशर मार रहा है। पांच साइड दिया ना पनिशर। 100 in 3 भोसड़ी के 100 in 3। अबे नहीं केबी नहीं, वाली। मैंने 5 का केवी दिया सर, एक को और केवी एक सर को ऑफ दे। ऑफ मारा। केवी सर ऑफ दो। गन दिए तेरे को मैंने। ये दे मेरे को, ये एक नहीं चलती बेंच चुतिया के नहीं के। स्पॉन में ना गन वन गिराते हो, साथ में गिरा करो, स्पॉन में गन गायब हो जाती है। फिर से जा। Laying down smoke. फ्लैश यूटिल फेंकते हुए। स्मोक नहीं करो ना, ठीक है नहीं मैंने कर दिया। इस बार 2 थे, एक फ्लैश हुआ दूसरा नहीं हुआ। Incendiary out. Smoke. Throwing a grenade. दो बंदे मिड भाई भाग क्यों गया काम में? अरे वो बी पे मरा ना। ओए इधर आ रहा है क्या? बी के बाहर है। मिड है कम से कम। अरे हो गया, मरो मत छोड़ दो, आने दो उनको। ओह केव के लिए है। ये बी आ रही है, बी आ गई। भी आ गए मिड से। अरे यार ये निकल जाता तो निकल जाता। मिड पे क्या समझ बॉट्स निंजा कर लेगा, वो साइड पे किट है, मत जा अभी। Throwing fire. अरे स्प्रे रख दिया। लास्ट मैं में नहीं वो F5 वापस दूं क्या? जल्दी से दे F5 वापस दूं क्या? इको करना बंद है हो ये गया। नेक्स्ट फुल बाय इको वो। ही हाँ, कर ये लेते इको हैं। कर लो। और मैं मिड नहीं खेल रहा, कोई और खेल। मैं बी में पुश करो, मैं फ्लैश जा फिर एक अभी खेल नहीं लेते खेल रहा बहन। ऐसे भाई हर खेलेगा, राउंड तो ऐसे ऐसे भी नहीं किया। ठीक है, जाओ मैं फ्लैश दे रहा हूँ। लेके। अबे क्या है? अभी के हां बी में पुश। जा मैं फ्लैश करता हूँ। Let's go. जिस हिसाब से मर रहे आई एम गेसिंग की होल्ड करेगा वो। अच्छा राइट साइड फ्लैश करना, ठीक है? हां जाओ जाओ भाई। अबे क्या क्या मॉली में चलो क्या? जाओ फ्लैश कर रहा हूँ। एक ऊपर भी है। थोड़ी में छुपा था क्या? नाइस वन। बहुत बढ़िया। अरे भाई यार तुम अबे भूसड़ी। बहुत बढ़िया, अपने बंदे मार गन चलो। डब्बे में से उसको मारा ये बैठ। बहुत बढ़िया। 1v2 लास्ट ऑपर होगा। लास्ट नहीं, केव के बाहर पे। केव के बाहर है ना, मैं वाटर से आ रहा हूँ। मिड लो है बॉडी शॉट। बी की तरफ आ रहा है। आ गया बहुत बढ़िया। There's no stopping us. And we get क्या गया भाई? अबे मार रहा था और उसको मार दिया, उसके बाद मरा मैं। अरे तू उठ गया, रिकॉइल ऊपर गई, तू क्राउच करके अच्छा, स्प्रे अच्छा। कर रहा था, तू उठ गया। अबे स्प्रे किलर है। P250 ना, P250 था मेरे पास। क्या काम है? 11 किल। व्हाट इज दिस क्या है? स्प्रे करूंगा भाई? क्या? व्हाट इज दिस ऐश? क्या भाई 9 किल डबल डिजिट पे नहीं है? बेयरली 1000 डैमेज। ये तुम लोग SC ST OBC क्यों खेल रहे हो? भाई मैं तो पर्पल रैंक पे भी नहीं हूँ। सबसे कम रैंक वाला हूँ भाई। मैं मेरे लिए रैंक पे नहीं हूँ, मैं तो रैंक घंटा नहीं है। कुल तो गई पर्पल के पास है भाई, मेरे से ज्यादा है। कितने 14 गोली इसकी? 14,600। नाइस। कुछ भी मार रहे भाई, कुछ भी दिखते ही हेड। मैं अब बी पे बहुत मजा आया, हर राउंड एक फ्लैश करके एक को तो टपका के आ रहे। भाई मैं फ्लैश दे जा रहा हूँ, अंधे वेंच दे फ्लैश फिर सर अपने फ्लैश में फेंक रहा है, वो भी फेंक रहा है वेंच। बैटल ऑफ फ्लैशेस। अरे ऊपर से लास्ट राउंड हार के उन्होंने मॉली कर दी। पनिशर मार के वापस भी आ जा रहा है वेंच, फिर भी फ्लैश ब्लाइंड आंख पे हाथ वेंच। कोई तो वो मैं जो तंग आ गए थे लास्ट राउंड जब हम पुश करने गए, मॉली फेंक दी उन्होंने। आओ ही नहीं वेंच। ऐसी बंदा चाहिए मुझे बी पे, निडर पनिशर जैसा। भाई वो
राउंड सबसे सही था। एसएमजी लेके एक को मार के आया, फिर इसने फ्लैश दिया, फिर दोबारा एक को मार के आया, अंदर आ गया। पहले CS:GO में कभी-कभी बंदों पे रेज होता था कभी-कभी भाई एंशिएंट है ना। देखते और क्या CS2 होने के बाद बस केवल गेम पे रेज होता है बाकी ओ भाई 22,000 बाकी वाला आ किसी गया पे है। कुछ नहीं होता भाई। हो गया जीजी हो गया। हैकर आ गया, हैकर हैकर है भाई 100%। वो अनरैंक्ड भी है ना साथ में, वो उसको पुश करेगा। इन्फर्नो कर दो। गो गुलाबी। तो मेरा मिराज अनविश तो भी खेलेंगे। खेला है। मन ने नौ खेला ना। खेलना ही नहीं है। वर्टिगो खेलो ना। फिर वर्टिगो ऐसा हटा है ना, दो। बस ना लगा दे वो। भाई वर्टिगो हैकर्स के लिए ना सबसे गंदा सबसे अच्छा मैप है भैंस के। उसमें रोटेशन पूरा दिखता है। और चोक और पॉइंट्स। भाई आज मैं खेल रहा था, उसमें न्यूक में आया हैकर, वो बंदा बी पे जाके सब बंदे मार देता। तो बंदे ए पे बुला लो, तुम रहेंगे ही नहीं मारे। अबे बी से ए पे स्पैम पड़ता है। हैं? हाँ, वो बंदा बी साइड जाके बैठ जाता, वो बंदे कहीं भी आ रहे हो, बी आते तो मार देता, ए आते तो मार देता। ओ भाई साहब। तेरी टीम में था। हाँ मजा आ गया तेरे को। मजा आया। मैं तो भाई, होगा फ्री बूस्ट। और क्या। Laying down smoke. ऐसे पहुंचा तू 15,000। अबे अबे इसमें कॉम्पी वो में भी था। है, नॉर्मल लेके घूमो तब भी एनिमेशन है शायद। ये देख। कौन सा नाइफ है इस पे? के। Which knife do you have? Yes, यार देख, मिल जाएगा। ये व्हाट इज दिस? टारगेट चेंज क्यों कर रहा? पनिशर का व्यू मॉडल कितना बेकार है। Gear up. We're going in. क्या व्यू मॉडल? लेट मी चेक। एक मिनट। 250। भाई इसकी प्रोफाइल नहीं खुल रही मेरी। रुक जा। ये पनिशर को कमेंट करता था तक। कमेंट कर देते हैं। आईडी तो ए मेरा 21 क्यों हुआ है? नहीं, इसको 20 करो जल्दी। गब्बू तो ब्लडी हो रखा है। पनिशर मेरे को भी कर दे। बंदा हो गया गेम स्टार्ट हो गया बॉयज। सबको आवाज बताइए, मैं नेट करता हूं। अबे वो सामने वाले के एक डेथ क्यों है? मिड बी शॉट केयर। एक मरा। बी केयर। क्या जंप किया हमने आगे? Grenade out. पीछे कर। कीबोर्ड दिखाया लेकिन। पीछे दौड़ रहा हूं पीछे। एक हाई मिड है। Throwing Alright. flashbang. पहले एक जेट यार। पहले जेट है। हाई मिड है, शॉट आ रहा है। डेड। कनेक्टर ठीक है पीछे। कनेक्टर मैं देख रहा हूं, छोड़ दे। लगे एक पे कौन सा ए साइड डिफॉल्ट भाई। Easy peasy. कंसोल कहां से बंद होगा? पनिशर लेफ्ट जाते हुए दिखा तो बोलते हैं ना। कहां लेफ्ट जाते हुए? तू तेरे मरने के बाद गया है, वो वहीं पे था तब तक। नहीं, वो लेफ्ट से आके राइट मारा मेरे को। कंसोल कहां से बंद नहीं। होता है? बोशली वाला। एस्केप दबा दे, कुछ भी दबा दे। अबे नहीं होता वैसे, बंद ही करना है कि खुले ना। अच्छा वो इनेबल उसको ऑफ कर देना सेटिंग में जाके। इनेबल Setting में। डेवलपर कंसोल। तो कौन सी टैब में उसको नो कर दो ना इसको। हां नो। अबे उस पे अपने आप आ जाता भाई, फिर वो खुल हिंदी अब नहीं होता। अब तो की चेंज करता है ना। अब अबे पहले आदत थी ना गो में। तो उसका कीबोर्ड डाल दे नमपैड पे कोई। खत्म। मैं तो पेज डाउन पे डाल रखा है भैंस की आंख। बहुत है स्क्रॉल लॉक, पेज डाउन को भी जिंदगी में यूज नहीं हुई होगी कभी की वो। इतना दूर डालो, हाथ जाए ना वहां पे जब तक तुम ना डालो। हाथ छोड़ो, अरे यूसेज वाइज भी स्क्रॉल लॉक किसने यूज किया है आज तक? WASD दबा के पेज डाउन कहां पे है? मेरा तो बाय राउंड में नमपैड दबता था अदरवाइज तो सालों सुमड़ी में भाग गया भैंस क्या। नेट 2 फेंके थे ना, एक कामिन तूने भी फेंका था ना शायद? मैंने फेंका। वो दिखा मुझे, मार्क दिखा बॉम्ब का। ओवेंट कृष्णा की लाइट गई क्या?
He भी died. Punisher बेच दे इस टाइम. अरे अभी तो मिल ही था पहले, ये दूसरा गेम तो है ये Spec से। इसको फिर अपग्रेड मार दूंगा। इसको जब लिया था तब शायद 13-14 का था, अभी 17 का दिखा रहा है स्टीम मार्केट पे। कौन सा है तेरा? क्लासिक। अच्छा क्लासिक है. क्लासिक अच्छा है। और एनिमेशन इसमें सबसे बढ़िया वो है ना, क्या बोलते, खड़े खड़े भी एनिमेशन है, कोई बटन प्रेस ना करो। क्या एनिमेशन कर रहा है? अभी देखिए मॉड लेने है क्या? हाँ। ग्रिल्स। हाँ 3 अच्छा पे वो क्या, वो तो सबका आता है, सब नाइफ नहीं पे नहीं, है. सब में नहीं होता, रुक आइडल जाओ जाओ। एनिमेशन नहीं होता 3 ना। पे करना, 3 पे करना। आता है, एफएन आता करो आता करो है. FN आ जाएगा। फेल्शन वाला है ना, उसको वो बैलेंस करने लग जाता है. ये है जैसे ये वाला, ये नहीं आता। हाँ आता है. ये देखा? फेल्शन रुक में जाओ। मतलब हर किसी कुछ कुछ में है ये. भाई सबसे बढ़िया नाइफ तो मुझे हाँ वही। फैल्शन नहीं लगता है, देखा? अच्छा हाँ, हर एक में वो होता है इसका। फंक्शन नहीं है क्या जिसमें नहीं वैसे हर एक खड़ा में नहीं करने लग होता, जाता है? हाँ हाथ पे, 2-3 में ही है सिर्फ। हाथ पे खड़ा कर देता है। हाँ कुछ कुछ में. मेरे को तो बड़ा मस्त लगता है फैल्शन नाइफ साला। ये पता है, ये 1.6 का नाइफ है. मतलब हाँ 1.6 का वो डिफॉल्ट नाइफ है। हम्म. हाँ। तब भी महंगा बहुत है बेंच, इतना महंगा कौन देता है रिपोर्टेड। फिर से 3 पे करना। भाई कितना टाइम ले रहा है ये? अभी तो डिस्कॉर्ड में भी नहीं आता. नहीं वो पहले गेम 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 ज्वाइन करता जल्दी जल्दी। 30-40 GB तो अपडेट में ही चला गया, इतनी जल्दी अपडेट। भाई टाइम आउट खा गया सारे ये। चलो आपने। तीसरा क्यों नहीं लिया? उन्होंने वो अभी कर लेंगे ना. अभी। छोड़ दे भाई डिएगो। ऐसे भी कौन सा टाइम आउट यूज ही करेंगे। ये आइडल एनिमेशन उसका अच्छा है. वो कौन सा एक है, ओशन पैराकॉर्ड है वाला या जो हाथ पे सर्वाइवल है? घुमाता है ना, पैरागॉन है सर्वाइवल क्या? सर्वाइवल हाथ पे चलता है ना मस्त करके। उसमें क्या होता है कि वो हाथ छिल जाता है उसका. नोमैड है वो। नोमैड है क्या वो? यार सर्वर पे आता तो मजा है यार. हाँ जो कलर चाहो वो यूज करो। कोऑर्डिनेशन करा के नाइफ करते. ग्लव्स भी थे यहाँ, बेंचो देख लो क्या मोटरसाइकिल वाले टूटे फूटे ग्लव्स थे। मोटरसाइकिल की भी नहीं भाई, ये तो पता नहीं क्या टट्टी से है. अरे वो नहीं बाहर, प्लास्टिक वाले. वो जो रेडी पे बेचते हैं 100 रुपए के 2, हम्म. वही वाले। काम में तो कह रहा है मैं तो भाव कर लेता हूँ, 70 में ले आता हूँ. चलो भाई केबीज नो मोर। खेलो यस। 2 बी खेलो। RPI. बी वाला बंदा बी शॉट आएगा, एक बंदा कनेक्टर खेलो और एक बंदा ए साइड या फिर ट्रिपल खेल लो। They're gonna wish मेरा they तो were never बी born. क्यों तोड़ रहा है, जब 4v5 मिट जाएगा ये कौन? Throwing fire. गलती से हो गया सर। अरे जा छोड़ दे, मॉली वाली मत करिए, बताता हूँ। साउंड नहीं है। स्पॉट कर Fire in the hole. फ्लैशिंग शॉट। Flashbang. हाई मिड एक है। Grenade. एक और मेन. Grenade out. जा रहा है ओ क्या? भाई एक पैलेस. गलत मारा. अब तेरे नियर से वो दिखाई नहीं मेरे को। हाई मिड था एक। पैलेस मेन हाई मिड. Bomb has been planted. Throwing a grenade. भैंस क्या। Terrorists. अबे नीड उसके मुंह पे फूटा है। नहीं बहुत ऊपर था. अबे यार क्या मार रहे हो बे? 2 बंदे टैग हुए बे। आ जाओ, स्ट्राइक करता है आराम से, बी छोड़ दो। एक इन्वर्टर नहीं लगा सकता ये लोंडा। Let's go. स्मोक आया. ए कोई नहीं है, पैलेस खाली। ए मैंने क्या एक शॉट. नाइस बी शॉट. आ रहा हूं मैं एक ही अकेला। होगा बीबी उसकी अकेले। चल
आ गया कनेक्टेड भाई मेरा गेम क्या अटक पीछे साउंड आया तेरे मार्केट अभी फ्रेम कर रहा है फ्रेंड से भाई वो अनरैंक्ड बंदा गलत मार रहा और ये 19,000 वाला भी टॉप पे दोनों सिंबल वाले गलत मार 19,000 वाला तो मार सकता है, नया अकाउंट है उसका पूरा। अरे वो बूस्ट हो रहा है भाई, देखो ना 0 किल पे इसी। क्या बाई कर रहे हो ना आप? हाँ हाँ क्या कैसे कट जा रहा हूँ। पैलेस देख रहा हूँ। ठीक है Deploying flashbang. बी शॉट मैं स्मोक हो गया कनेक्टर पे, बी शॉट केयर Throwing flashbang. बैक ऑफ साइड खेल रहा हूँ। चेयर है, बूस्ट भी हो सकता है अब तो। अब आ रहा है। कनेक्टर आ गया यार। बी छोड़ रहा हूँ मैं। हाँ भाई ऑफ कोर्स। बी मत आओगे भी सर। वाह बैक कर रहे हैं, मैं तो बोलता था एंटर कर। टक्कर है क्या फुल रेज? यस यस पहला राउंड जीते थे। यस यस You want deagles? यस 3 deagles drop there. मिले फिनिशर। आओ डिफॉल्ट कर लो। चार लोग भी हैं, आराम से खेलो। बीबी तू ले लेना वाली। 4 लोग We किधर are क्या? out of here. अब खेलो अपना डिफॉल्ट खेलो। अब 5 लोग हो गए ना, पहले 4 थे। ये क्यों खड़ा है चुप शॉट ये घुस गया नाइस शॉट एक और। ये साइड बी आप से क्या भाई बीच में और आगे हील गिराने आया था ये। अब चाहिए? नहीं, उसको दोबारा लाइट आ गई होगी। अब भी पीसी बंद होता है क्या? काम है शॉट खेल लो। हाँ, उसका लाइट ज़्यादा जाती है। चूतिया ना। Throwing grenade. Smoke. एंटर पास Grenade out. मिड ए में भाई हाई मिड Bomb has been planted. Deploying flashbang. क्या तरीका है ये के भी Throwing flashbang. Terrorists win. क्या कर रहे हैं? कुछ ना समझ तू। वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम। मिड रश कर लो, जाओ। फ्लैश करता हूँ। मिड रश अब नहीं है तो क्या करेंगे? इको है। इको है ना। 7 ऑन हेड ऑन Come on, jump. Flashbang. पहला फ्लैश कर रहा हूँ। Deploying flashbang. जाओ दूसरा फ्लैश कर रहा हूँ। क्या कोई नहीं आया ब्रो। क्लियर है। ये स्मोक किया उसने।
ए आगे पहले 100 पर है। Incendiary. एक ही सेव कर लेना तो। एक बंदा सिटी आया, ट्रिपल एक बंदा। ये देख भाई ठीक है भाई। ओ भाई देखो उसे। शीश। मैं स्पॉन पे खड़ा हूँ गाइस, सॉरी नाउ भाई। एक गेम तो चुप ये मैं ऑफ कर रहा भी ऑफ कर रहा क्या फिर तेरी ऑफ उठाऊं। आ जा। What on? Deploying fire. Deploying flashbang. ए मैंने हाई में देखा Throwing smoke. शॉट केयर। Grenade. Incendiary out. Throwing flashbang. टेट्रिस है 2-3। अबे यार मेरा वाईफाई चुद रखा है यार। भी हो गया। हेलो पहले से एक है। अबे मेरा वाईफाई बेंचो बार बेंचो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। P90 वाला आ गया, बोलो तो सही। अबे इस पे अरे हमें खुद नहीं पता, मैं तो एमएन पे था। इस पे इतने पैसे क्यों हैं? इस पे ये काम में कौन बैठा होगा ना। इस पे सामने हां निकल लगे। कौन है? क्या खेलना है? हैकर है। और This is bandit country. Shoot everything that moves. Deploying flashbang. Throwing a grenade. Smoke. Throwing fire. Flashbang. एमएन है। बम ड्रॉप कनेक्टर है, मेरे को ऑफ दे। ये साइड देखना, स्मोक पहले कनेक्टर आ गया। आउट। हाँ ये भाई ये कर रहा है स्टेयर है, कनेक्टर एक। मैं वो क्रॉस देख रहा हूँ गाइस, थोड़ा हाइड्रा का मैं क्रॉस देख रहा हूँ। हमें हाइड्रा वो क्रॉस दे। स्टेयर्स लास्ट। स्टेयर लास्ट मेरे क्लोज है। हमें जा कर ले साइड से। बता देना देखा कैसे तूने करता इसका? हूँ तुम्हें मेरी जरूरत तो। खेलना क्या खेलना है? मैंने तो मार दिया उसको, हैकर को। लो खेलो एक राउंड, देखो कैसे मारेगा, चीख खाएगा। भाई हम सेकंड थर्ड राउंड से तो हम लोग वो खेल रहे हैं, क्या वो 4v5। हां अरे भाई ठीक है, खेल लो। बॉटम फ्रैगर है भाई। मैं वो कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा। टॉप पे दो कर रहे हैं, दो फर्स्ट और थर्ड कर रहे हैं। ठीक है बी फ्लैश है। खाली है जगह। बी आ गया एक एक बार दो। बी और एक बार नाइस साइड आ गया भाई। बी में अकेले जा रहा, मैं क्या बोलूं मैं। कोई बात नहीं, 3v2 है। ऑप हो सकती है उनके पास एक। बॉल ही नहीं, रुक जा। तुम्हारा बंदा लो है, शॉट वाला। शॉट देख ले, साइड विंडो। क्लोज नेड ही नहीं फेंका, मैं तो मिसिंग हो गया। मैं सोचा फेंक गया। बी पे दो पनिशर जाना, बी क्यों नहीं खेल रहा तू? अरे मैं पहले से चढ़ गया था, मारा तो एक मैं जाता हूं भाई बी। इसको ड्रॉप दे दे गब्बू को।
दे दो, मैं ए पे शॉटगन मार रहा हूँ। वही रहा यार बार मरने के लिए। Let's do it good. Grenade out. वॉली कर सकता है बीएफ में। कर रहा हूँ। एक मिनट आगे बता। शॉट शॉटिंग एक मैंने शॉटेड है। शॉट दो हेल्प करेगा कोई? रुकना, 2 बंदे हैं यहाँ पे। एक भी शॉट है। Deploying एक flashbang. बंदा जंगल है, एक बंदा कनेक्टर है। कनेक्टर गया Deploying flashbang. और ये बंदे के इतने किल हैं, ये चूतिया बंदा देख रहे हैं? Deploying fire. ये साइड पे है वो। साइड पे भाई क्या पहुंच दे रहे हो? भाई भाग के आ गया होगा भाई, काम है जब मैं यहाँ कर अच्छा ठीक है। तो पिक करोगा वहाँ पे उसका। Terrorists win. हाँ मैं स्पैम स्पूम सब कर रहा है, मुझे लगा मेरे को भी नहीं पता था, मैं भी नी की बॉल पे खेल रहा था। 2 बंदे जो कनेक्टर दिखे थे भाई। मेरे को तो नहीं दिखे। एक आर्मर ड्रॉप पे। एक ने नीचे से मॉली किया था, एक ने अमर। नेड किया था, उसके बाद वो हाई मिड भाग गया। मैं मर जाऊँ, मेरा वाला उठा लियो। Move. वैसे भी ट्रेड मिलता ही है तेरे को एमिन वाला। Incendiary out. Throwing a grenade. शॉट पे कूद देता है जा। Throwing smoke. Flashbang. भाग रहे मिड, भाग रहे शॉट क्या के कर शॉट शॉट कर स्मोक दो स्मोक। बेडरूम में Grenade out. हाई मिड है एक पैलेस। बेडरूम डेड। एफ से ऊपर लास्ट ऑफ ऊपर इसको तेरा लगे। वी हैव मर गया क्या? लो है वो, लो है। साइट है, लो है गाइस, लो है। साइट है। नाइफ निकाल, गन निकाल। मार्केट मॉल ऐसे प्लांट कर रहा है। और फ्लैश करके कब को था पता नहीं चला। लास्ट राउंड है। इसके ऊपर तो पूरी है वो, और पॉप का कोई डर नहीं था उसे। We're in the clear, lads. खाया था भाई वो। This is easy. We kill them and then we go home. क्या करना है? फेक करने का कोई फायदा तो है नहीं, तो रश चलो रश कहाँ? स्मोक का वेट करना है हमें या फिर दौड़ जाओ, मैं कर दूंगा, यहीं से कर दूंगा। थोड़ा सा लेट हो जा। ओह माय गॉड, कामेज बजेंग। Forward. ठीक है। चलना है। हाँ एक का स्मोक कर रहे हैं, बी क्यों भाग रहे हैं? Throwing a flashbang. इसका मतलब है ऐसे भी एक Flashbang. एक सेकंड ब्लाइंड हो गया मैं। अंदर एक Counter terrorists win. इससे निकल नहीं पाएगा तुम लोग। वो किसी और को मारा था, मुझे लग गया। ये पहले वाले बंदे का ना मेडल दिख रहे हैं ना कुछ दिख रहा है, क्या चल रहा है ये? मेरा नेट आ गया लग रहा है। Let's go. Rip into it. एसी चला रहा है। Guys, I need to plan. Cover me. Throwing smoke. मिड पुश है साइड। हट जाएगा, Mid push ही है vertical उनका। है। जा पहले बॉम्ब कर दो। वो प्लांट भाई प्लांट आ रहा हूँ। भाई इनका
अकाउंट नहीं है बहुत बड़े गन्नो इधर एमिन देख रहा हूं बैक से पहले देखना एक बंदा शॉट एक एक सीटी डिफ्यूज कहाँ भाग रहे हो? क्यों मरते क्यों भाग रहे हो तुम? क्यों भाग क्यों रहे हो? मेरे को ये बताना। पोस्ट प्लांट जीत रहे हैं क्या हम इतना? जंगल गन पे भाई मैं जंगल पे था वो प्लांट उसका है हाँ किसका है? मार्केट का है तेरा शॉट वाला क्रॉसिंग देख तो रहा हूँ आएगा तो वो उड़ के अबे तो डिफ्यूज कर देगा ना साइड पे कोई नहीं था पैलेस का प्लांट था। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ पैलेस का प्लांट तभी तो आया मैं दौड़ते दौड़ते साइड होल्ड कर लो ना। भाग क्यों रहे हो एमिन रश दो बंदा यार से मार दिया। बी जाओ ना। Sorry, no. शॉट भी है Throwing smoke. हाई मिड कर Flashbang. एक्स्ट्रा केयर एक टीस्पून साउंड आया मुझे हल्का सा। पता नहीं। हाँ कौन हाँ पीछे मर गया वो। बी साइड है बेंच बेंच है प्लांटिंग में शॉट I've planted the bomb. शॉट केयर करना भी है। शॉट आ रहा है शॉट Terrorists win. Fear us. अभी क्या खेल ये रहे भी हो? टैग खाया था पहला वाला को @ वाला और या हैशटैग वाला है। ये ब्रोकन वाला तो मेरे को पक्का भाई इनके ना फेस ही अरे ये मेरे पे एमेन पे मर के सीधा बेंच बैठ गया जाके बी पे एमेन पे टैग खाया था ये This is our fight. भी आया बेंच वाला Flashbang out. Watching high mid push अंडर high mid push हो रहा है। BFC push हो गया। Grenade out. I'm throwing fire. Grenade out. Throwing a Molotov. सिटी स्मोक है Launching. स्टेयर Throwing smoke. कोई बंदा करो। येलो कौन है आ रहा हूँ भाई। सिटी स्मोक कर बोल तो एफ करा पता नहीं I'm planted. हो सकता है झूठ नहीं बोलेंगे ये लोग। क्या है ना लेफ्ट में ये वो नहीं Throwing a flashbang. Terrorists win. जीत तो ऐसे जाएंगे झूठ क्यों बोलेंगे वो लोग। धन्यवाद एक बंदा BF से भागते हुए आ रहा था। मैं हाई मिड होल्ड कर रहा था। बोला कि हैंड पे डील के कुछ भी टप्पे पड़ रहे हैं इन कुतियों के Go, go, go. मजा आया मेरे को मजा आया। Throwing flashbang. मैं टॉपर है यार मैं टॉप लेके गया था क्या? अरे मेरे से पहले पहुंच गया उसे एक ही लेके जाएगा फिर भी तो दो एक पीछे एक आगे अंडर एक है टकरा गया एक बंदा मिड है एक बंदा पहले से एक ये मार दे काफी। बढ़िया एंगल था यार एंगल बढ़िया। फुफड़ी को कितना कॉन्फिडेंट रहता है वो बेंच। देख रहा तू? एक हमारा बॉट एक लेके मिड जा रहा है बेंचो। Not a bad bloody idea. है कि नहीं बॉट? अयोप हाँ मैं भी ऑफ।
बाकी सभी को Come on, let's go. Quick stick. हम इनके ऊपर उठाएंगे poor peoples. लगा के रख, मैं जाता हूँ रखते। मेरे ट्रेड में तेरे को पड़ जाएगी। माधर चूद आया ही नहीं, अब देखा 2 दिखे उसको। वो किया उसने भोसड़ी वाले ने। ओ लॉल बॉल क्या मस्त मारे डबल डिंग। कहाँ से मारा मुझे? पता नहीं उसका कहाँ से पड़ रहा है, वो हर राउंड मार रहा है। मेरे को कहाँ से और स्मोक ये ले लेंगे इवेंट क्रॉस में क्या मारा है? जंगल है, जंगल से। बच्चे बच्चे देख रहे ज्योति। अब तेरी नाइफ मत हो, ये रिलोड कर ले सारे गन। दूसरी वालों ने सारे एंगल तो मेरे वो कर दिए। चाकू पहने कर वो रहे नहीं हो, देखा हर राउंड। हिंदी में चाकू पहना कर रहे हो। कान खोलेंगे। ये अब बताओ फिर बोल रहा है कि नहीं कर रहे वो हैक नहीं कर किसने रहे बोला भाई वो। नहीं कर रहे? This is predicted. This is wall. This is a wall. ऊपर रखा। अच्छा इस बार खुदा नहीं। ऊपर आ गया, पहले से आगे पीछे से। भाई साला मेरे को लगा इस बार फिर कूदेगा। अब वो टीम स्नाइप कर रहे हैं भाई, वो कुछ नहीं और। हाँ बात तो सही है। और ये ना बंदे का फेस रेट अकाउंट नहीं है। स्ट्रीम पे कोई है चलो बीरश प्रो बन रहा है। खत्म करो। बीरश का सोना साढ़े 12 हुआ है आज तो। बहन चोद बीबीएम मैंने 10 राउंड खेले और बहन थोड़ा खेलते बहन। फिर भी नींद आए, देख तभी तो नींद आएगी ना। से यार कसम से बीरश लेट्स गो। आ गया बंदा तो भाई आ गया भाई, कसम से भाई क्या बॉट्स है भाई। अरे भाई पीछे खड़ा हो गया भाई। भाई वो बंदा सीधा शॉट आके हैमकर्स एवरीवेयर। बोल ले 15,000 से ऊपर मत जाओ ना, उठेगी। वही है 15,000 से ऊपर गेम है नहीं। चलो भाई गुड नाइट बाय टाटा। क्रिकेट 3 दिखोगे टट्टा टाटा बाय बाय टाटा। वैसे रुकना वॉलपेन है खेलते हैं ना तुम खेलो। रुकना यार बहुत के। अबे तो हैकर वाला गेम था ऐश, वही तो काउंट भी नहीं होगा। ये तो काउंट भी नहीं होता। आजा मास्टर से G2 भी चल रहा है, उसका रिजल्ट भी देख के जाइयो। चल रहा है क्या? हां अब मेरा ये क्या आ रहा है, कनेक्टिंग टू CS2 नेटवर्क फैन चोत। तेरा जॉइनिंग लॉबी में ही अटका हुआ है। रुक जा रीस्टार्ट कर रहा हूं। Reinvigorate this guy as well. Like, look at the difference in roster changes. चल का रहा है साले, स्टार्ट भी नहीं हुई। Strike while the iron's hot. This is your moment. This is your tournament for that deep run. This is your moment to go challenge one of the top 3 teams on the other side of the bracket. Did you imagine that Broland would work the way it happened right there? I could not. Bro, I was ready to send him off into the sunset. Dignitas was waiting for him. Bro, it's like it's impossible, and somehow he delivers. He's been put in positions, and he proves everybody wrong that he's. Vulcan. नहीं मैं नहीं है। Leader that we've seen in the scene at some time. And they'll hold on to it as well. But Alexis still back. पिछवाड़ा बहुत कर दिया। They remain जगह नहीं है पिछवाड़े में। Stage that was tough for us. Each game is. टाइट डाल लगा किसी ने। तेरी तरह कुछ ढीला थोड़े है सब पे। There was so much going on. Stats do not tell the story. क्या बात है, लौंडे कितने से मरवाता है। एक्सपीरियंस बोलते। I love you. And lastly, I'll ask you. Recession. I will ask you this: you made top 4 at the major for your first major last time around. Yes. You've done it again, but how confident are you that this RB can go a step further than you've ever been?
We're here with a better roster, better players, better game leader, and we're going to go to the finals for sure. For sure. अरे वो है ना गब्बू कौन स्ट्रीम में पूछ रहा है बंदा साहिल हैं अच्छा हाँ वो करूँ पहले तो How can I set you up? We don't have to play my way. I want to play your way. And the rest of the lineup that accommodates him as well. Exertion. I mean, how selfless, how selfless you can be as a player when you have this quality. I always thought Exertion is an extremely good playmaker. He's got multi-kill ability, but time and time again, you will see him take a step back to make sure that Roland's got the space. It was the case with Frozen as well. So, and he's still providing. Like, this is your win-win. That's your rain situation almost. The guy that's never going to eat away at the apple right there is just going to leave. क्या हो गया? लेकिन एपेक्स के लिए बंदे ज्यादा हैं। मैं G2 वर्सेस माउस देख लेता हूँ। कोई नहीं, देख खेलना उससे अच्छा एक बंदा ना वल्कन है तो खेल ले, क्या दिक्कत है? अरे भाई तू लॉन्डे को आज तक मना पाया तो? लॉन्डे मनाऊंगा भी क्यों? लॉन्डिया बोला है। लॉन्डिया ही तो है वो। लॉन्डिया वल्कन अभी खोलेगा ना? वल्कन दोबारा करिए। नहीं नहीं यार बोल भी दे। अबे जल्दी बोलो भाई। मैं जो खेलना है मैं तो रेडी हूँ। सेम क्या बेंच है? एपेक्स तो 3 ही लोग खेल सकते हैं। हाँ अभी तो वही काम में अलग ही खुश हो रहा है। हाँ तेरा तो वैसे भी नंबर नहीं आने वाला काम है। क्यों भाई? Because we are the best trios, best ever. अच्छा। अबे यार बाज बने क्या आज बेंच? पिछले पहले की तरह। आ जा। Let's go. यार रेवेनेंट का क्यों नहीं है लेकिन यार हम पे? पहले साइलेंट करता था वो। किसी का तो होगा कुछ ना कुछ। क्या एपेक्स खेल रहे हैं? हाँ बाज बनेंगे बाज। 10 गेम मेरे पहले वाले मैड मैगी के। आ गया होगा। पहले 10 गेम मेरे। अब इस बार कौन सी आई है? फ्लैट लाइन की स्किन आ रही है। वो रिएक्टिव वाली। सॉरी कामे। कामे गया। कहाँ? देखना डिस्कॉर्ड में, दिख रहा तेरे को? कामा ने ले ली दिल पे। कथे ले ली? कामे बोलेगा आज के बाद बहन के लड़ों के साथ मैं ना एपेक्स खेलूंगा ना सीएस खेलूंगा ना कुछ खेलूंगा मैं। चला गया? ये देख, ये तेरा साउंड स्लो है क्या? चला गया? नहीं यार उसका पूछ रहा हो। नहीं यार पूरा क्या? अंदर चले गया। देखो तो देखो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बिना बात के मेरे के गाड़ मार रहे देखो हो। क्या वो पेड़ है? इसने आवाज ही ऐसी निकाली थी। कितने गंदे बच्चे हो तुम यार। वेलकम। भाई क्या एक्सेप्ट करवा रहे हैं? क्या कुछ चेंज कर दिया इन्होंने? वेलकम। एपेक्स खेलेगा? अब तो एपेक्स भी चलता होगा इसके पीसी में। बोल दे। चलता है, मैं नहीं खेलता। आ रहा हूँ। You know, as a streamer, I have to put subtitles, long titles, everything. You know, everything takes time. टाइटल और सब बदलना पड़ता है एक व्यूअर के लिए। नहीं सॉरी भाई मैं ना इतना प्यार से पीजीएल देखने वाला था। बाज बनेंगे भोसड़ी के, क्या पीजीएल दिखेगा? तो जब बाज के लिए थोड़ा अच्छा कैरेक्टर ढूंढे। भाई मैंने कल खेला फेसेट, मजा आ गया भाई कसम से। पर तुम लोगों को पिंक का शो होगा, बस वही दिक्कत है। मेरे को यहाँ भी होती है। और फेसेट के मैचेस अच्छे भी होते हैं भाई, ऐसे नहीं होता मतलब बंदे सीरियस खेलते तो बहुत अच्छा खेलते हैं। फेसेट में बहुत पिंग आती है यार। अबे वो सो स्ट्रांग था ना, उस पे तो खेल सकते हैं। सो स्ट्रांग जिंदा कि नहीं ये देखना पड़ेगा। ओह क्या लेना है बाज बनने के लिए? हम जस्ट
ऑक्टेन फोकसिंग ऑन बाज। यार ये न्यू वाला क्या है यार, ये नया जो यूनिवर्सल ये लो मैं कैसे कर निकालना है ये? वो भी शार्ट से ही होगा। नहीं नहीं शार्ट्स तो आई नहीं रखे इसमें। मेरे ख्याल से ये क्या आ पैक गया खोलने हैं, कितने सारे हैं ये। वेलकम। और का है क्या है? ये आया तो ये किसकी है बे? बैश का ये आया है। वेलकम। क्या पकड़ने वाले चाहिए क्या अभी? मैं भाई कितने आ गए ये तो कितनी सारी आ गई। सारे आ गए भाई, फटाफट क्यों करो, इंटीरियर तो हाल भी खेल रहा है, उसके लॉबी में चलते हैं, उसी को मांगेंगे बाज में। किसको? हाल फिर वो एवन को गालियां देगा, भूतड़ी कहाँ मरा रहा था। मैं तो यहाँ मुक्के मार मार के मार रहे बहन के लौड़े ये। मार ले मार ले मार ले। करवाया कंट्रोलर लेके। I accept the challenge. शील्ड क्या ऐसे? Find your marks, ladies. I'm about to start some fun. Today's a good day to cheat day. Introducing your champion. बंदा बचना नहीं चाहिए। गब्बू ले जाएगा, गब्बू ये बाज प्रोफेशनल बाज। I'm the jump master. I won't let you down, except by falling. डायमंड क्या देख? 20 है ना, डुओ होगा एक कोई 17 है। एक तो डुओ है पक्का। 11 अभी भी। अब नेक्स्ट Here we go. अबे अभी भी नहीं था, अभी भी था। 8 हुए थे ना। पूरा तो लोग दिख रहा है दूर एकदम। बोलो पूरा, मैं क्या बोलूँ फिर? अरे इसकी गिनती खराब है, इसने 8 सुन के कुदा दिया लेकिन New kill leader. Not for long, pal. लैग क्यों हो रहा है ये? कौन सा सर्वर है बे? मेरा भी हो रहा है कल शेडर में, पता नहीं क्या। 1 minute before the ring closes. We have time. लॉस आ ही रहे हैं। वहाँ पे ही तो कूदे थे बहुत नीचे। Prowler SMG here. I'm hit. Rápido. Charging on my shield. End of sentence. Yeah, right. Enemy spotted. Using my Phoenix kit. I got some bad guys here. क्रैक है वो, क्रैक है वो। एक क्लोज है। ग्राउंड पर पुशिंग। अबे मेरे को पीछे से भी पड़ गया। ऊपर चले जाओ ना, मैं ऊपर चला हूँ। अरे नहीं, यहाँ से 2 आ रहे थे, उन्होंने दिया मेरे को। इसने ग्राउंड फ्लोर खोला, मैं इसको हेल्प करने ऊपर आ रही है। इधर को आ जा, इधर को आ जा। A champion just fell. They must not be very good. Repairing. Guts, our squaddy's got smoked. आजा वापस आजा। सपोर्ट नहीं ले पाएंगे बैनर। बनाने का बैनर। Recharging shields. नहीं करते। Open a fire. Give us taken damage.
नॉक है। आ रहा हूँ जा रहा हूँ। दो मार रहे हैं वैसे यहाँ से। बोलना क्लोज आ गया। पुश हो रहा है। जी भाई हमारा बाज ही चूतिया है। तेरा काम है खुदाना जब हम बोलें तब, अपनी मर्जी से नहीं खुदाएगा। तो साले तुम ही खुदाओ ना फिर। अरे पीछा करने के लिए ठीक है तू। नहीं नहीं मैंने खुदाऊंगा। मैच देख रहा हूँ मैं साइड मैच। अब बकचोदी मत कर मेरे साथ। जब हम बोलेंगे जंप तो तू जंप। नो तुम ही खुदाओ। तो सिंपल आ रहे हैं। Loyal to the soil, blood to the bone. Ready to go. This is your champion. लास्ट वाली टीम पे चलेंगे आराम से करना ताकि 5 बनेंगे। अरे बस लास्ट टीम कूदती है। ठीक है वैसे ही Back there, scoundrel. I love this part. पीछे लगा वो राइट में देख वहां। Take a beeline there, cousins. अबे मेरे में क्यों नहीं दिख रहे थे ये गायब कैसे हुए? Got our first worm food, compadres. आगे ले रहा हूँ। अगर राइट से Go in there. लास्ट मोमेंट बताया तूने सारे पे। देखो आया ना वहाँ पे 2 बंदे उतरे हैं। It's go time. ये गन ले लो यहाँ पे। Round 1. Beginning game countdown. Optics here. Sniper. Frag grenade here. 1 minute before the ring closes. We have time. Champion started. Enjoy being shot at. पीछे जा। पीछे हो गया मैं। मेरे पीछे आ रहा है। साइड पे। मैं हूँ तेरे साथ। कैसा तेरे नीचे क्या? रुक जा। आगे। पीछे जा। तो मारो। अरे भाई लॉस आ रहा है बे। अरे तोड़े क्या साले तेरे पास? हम ओपन से आए, वो लेफ्ट राइट तीनों तरफ से आ रहे थे तेरे ऊपर। हाँ तो मैं तो आ गया था, बच भी गया था। हाँ हम ओपन में फंस गया ना मैं तो। तो पहले वो बदलो पहले लॉबी साला बहुत आ रहा है। मेरी लॉबी में आ जा। रहने दे और लीव मत करो। लॉबी मेरी हो गई बहन के लौड़ो। किसकी लॉबी में आओ? मेरी। केबी की लॉबी। मैच देख ले क्या? थोड़ी देर स्टार्ट होने वाला है। अबे मैं तो मैच ही देख रहा हूँ बे। मैच ही देखने का मन है मेरा भी। मैं खाना खा लेता हूँ तब तक। मैच ही देखेंगे भाई, अब हो गया। नहीं बोरिंग के बाद मैच खत्म कर देंगे। नहीं मैं तो भाई मैच देख रहा हूँ, हो गया मेरा। खाना खा के आता हूँ मैं, खाना लेके आता हूँ।
No idea if people are going to play to expectations. He has already gotten down alt mid, so Shuhei doesn't have to be concerned about T-ramp. I mean, this is all of G2 in the meat grinder at the moment, but it also comes down to hitting shots. Yimfat, there's a nice double. Clean to kick it off. Shuhei is single as the G2 camp turn around knowing that, yeah, that B hit's not allowed to move forward. Oh yeah, they just had their guts ripped out from behind them. That's it. 40 seconds, and now they've got to think, do we go back to the A side? Do we continue forward? And it's actually a vacated B site, yeah. Completely empty. They don't believe it. They'll throw Xerxin back at this. But me oh my, that may be the bomb cross. If the flash is good, if they can get that one player off deep CT, or maybe it's just a complete concession of the bomb site. Regardless, G2 again kind of taking their time, right? MeGuSSa didn't just sit back or stutter. They threw it down middle, they flanked, and they took the life out of G2's pistol. I mean, not much life in this one at all. HooXi, hold on! He has time! Hold your horses! HooXi, how dare you? Not only the bomb plant, but 2 kills in already, and a cross back to Coffins. Home turf, 3 kills, 6 HP, but wiggle all you want. He's got them on the hook. See, he's already moved back around, and through the cross, they just can't catch him. They're stuck, they're sinking, and HooXi runs this around. Now time is ticking, and there's no kid on these CTs. Jimfat's hands busy, bomb is planted on the fountain, and he has to stick this. HooXi's gonna double back, he's tapping, he's missing, and just by the skin of their teeth, they denied greatness in the Royal Oh Arena. my God, he played it right all the way to the very end. Just needed to land a bullet. There is no way we watched him do the pendulum strat right around. That's right. HooXi conjured up some special powers to make that possible. And he had mouth shook for a second. And in his heart, I'm sure he believed he had it. That was very close. Man, as if that's the first round of this matchup. Woo. Oh, man, the fact that he walks back to out of con, and if he had run at all, he would have been covered perfectly. Yep. He really played the time to perfection right there. But this is a point-and-click adventure. You got to hit your shots at the end of the day. Talk about a way to get the blood pumping on the G2 camp, though. HooXi's going to make them believe in an instant. And I mean, nobody's doubting the individual levels that they can bring forward, but how many times are we going to talk about G2 as ifs, buts, or maybes? Yeah, I mean, KB bot, KB ka trash, let's go, let's go, Gareth, let's go. On the stage, but when we talk about G2 at majors specifically, they have basically the same experience as MeGuSSa in the last few years. And that's sort of a weird thing to think about when you think about the brands in playoffs. Think about FaZe, Vitality, Na'Vi, who, you know, just won their game. There's a lot of brand value right here, but at the moment, G2 have tons of proving to do. And if you're inside the minds of them right now, they would be thinking, this quarter means so much to us, because the last time we were in playoffs, we made it to the finals, obviously, at Stockholm. But that's basically a decade ago in Counter-Strike years. G2, oh sorry, mouse. You know, there's this tale of MeGuSSa getting onto the playoff stage and then crumbling, not being able to live up to the expectations, not being able to take the torch out of the hands of the players who came before them. 4 of the last 5 times they're in playoffs, though, they get cut down by FaZe specifically. And to me, that is somebody like Shuhei, who we say fuels the potential of his young teammates, who brings them into their best, looking into the eyes of his idol and biggest inspiration, and coming up short. How can you look into Kerrigan's glare and walk away? It feels as though it turns him into stone every time. Think about top 8 at Paris, the last major that we saw at the end of CSGO. How impressive is it that someone like Shuhei in CSGO could make it to a major grand final at the tail end when everybody's supposed to be in peak form in the most competitive part at the end of the game. Shuhei was the one to go head-to-head with Apex. And even though he failed there, that must have garnered him so much belief. When we talk about next generation IGLs, he's not just the one. It sometimes feels like he's the one and only. But off of that pistol, which showed no hesitation out of MeGuSSa, don't forget about how quick that mid push was. Don't forget about how fast he, in fact, got into the flank. G2 thought there was going to be an element of respect or a little time given over. Wrong.
Mouse have been waiting a long time to get onto this stage and to start ripping heads off. 3-0, fastest route into playoffs. That's a long time to sit back and wait. A conversion queued up here. MeGuSSa playing that solo AK. And that's the thing with G2. Ooh, nay. Hey, that's a gift. That's a gift right there from Exertion. Still they go for brackets, and with that, we end up getting the second. MeGuSSa's AK activates. And it's an instant wake-up call here. Jimpath spotted. Bullets whiz by. Gets himself the first, but the gun's already near empty, so sight falls to the T's. And Brolin comes out with that MP9. A quick reality check from G2 off the pistol. Let's go, G2, let's go. Reality hits him in the face. That's a G2 contact explode off mid. But the bow on it is the gift from Exertion on the push through the smoke. His own smoke in a 5v5 situation after winning the pistol, after having money. It's good to see Mouse not playing scared, but at the same time, it's always fine until they lose. And you can say that about anything. You pull it off, and you have the swagger to run through your own smokes and go for early flanks, and you get away with it because your game plan is that sick, then it looks like genius, not madness. But in that situation, we got to give some credit here to G2. They capitalized, they punished, and we have to see what their game plan looks like because we know what they can do on Inferno. I like the fact that not only do you catch the banana flank, which obviously suddenly makes Mouse worry about the opposite side of the map, they still just went for brackets. You know, that's a success story for G2 off the back of not only a Mouse decision that gets punished, but straight into their own game. Everybody just put forward a frag on this one. G2, not going to stop now, right? That near clutch from HooXi in the pistol. I know it invigorates the G2 camp. I know they want to prove the entire world wrong. Yeah. I mean, they don't want to. They can open the floodgates here on T side to a team like G2 who thrive on T side. Beginning of 2023, it was massive stats that we had never seen before on Inferno, with HooXi calling some great openers, and their contact explodes. They have the right players for it. भाई कितना pause When we लेंगे? talk about Nico throughout history on Inferno, we talk about a guy who will go to the top of Banana and peek by himself and play like an Tag है या फिर वो है? It's Technical a level of power technical है almost ना? no one has. You know what I mean? Literally, Donk is somebody who First round के बाद भी हुआ था, second round के बाद भी is हुआ. one of the only examples of someone who could go head-to-head with oppers consistently, have the go-ahead from their IGL, and still actually win you the round instead of looking sort of like they're taking too many risks. You know, we can talk about Nico on Inferno throughout his career as maybe somebody who hits the impact, but how about we talk about Nico as somebody at majors who doesn't quite live up to that expectation, right? What is it about these stages? What is it about these crowds that have somehow stopped Nico from thriving as he should? Well, I think that game yesterday versus Spirit was the perfect example. When they played against FaZe, क्या? अरे गब्बू मैं पूछ रहा था आपको G2 पसंद है क्या? Yes. मैं आपको G2 का थोड़ा अभी बैंगलोर आऊंगा तो आपके लिए ले आऊंगा मैच पड़ा है Nice. Thank you. Massively went all the way up through the play-in. मैं वो Just as स्टॉकहोम वाले long मेरे and से लाया था arduous a जिसमें journey सब as a कुछ- major itself, but it doesn't match the pressure of a major itself. And what we saw on Vertigo was them killing themselves. नहीं यार You know, मैं तब भी Donk was देखने the नहीं गया था I only was a one with an above journalist 1.0 rating in that मैंने matchup, CS को journalist which I will say shows that he is the talisman of the team and somebody that we will be talking about for a long time. That sort of made it feel like it was Nico in 2018 carrying FaZe through the worst tournaments of their lives. You almost wanted to see that for him specifically, but we saw there also that Spirit crumbled because it's a major and for no other reason. Because if you watch Kato, you would have no reason to believe the next tournament coming up, they would show nerves. Of course. I think there's almost this twisted fate within that last map as well, where you get Zontix, who back in Katowice was the guy who said, "It's just another game, pressure doesn't get to us." And yet he was literally head in hand as those rounds started to crumble, as he himself in the clutch couldn't put up as he usually does. You know, a real testament. Every player thinks that it's not them who will crack under pressure. You know, there are interviews and what people say, but that's what's so great about watching CS live, because it doesn't matter what you say. It's what we see that shows everything. And when Zontix was going through, clearing those angles slowly, taking 20 seconds to go through, and looking stone cold on camera, but not actually doing anything in those retakes, you knew that the pressure was on. And it ate them alive. Yo, Copenhagen, you ready to get back in game? Yeah. 8 teams walk into the Royal Arena this weekend. By the end of this match, only 4 remain.
gets bigger and more badass as this event goes on. We aren't even on the weekend yet. Some losers still at work. That is all you who called off. Rolling. Not bad with the 5-7, but of course, working with far less than what G2 were able to use in the round prior. No way, we're not going to do this, are we? Oh, let's go back and forth one more time. Oh, love that wall bang. Then you've got the player in the corner. Jimpat pulled off the balcony. Nice clear. Coming out of Nico and MeGuSSa. And with it, we've got 3 left. We've got Xerxin coming back out of a smoke as he did back in round 2, which cost him. But with hands on Galil, he will depart, and it is G2 to take early momentum. Yeah, and that's MeGuSSa to save them. MeGuSSa is the kid right now. Even in the worst moments when they don't qualify to majors, when we see him at the RMR, when it's, you know, a Rio disaster, it's never MeGuSSa that's the issue. No, MeGuSSa is the one that they're trying to hoist up on their shoulders so that you can display him on the stage for everyone to see at the biggest, most international and prestigious tournament of the year. MeGuSSa is the one who keeps on delivering, who Nico is saying is going to pass him if he hasn't already. And in CS2 is primed for the perfect explosion. The amount of talent that he's shown. And his willingness to learn and innovate quickly all the time. You can buy a hell of a lot with $600,000. G2 got MeGuSSa. Yeah, that's true. There's no arguing that he hasn't put up his end of the bargain. Yeah, and again, the only reason we see G2 with MeGuSSa is because Simple was playing on Navi and MeGuSSa wasn't going to get the call up and they wanted to make some money. G2 secured a talent that can give them years, that can attract new players to join their team in the future. Yeah, look at Shiro going into Spirit. Don't waste his career. Safe to say they are trying their hardest. At the start of map 1 in this quarterfinal, G2, they've got our attention. Very little to work with here, Maus, so it's going to have to be Shuhei to get tricky. And if we want to talk about price tags, how well have Maus done for themselves when it comes to making a team that can get into situations like this by spending far less? Oh, Xerxin, not going to get away with it. Hunter, nice eyes back into balcony. That was the one moving piece. There's 2 more CTs to pick up his gun. Yeah, that's one good gun down. They're probably worried about some more, and it gets recycled, but then it gets dropped again. Quick one for Nexa, 2 up in the B site, now 1. There's that molly. It's at least going to cause them to stall. It's just they know when to call through bluffs. Like, that's definitely the best part about G2 is Inferno can be one of the scariest maps because you see the center of the mini-map. It's like there's nothing there. You're going either B through one route and can run into a lot of close-up pistols, Zeus here and there, or you can go top mid and get crushed by a setup that you can only really figure out if you actually look, which means you are at risk of dying. But one thing that G2 are always very good at doing is not being afraid of when they're in low numbers anti-eco situations. On T side, being able to have pristine crosshair placement, and I mean that. You know, when I talk about people like Nico and MeGuSSa and Hunter, when you got them entering, they could kill 6-7 guys, okay, if they only had pistols. So they're consistently good at winning low number situations on this map. Such a top-heavy team. Back during the heyday of G2's Inferno 2, right? Off the back of T-sides, if I'm not mistaken. This aggressive stance that MeGuSSa clearly wants a piece of. Making a name for himself inside of the B site right now, but look at it. There's not much behind it. Bomb gets picked up, no rotation. G2 off of the bat of who other? BENQ. The captain here of G2 on the stage, leading from the front, great entries. And this is another special of Inferno. You get those 2 kills, there's no hiding it. There's no tricking you anymore from the CTs. There's no like 3-mile away flash that you can send into the site to make them feel like you've actually got more people there. You know when you kill those 2 players what the whole setup is. क्या? ये पिक किसका है मैप? ये तो सॉरी G2 का है. उन्होंने क्या करा? उन्होंने किया G2 ने इन्फर्नो ओवरपास किया लास्ट बीच में वर्टिगो हाँ माउस ने वर्टिगो पिक किया अच्छा भी तो है the big brains in Kerrigan and HooXi. Look at Kerrigan's performance last night, map 3 versus Spirit. Fantastic stuff. And to kick off this one, HooXi's right there. Another couple kills on the scoreboard. This guy is 9-2, seizing the day, and this golden opportunity
to hit back another young batch of upcoming players. Well, we saw Roseman Concrete on the pistol rounds, but now it's fully blossoming here. There's HooXi showing us that his aim is on point. And when we talk about them being a top-heavy team, well, if you get the rare HooXi carry on top of that, that can be enough to break your backs. Big smile on his face. When tack pause in for MeGuSSa, and that's a well-placed tack pause, I think. You do need to talk about things right now. They just lost to a MAC-10 entry at the top of B with minimal support. I mean, HooXi was looking for one frag to set the map up to destabilize the CT side, so there's 4 players on each side. And then his team is still happy. They can make do with that space. 4v4, that's where the CTs lose all their advantages. So that's where the rotations get even harder. And yet he went and got 2. So now they've got a problem of, we know what they're going to try to do, but now they've got X Factor in the name of HooXi somehow. It's a rocky start for MeGuSSa as well. Weird for Shuhei to try to get his finger on the pulse. We go from winning pistol and a zany HooXi attempt into pause, extended time to stew in it. Now you've lost the force buy, then G2 convert. So nice to see a timeout used early. This is a chance for Shuhei to get into it. You'd be foolish to write him off as a caller, despite his age. 3rd youngest average age at the major is MeGuSSa. Yeah, no doubt about it. We've been casting him all the way since the WePlay days. We knew it was only a matter of time, and it can be hard to predict, you know, a player's career. But when it was MeGuSSa NXT to MeGuSSa directly, you knew he was in safe hands. You know, the org was going to take care of him. They did a great job with their academy lineup of helping their talent prosper. Well, what do we have here? 3-player B setup. T-Smoke over top, and guess what? Can we get much higher? A little vision for Brolin. The Swede atop his tower, but no action behind that. So instead, it's going to fall in the apartment's control. G2 soon to find out that this A site is prime for the taking. Once again, they don't fall for it. Yeah. It was all a ruse. And that's the thing about Inferno, is that you're constantly prodding to get a response. And if you get the incorrect response and you have a read, the other team can't even figure out how you got it. But whether or not you make noise back can be used against you. Sure. So that's the hard part. That's what G2 are so good at figuring out compared to almost every team on this map. Without They errors. avoid danger again. G2, 5-1 up. If I've learned anything, it's never get your hopes up as a G2 fan. But if we extend that olive branch to FaZe and Kerrigan and their ability to step up when it matters, come on now. G2 get that same extension. So 4 players up as well on the conversion. They don't step into that B pocket. And right now, you know, MeGuSSa, I tried to give him praise for coming into the pistol with the aggression, for taking it to G2, for playing with a brave heart. Yeah. Starting to shell up. Yes. No riskiness in that last one. Ooh, you've assembled a boost, but there's no proactivity. There's no moves out of Jimmy inside of the apartments except for this late little boiler peak. You're not going to stop G2 with small antics like that. Yeah, they'll have to have an overflow of tactics. That'll partially be on Shuhei to have the game plan where they know when to activate, when to do things. And then the other half of that is he's not going to micromanage you. He knows what you're capable of, and he expects you to operate because he also will frag. Yes, sir. So, back in with guns. Let's see if MeGuSSa can do much about it. Again, this pressure is immense inside of Banana. Xerxes brought out. Getting hot. HooXi cannot be stopped on this half of the map. Torshi up in apartments will respond. MeGuSSa need to stop the bleeding. And so getting active like that is the chance. And they know, you know, 4v4 in this situation, again, this is where the T's grow in power. Smoke again, this time no boost. Shuhei tries to stop it, but the flash finds him. Oh, this utility at the B site is perfection from G2. Brolin is between both halves of the hit. Nico's come around, spamming the smoke. Now Brolin knows about it, but down inside of pit, he'll hold his own. Bullets whizzing by, no teammate in sight. That's why Nico's able to thrive, getting his kill. Torzi dropping the shot on cross, allows for bomb to get planted, and now it's all on Jimmy. Slowly on the flank, caught out by the Opper. And just like that, it's G2 again. Yeah, in a flash. The round is over. Torji left alive to go and save because there's no way back into this. They had to wait their own smoke out at Coffin to allow Nico to scour the site, and Brolin nearly
was able to squeeze water from stone, dropping in, getting out of the back of the site, giving him a chance to fight versus the top of Banana, but they were patient, and they had numbers, and they had control. What about that utility? What was that, triple, quadruple molly inside of Banana? There's also a massive call-out, team by team. You're not going to run through that CT smoke, right? We might in our favorite pugs, you know, when we're really feeling it. But in this situation, if you know counter utilities coming out on certain kinds of execs, you're going to go ahead and punish that. And that was the freest kill that Nico could have had in that spot. Game plan looks good. IGL's fragging. MeGuSSa's not missing. Torzy did. क्या करके बैठे हो? बाहर के बिठाया किसी ने बैठ के बैठे हुए भाई मस्त मैच चल रहा है. But instead it is an empty-handed offer from the CT spawn. MeGuSSa ain't gonna miss. He's got even more to give. कैसे गंदे लोग हैं भाई तुम्हारे साथ क्या लाइक वाइक भी नहीं करते आके भाई सपोर्टिव भी नहीं है बैन के लंड है भाई very banned के लंड. Nico just popping open bottom mid to make sure that there is no aggression behind that, right? Xerxon loves a smoke push. It's not a far-fetched idea that MOUZ may try to throw a wrench in the works with aggression, but as this scoreline starts to pick up, as this 5-round lead solidifies, will MOUZ become a shell of themselves? Torzy on the ankle, given another chance, but flashed off, and the utility continues to be consistent here from G2's pressure. Again, smoke over top, but no follow-up just yet. Control your shots. You know, you've got to make sure that everything you do is going to elicit a reaction. When he fell back, they didn't know he was there. Now they do. Now they do. Cheeky. And they avoid it. ये बहनचोद मुर्गी. Shuhei plays anti-flash, Yimfat with eyes on both Balk and short side. Oh, interesting. They're going to crawl this one back towards B. This turns into a lurk, actually. Torzy in the open, smoke goes up. Nico was back there. A matter of milliseconds to keep his vision. And now we've got the exec queued up yet again. One molly. That's it. One molly over top, 2 defenders in the site. We've got Torzy and Brolin trying to post MOUZ's second. Pressure is on. Vision is gone. Through the smoke, he'll hit it. A sweet taste of revenge here from Torzy. Missed shot from the anchor though. And so with that door open, wide open for the bomb plant, and op spam through smoke slightly off the mark. It's a retake demanded of MOUZ if they want to chance it for their second. But we're talking about a team coming in with almost nothing. Oh, they're coming in dry into MeGuSSa's scope. And he goes hunting deeper into CT. MeGuSSa! God damn! 3 kills deep. And he gives a lifeline to MOUZ, missing 1 shot in the magazine so that they can leave with tail tucked between their tails. This MOUZ, oh my. That was just a bonus, right? He got the 2 kills, and then he got the push in through CT because they had no utility left. It was a call out. No way for them to retake. They showed up to the party, but they weren't dressed properly to get in. There was no chance there for MOUZ after their A players had used up everything that they had before the exec even happened. So what happened right there? Torzy hits a great shot, pushing through the smoke. Brolin's left alone. But even though they don't molly Brolin out in emo, they molly out the other position he would be in. So the only thing they have to focus on is emo. Brolin's got to hit 2 very key shots in a row, and he messes up his spray. Torzy gets 1, but Torzy can't stay in the site in front of the coffin smoke. So they traded a frag for positional dominance. 4v1 in the site. Obviously a good trade. When we watched MOUZ play against Complexity, that was Complexity crumbled. We weren't even on stage at that point, but they were definitely feeling the pressure being in a 2-0 matchup. And MOUZ and Torzy were able to destroy. ये T-slope वाला smoke आता है कब हुआ So many mistakes. Game plan looked exceptional. मेरे को मिड आता है ये हाँ ये आता है but मुझे दूसरी जगह एक T-slope drops वाला है ना T-slope का वो जरूरत नहीं but ये वाला ज़्यादा better है कि आप molly कर सकते हो T-slope पर. But they were only best of ones. Really haven't had any forward aggression from MOUZ down Banana either. Not once have we seen a sightline taken down towards logs. Through wala angle. But at the same time, finally, MOUZ afforded a little space here. The threat of a peek from top Banana is real. Hooksy's almost dead.
great grenade damage and a little pressure behind it. The chase is on. And into Torsi scope go to. Welcome to the server. भाई इनके ऑप इतनी impactful है भाई मैं Finally, the best position Maus have had since they picked up पिंग भी ऐसे होता है नहीं पिंग तो 0 होता है मतलब बेसिकली सबका 5 होगा तो सबका 5 होगा ऐसा होता है हाँ तो वही है ना तो वही तो फायदा है इनका ये पूरा सेटअप मैंने देखा है लैंड पे पीजीएल का मतलब इनसे बेटर वैसे ईएसएल का होता है क्योंकि ईएसएल का मान लो अगर कोई होटल से भी खेल रहा है ना कोविड के टाइम के बात बता रहा हूँ तो उनका भी पिंग सेम रहता था होटल से भी पूरा लैंड पे रहता था No secret to both squads, but between two of them last time they got 1 kill. Okay. 3 players coming in. One won't be enough. It's Brolin and Zershin this time. No op in the equation. Zershin toying with the smoke. And Brolin wants to pop this open. Timing to 18. Sees the back. Scam है भाई ये पता है need. Oddly doesn't get the kill. Hunter just making it away here. 10 seconds is a great chance for Zershin to pressure through. Trying to come over top of the coffin, but there it is. Shuhei picking it up. And finally, a round that Maus can be proud of. Finally, they're able to lock down a B site and show us a little bit of life. And they can take a little sweat off their forehead now because they survived a situation that shouldn't have been precarious, but could have been. Reasonably. No kill at first, but they kept those smokes open, which was huge. And that's a great way to start a retake, even before the bomb has even been planted yet. MeGuSSa had no way to safely put it down, even on the opposite side of an impenetrable fountain, and Maus will pick up their second round. Buy-in again here, obviously, for G2, who have more cash than God. Maus will have to show up a little bit more if they want our respect, says HooXi. All right. HooXi taking it up to himself to get aggressive. Shuhei may not be ready, and he's not able to respond either. Nice aggression from HooXi to set up the trade frag. That could have been a one and done. How aware are they of the entire court with that? Nico, nasty, hiding behind it. And taking the edge back into G2's hand. The money here for Maus could get shattered. तूने किस पे कर रखा है कृष्णा? Really, really good positions, not overplaying. Pick him. But again, they get away, and again, they will set their eyes मेरा तो on pick the him B site. spirit ने शूट दिया हार गए. All right. Through the edge of the smoke, he'll reopen it. As much as I love face, but pick him गया मेरा. I had spirit winning मतलब पूरा tournament. Bomb plant here on site. Eats the flashbang. Can't move through. It's MeGuSSa Flash plus his first kill. पर अभी तक मेरा spirit को छोड़ के बाकी सब सही थे. Vitality और वो. Clutch out from Banana, dives back around it. CT soon to be challenged, and he knows the numbers is on site. He hits that. 2 health for Brolin. Hang on, Maus will convert it, because if not, we are talking shattered economy and shattered hopes of making anything of this CT side. It's still expensive. It could have come down to 1 kill. MeGuSSa nearly had the chance. कर सकती है, choke करती है बहुत. It was nice. A very nice attempt. And he does the most in that round. Again, denying the push through on coffins by flashing before he goes to check Banana. This is actually because people are flashing through the CT smoke. भूकंप फाकी करने के लिए बंद कर रहे हो क्या बार-बार? And it's a wall bang to save Brolin, who stays alive, gets a couple of kills here. Looks nice. And even though it's scary, Brolin sitting on coffins, you know, finding a last bullet spray, that's what it is on Banana. Okay, versus a perfect execute, you're going to have 5 frames to get that kill. He finds it. Good boy, body shot, got a little pizzazz from some of the players. Corsi takes damage. I think in his mind, lucky to be alive. Yeah. Missed his, got hit, still stands with a chance as the pressure on Banana comes again. But it's just this constant smoke at the top of it that really keeps Maus questioning what lies behind it. They give away control, look what happens. Nico sneaks up, just plays behind box. Now we've got a fight inside the apps, and it goes back and forth. Still, damage done, Hunter low, Corsi sidearm to get the second. Now he's starting to turn it up. That's what they need. Shuhei trying to get away with something here. His counterpart, HooXi, right on the other side. Exertion gets battered a bit through the smoke over on the B site. And again, top car here, 1 for G2 as they sit and wait. Surely, Shuhei gets his. Oh, okay, gets a little sketchy. Running out of bullets, 1 shot left. Ooh, he's gonna make sure that he goes down. But has he done enough damage to get it over the line? We've got an up duel with the shadow advantage. Easy one for Torsi. Nico, who just applied pressure towards B and top Banana, he's the reason Zershin's low.
He can be the best at the beginning of the round, sometimes even better at the end. Oh, that's what he started. Cleans up the little that was left of Xerxan. There's a question as to whether Brolin gets the timing. Sure enough, and a resurgence out of Mouse. Yeah, and that's impact on both sides now from Brolin. On the holds, on the retakes. Denying the clutch here from Nico. And a good setup here for G2. Set up the Opper and Torji to do the brunt of the work. That's the big play here. Taking next out of Halls. The refrag on the Astralis setup for them at the end of Halls. Into killing MeGuSSa after getting tagged earlier. But Mouse are looking for scraps now at the end of the half. It's already been very successful here for G2. This round decides if it's a disaster or just a mishap here. Chalk it up to missing out on the conversion off pistol and try to take your T side to it. Nico in between the fire. How does he have that? No damage from the flames. Nico easily sees through them. Prescient knowing that he gets 2 kills in that spot. Ooh, a flick attempt over. Shuhei's gonna clean up Hooksy. But he takes damage back in return, and Nico was afforded this deep position because of his aggression. But they have to try the retake. They need to gun for this. And caught through the smoke is another member of Mouse. 2v4 demanded of the young guns. That's a show of weakness. यार CS2 में मैं गली राइट वाला हमें चेक करता CS2 करता ही नहीं पता नहीं क्यों No chance. Nico goes above and beyond. 3 kills in the 12th round of the half. Swapping to the off. Turns out Nico can do it. The opener, the closer, and the upper. Nico. Tip of the hat for that play. And that's what makes this a disaster in the first half. The opening here on Inferno. हाँ तुम्हें अगर तुम यूटिल आते हो तो तुम बहुत स्पैम कर सकते हो। ये वाइटलिटी का सपोर्टर है हर मेजर में आता है। Disastrous to start, absolutely. They knew that this map was coming. That इसका मुंह कैसा है बे? क्या सोएगा? सोए जैसा ही मुंह है उसका? And the preparation went both ways. Of course it would. This last round, right? Feels like G2 were just the kings of the Molotovs in Banana, whether that was killing Xerxan with never seeing him, or in this case, मतलब चल रहा है pocket. Yeah, boy. But you gotta love what you see from Torji right now. You gotta love that Mouse win rounds at the end of the half to come back into it. Surely. Far be it for me to say that this is somehow over. Mouse have to believe that anything is possible. They've got nothing else to do tonight. Why not try this T-side comeback? Straight into the fight top mid. Ooh, Hunter. Nice peek out, dodging damage and just clipping Brolin. Should see more. Deal with Shuhei too. So sure enough, Mao's getting picked apart. Pit player takes the gush. Hunter, it's a triple kill. Oh man, still fighting, but the fourth is too much to topple. Torji answers with a double. They've got 2 CTs on the other side. Mao's need this pistol. Having won the first and being unable to convert it. But Torji's not going to cover that bomb plant. Instead, he is looking for a fight. He is the hottest piece of Mao's at the moment. An ugly duel inside of the bomb site. Get queued up from the back of the bomb, and down he goes at the hands of Nico. G2 playing playoffs quality Counter-Strike. That's right, playoffs quality भाई Counter-Strike. कुर्सी कितनी प्यारी लग रही है सीक्रेट लैब की 9 here, and you know महंगे भी होती है भाई। Mouse told themselves the same thing that you said, Connor, that they ऐसे need बेटा that साइबर pistol. लो guys. We are also sponsored by Cybart. This might be a bridge too far for Mouse here on map 1. It will take everything and more to sustain, but we are not. उनको तो साले वहीं पे मिलता स्टेडियम में मिलता। You know, you are स्टेडियम में सब मिलता है भाई वहाँ पे। the quality that we saw out of इतनी महंगी भी नहीं होती है। since joining this team within the last 6 months. It's unreal. You know, in a story of unbelievable rookies, he might fall to the wayside because he doesn't get #1 in the year, because MeGuSSa has a G2, but him coming into G2, or in excuse me, needs to be studied. In that Pro League earlier this year. Roland's head and they'll take it. Absolute aggression from G2 out of Banana. They will give them no chance to spike this force buy. उसी की तरह ले रहे थे। अरे बनाना बहुत टफ हो गया स्टार्टिंग में लेना। तुम 2 मॉली करो तुम। सिटी ले सकते हैं ना। हाँ। सिटी में जाए नहीं मैं। ले लिया था फेल्ड अटेम्प्ट के बाद। We need a world-class entries out of the remnants of Mouse. And they are
They've got a stake to chew on. 4 players. 11-4 हो गया. नहीं बैन तो इनका भी बाय है, इनका खींच लेंगे. Take over brackets at least. Zershin scouring over towards the grave stairs. Now that util comes out. Nexa back turn. Easy pickup. Okay. A second one to boot. Now the peek on sight falls to Shuhei. A single kill back from the Tech 9, but you'd think easy cleanup. Fast on the flank already. It is Torji alone, as he has been all map long. They're coming out of Brought down. G2 will not leave this to chance. G2 will give you no room to work. That's not even beating out the MP9s. They're coming in on the flank, coming out of every choke point, yeah. And MeGuSSa fans rejoice at a chance to cast and watch him in playoffs. हो गया भाई, हो गया काम, हो लिया इसका. अगला वर्टिकल फिर ओवर We पास. mentioned Hunter one time, you know, in this pistol round. And that was it's still been a good day for Hunter. रिवर्स स्वीप हो जाएगा G2 को, मुझे ऐसा लग रहा है, फीलिंग आ रही है. But getting a pistol play like that out of him, you take but it. how many more levels do G2 have right now? Thank goodness for him as well, right? Because we were starting to have a real conversation about the Hunter drop-off in CS2. Hell, the Kovac drop-off was real. Nico's been getting it back. Hunter as well at the start of this event started to put his name up there, alongside Nexa even. Perfectly timed peek off. Boiler's gonna make sure that nothing falls into the hands of Mouse. G2 look to stun here in quarterfinals. MeGuSSa the tip of the spear on this round. 11 rounds for G2. Mouse thought this would be a walk in the park. Yeah, I mean, many of us obviously watching this had high expectations, and I'm sure they did themselves. They were going to have to be tested at one point. And you gotta be honest, of all the quarters that they could have gotten, there maybe would have been harder ones. Ones with even more expectations. It feels wrong to call this the easy side of the bracket when it's the most stacked bracket that we've seen in so long. But the fact is, if Mouse could have handpicked a quarter, this would have been among the top. You know, there was this conversation about the new Counter-Strike ushering in a generation of players, while some of our older folk were sent to the retirement home. Spirit hyped, Mouse dropped them, one of the oldest teams at the event. Same thing here, right? The question of whether the new blood comes in quick at the first CS2 major or whether experience reigns supreme. And on Inferno at the very least, clearly G2 have stepped it up a notch. Off the pause, Mouse, your chances are running thin. ये अभी लोग कंट्रोल ले रहे हैं लोग. अभी लोग कंट्रोल ले रहे हैं. Try to get something going. बट अगर ये पीछे जाना चाहेंगे तो फिर हमें दोबारा रीटेक करना पड़ेगा. उसके लिए यूटिल नहीं बचे हैं. या तो हिट के लिए बचे हैं तो वो रीटेक करने के लिए बचे हैं. और वो लोग भी तो दे नहीं रहे. कितना कैसे मॉल डाल रहे हैं. चले गए पीछे चले जाएंगे. His support system gets taken down. Now defense can walk away here. Still working with the lesser weapons. एडवांटेज भी एस्टैब्लिश हो गई. They'll smoke off from Banana. They'll take their 5v4. देख वापस चले गए वो. अभी थोड़ी देर में कोई कुछ भी कर देगा no उसमें. refrag, maintain map control, abstain from another fight, pull back a little bit. Forces G2 to show us what's next. They have to come forward. Where will they do that? They just don't look quite as threatening. Rotation's a little bit more active here for G2. स्टैक कर रहे हैं. For Mels in that first half, they got calcified quickly. Getting ahead of the hit though. उनका MeGuSSa executive setting भी up आ गया. teammates. Nico low. Can he do it? Can that MP9 come flying out of CT? Will Mouse have anything to be proud of as they walk away from map 1? Brolin, it's an entry. It's a flash out and a double. HooXi's MP9 knows no bounds. रीटेक हो जाएगा ये He has तो. been the kingpin of this B site across both halves. And MeGuSSa maintains a little control on back coffins. Yimpat may have to go fishing. Unless ये लोग पेल ले They रहे try to whittle down numbers before this inevitable retake comes through, playing to secure the 12. Setting up Torji. Molly missed. Right now he can hold on to his position. The flash will find him. That'll turn his head away. Nades start to rain in. Bomb beyond the halfway point. Yimpat looking to hold back. He's going to have to get both. There's the first. And as he gets into the cover of the coffins, back around the cover he shall go. CT inside shoots off, but just can't hit him. The Fit keeps it cool. Oh, nice shot, yeah. Mouse's
5th, but it's a long road to 11. It is, but that's a good Jimpaat. early sign here. 11वीं कक्षा में लगता है मुझ पे getting का a शॉट clutch. कैसे मार रहा है. That's why they signed him to this roster. That's where it can begin. You know, we talk about the Kovac because there's two of them side by side on the stage in front of you right now. Jimmy Salo, not the first Salo to turn heads in the major playoffs. His brother, Sergey, led by Alexei and Ens back in Kato of 2019. Another young player from Finland that had us shocked. Yeah, and he was the star of that team. He was the star of that team back then as well. Into what some could argue is an anticlimactic walk away from Counter-Strike. Jimmy, his brother in blood, looks to pick up the mantle. Nico, क्या फ्लैश है भाई, goated flash. The utility that just seems so incredibly sharp from G2. Entries or holds. ऐसा फ्लैश आप दोगे ना कभी भाई मुझे भी पे, तो मजा आ जाए. आप हिलाते रहते हो बैठ के, लेकिन आप पता नहीं ऑफ लेके बैठ जाते हो कॉफी पे. Versus a team of Mouse. With the trade, there's no guarantee they get the round, honestly. We'll spot one. Highly anticipated this A hit. They know exactly what's up. Hunter's going to tuck into the corner here, forcing Mouse to push through smoke if they want to stop him. Modesty, that is the second missed shot on the approach. That is or could be the difference between 12 or Mouse's 6th. And his next comes back from pit. It's Hunter. It's a team kill. It's Xerxes to shoot Torji in the back and push Jimpat into the clutch. Once again, looking for back-to-back 1v2s. He can go anywhere. Oh, missed jump, not ideal, but at least they're not that close just yet. Working with 28 HP. It feels like because he wasn't able to get that move, for all he knows, they are right there on the smoke. So instead, he's going to make himself small, tuck and hide and hope. Hope to God that Mouse are able to just hold off a little longer. CT's inside of the site. They're starting to make sound. They've got smoke for the bomb. He pops up! And Jimmy closing that distance. He gets found out, but time, it's not there. क्या कर रहा है? छोड़ दिया उसने. उसमें कितनी थी पहले उसने उठाई किट? नहीं नहीं किट था उसने छोड़ दिया. नहीं उसने किट उठाई ना तभी तो दिखी तो मुझे. नहीं उसने टैप किया फिर छोड़ा. हाँ तो किट नहीं थी तभी तो छोड़ा. किट लेफ्ट जाके उठाई हल्की सी, फिर दोबारा टैप किया. देखो ना. A nice one from Jimmy. Maybe it was all planned from the beginning. Scam. स्मोक था तो. भाई G2 का पोटेंशियल तो यहाँ से चुप करने का भी है, आई थिंक. भाई देख रहा तो अभी 2 राउंड ऐसे गए हैं ना, 1v2 1v3. ये क्या कर रहा है बीच में? भाई दाढ़ी वाला ठीक है. ऐसे ही है भाई G2 का. G2 11-12 के बाद बहुत चौक करती है. एक दारू पी के सो गया लौंडा बीच में. Could have been a good spot for him. It was only time that allowed him to win that clutch. Of course, because he wasn't playing to defend the. पहले अगर स्मोक कर देते मॉली वाली करके. तो पीछे वालों को क्या दिख रहा होगा? उतना अच्छा भी नहीं दिख रहा होगा ना दूर से. पागल हो गया क्या भाई? बहुत बड़ा स्क्रीन होता है भाई. मैं सबसे आगे मीडिया उसमें था ना भाई. मेरी गर्दन दुख गई थी 3 दिन ऐसे ऊपर देख के. एटलीस्ट मेजर में तो. बट IEM वगैरह में थोड़े छोटे होते हैं, बट वो भी बहुत बड़े होते हैं. और ये तो छोटा सा ही है ना, ज्यादा बड़ा नहीं है. दिल्ली में आई थी एक 100 Thieves करके. You just won a round and now you're उस टाइम पे गए थे. एक मैच हुआ था इनका. 100 Thieves और एक फनी अजीब सी टीम. Today who we talk about, it's Kerrigan who is his idol, and it was Kerrigan who said even if you're going to lose the map, make it close, make him fight for every single round. If Kerrigan's your inspiration, you better be able to bring back games too. एक ही मैच खेला उन्होंने. And that's what's demanded of Shuhei at the moment. No more timeouts for Cyclone to try and get in to his young blood's ears. It is 5 players in the server from here on out. With the utility over the top, just the pistols to get through. Finally, what feels like respite here from Mouse, a chance to catch your breath. अबे तो ये बहुत क्लोज जीत रहे हैं ना, तो इसने कुछ बचा ही नहीं हमको. To find confidence and to continue forward with a little bit of momentum on this T side to keep things close. Those last 2 clutches were simply for hope. Kind of feels like the responsibility bounces from shoulder to shoulder. You know, in a game like this where things are going wrong, you have to rely on somebody, a star player, as you look around to just save us. Torji, get a 3K. Jimpat, get a clutch.
you know, and then it goes back to Shuhei. जा बेटे Once money his farm troops कर are imbued with confidence, they believe in themselves as individuals, then Shuhei can use them to be their best selves. And now it feels like this next round is about him once again. oh Easy does it. He in fact guns down the last two. 4 rounds is touching distance to G2. And exertion. We're talking about a guy who's on 5 kills right now. He is a T-side monster. Yes, he dies a lot, but he also frags a ton. He's someone who I had coming in the tail end of my top 20 last year simply because his stats don't tell the full You story. don't He is, tweet in a can lot no of way ways, we the just identity choke of Mouse and diffusing. what they accomplished last year, whether it was Pro League or other events. Because in the one series they beat versus Donk on Mirage, it was exertion who killed him over oh again. man He's the guy who has no fear. But they aren't going to win this game if he's 5-14. No. And he's going to have to continue to harness that fearlessness in the face of इसका this भाई तो बहुत scoreline, गंदा है इस round in the face of this Royal Arena. निको They ने at least प्लेऑफ put से पहले themselves अपना माउस within चेंज किया reach बता of that 11 rounds of Hacker G2. what? They've given themselves the guns to keep pulling this rope back. देख रहा है बेंच हम पीसी चेंज करते किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता हां बेंच To claw their way क्या out है of the mud. नाइस अरे To ट्विस्ट try and ट्विस्ट make ने a map of ट्वीट किया Inferno, because my god, it felt flat. किसी को कैसे पता चलेगा नहीं तो Looks tasty, to be honest. Oh, hit him. Yeah, that's a little bit of damage. No kill, no name tag. Just thoughts here for G2. What does this mean? दीवार के तरफ मार दे मानसी उनकी बैंड की How easy it would be to test Roland, but rotations. they're going to make their move closer to A. Will they get there before Eh, the rotate? Right, Hooksy's coming out of Arch. Oh, Nexa the teri Mac band 10. It's Shuhei to throw caution to the wind. But remember, Roland softened up early, so as these two rifles fire towards sight, it comes through. क्या टाइमिंग पे है दोनों reload Perfect timing. In the face of a challenge, Roland goes right in. And now Nico is his counterpart to take it back from mid. Swapping over to the AK to get numbers even. But just like the last Hit भी नहीं है retake भाई, and नहीं करेंगे Impact's retake. clutch, there is a question as to where MeGuSSa could have gotten off to. And a question as to whether they उसके लिए want खेलेंगे to लोग, take kills के लिए this खेलेंगे। risk. And sure enough, they turn their backs, they run away, and they offer MeGuSSa an 8. Oh my God, some parting shots, and this is the round. MeGuSSa, they get into the A side early. I want to give Hooksy so much credit for that first half because the way he cracked open B, the way he got one, survived after one player died to Torji, then took over the site. We just saw MeGuSSa do the exact same thing on lane. They were able to get in while Hooksy himself 11-13 out, G2 not being able to anticipate exactly when that play would happen. That's a feather in the cap of Shuhei. G2 जीत रहे 11-13 And now it goes from Jim Pad's hands, from Torji's नहीं, strong to show that he's on form. G2 हार रही To है Shuhei to show ऐसा that मुझे he लग रहा knows how and when to है कि use G2 them. चोक करेगी ऐसा लग रहा है And we फीलिंग suddenly हैवी have a हैवी real फीलिंग बस Inch ये by राउंड inch. निकल गया तो G2 की गांड फट जाएगी Now, when people say in फिर close जाएगा interviews that they don't experience pressure, I don't believe them. Shuhei hasn't said anything, but I'll tell you one thing. He's been दो in the तो grand दो finals तीन तो SMG होंगे भी before G2. हाँ ये लोग सॉफ्ट बाय पे बस ये लोग टाइमिंग में जीत रहे हैं अभी तो G2's last bout was in Stockholm Isn't that wild to think about? when Nexa was calling. Second place. The Desert Eagle shot that broke Nico for so भाई वो long. that डीगल this is शॉट the जो first था time भाई we've seen पागल them हो गए back थे भाई in लोग top को 8 देख के major. लाइव And it felt like this game was going to be the one where they go, you should have never let us get into top 8, baby. Yeah. And then they suddenly get way better, they power up, and they can maybe even take down an upset. And this is the game where it would be considered an upset because of MeGuSSa's form. They've lost barely any games since getting in, bro. दो पिस्टल Straight up. इको पे ही है इको ही है Okay. Again, it's pressure from utility. But check this out. A 20-9 Nico and an op-equipped MeGuSSa. एक वो मॉली टकरा के दीवार पे यहाँ फेंक देना अभी And just the right amount of forward stance inside of this A site, right? They're not barreling down alt mid. They're not taking a risk with the little tools they have, but they have certainly supported them with pistols in between both that Colt and the op. We don't know which way that this bomb will go in the end. Ooh, a little jiggle. भाई मर ही नहीं रहे बेचारे से Back-to-back rounds where MeGuSSa's shot hits, but he doesn't get his kill. And last time it was Brolin who then went into Arch and sought the double opening. Hooksy will fall. भी जाओ भाई भी जाओ बीडब्ल्यू दबाओ बहन के लोड़ो That's both guns though. Ooh, wow, hold on, MeGuSSa no. They knew, of course, that the forward pressure at the A site. Oh
my... Wait, he couldn't see him. No way. MeGuSSa gets that. Is this the lifeline? मार. Is this it? Round 20? A challenge on the smoke to cross? 4 players on guns now. How much pressure are they going to try to keep going? They cancel the plan. Into the boost. No cover from backside. Brolin, it's delayed. It's a 2v4 demanded of MeGuSSa with time ticking quick. भाई ये बहुत तगड़ा प्ले बनाने जा रहे हैं. Down, the bomb's picked up. He's got his support system here. Shuhei, are they going to take the fight? They go into the challenge of the CT spawn. But now they're both known. Next got another 2 guns to kick this off. Brolin's down. And G2 will rob यहाँ से चुक करना तो G2 के लिए मुश्किल It's होगा. scrappy as you expect from a G2 round win. But this had to be the lowest expectation. In this situation, it felt like MeGuSSa. Once they had taken over the B site, it was theirs. That is pace from HooXi. That is on your ass. ये क्या है? दिख तो गया था. अरे नहीं अपनी सर्वर में अलग होता है और क्या होता है? अरे हाँ बट वो अटक गया था, उसको मार देना, शूट तो कर लेना चाहिए था एटलीस्ट. इतना तो हम भी कर लेते भाई. भाई वहाँ गांड फटी होती है जब इतने लोग चिल्ला रहे हो ना लैंड पे. ये देख वो फट गया. It is a quick move out of MeGuSSa to find ill-equipped. Overlap हो रहा है, मैं देख रहा था. MeGuSSa may be outnumbered. It's time to make some magic, MeGuSSa. ये जितना तो बड़ा to keep the dream alive on map 1 to hold back G2. They stole their 12th. Can they rob the win? Shuhei is pressed into the short side. Yimfat's got to kill him on bout if the player comes out, but the bomb, I mean, it's already so far gone. It's now or never. Try to move it in, the pit holds good. HooXi comes out with the trade frag. There's the other bit of pressure out of Moto. Corsi just needs to be the anchor. But as they get on top of that bomb, there's a question about the time. Oh, the time! HooXi's on top! Denied! Shuhei chews through! बहुत late start किया यार उन्होंने retake. Oh, let's keep it going, 1 round at a time. The clutch they absolutely needed right there. MeGuSSa, eyes glued on lane. No plans to come there. तो हो जाएगा. बहुत 4 हाँ भी What a पैसा तो होगा but इको करेंगे. Remember, that was the guy facing the Molotov with a MAC-10, praying to God that they don't chase him. And look at it, his support holding off on short. Didn't believe it because Shuhei walked with conviction. He walked from the beginning, so he beat the timing. MeGuSSa had it registered. Maybe he could be at the end of halls. I would have heard him. He would be running now. It's a beautiful move. And that's what happens when you're not nervous. You could beat times like that. Whoa. HooXi going in. We saw great things. He's in between it. Oh my God. And then on top of it, Nico. Oh! Yes! It's a meat grinder. पूरी टूट से भी जंप के साउंड नहीं आएगा. घुस गया भाई गीगा चैट है भाई. ये वाला प्ले बनाना पड़ेगा भाई आप. बनाना Just final moments from MeGuSSa, Jimpat and Torsi, 2 on 4. अभी ये चोक मत करना मार चुका के अपनी भाई. ये देख मैंने के वही रहता भाई तेरा बंदा खड़ा हुआ है. A lifeline put forth. A softened piece. हार जाएंगे राउंड में लग रहा है मुझे देख के. 32 HP. This A defense has yet to be tested since the round started, and it is silence. मिट्टू वाला बना लो play. Nice. It is MeGuSSa creeping beneath. देख लो कब भाई किसको सपोर्ट कर रहा है कि Full vision here. ठीक है भाई उसका पिक वही है. अच्छा मेरा भी पिक वही है वैसे तो. आपका G2 है. Keeps his head down. लॉल. एन का लोड़ा भी जाओ ना. The bomb site is uncertain because of the pit support. That my God, oh it could have been. Instead it is Torsi. Topple. Yes. अब तो उनको थोड़ी ना पता है. मैं बोल रहा हूँ ना. Oh yeah. मैं बोल रहा हूँ ठीक है भाई. तो बोल रहा है. See the comeback happening. There was a chance. I think भाई ये बनाना में क्या घुसा in those final moments. As Kerrigan says, it is important to walk away with rounds you can be proud of, and there is no doubt that MeGuSSa put those forth. But fools would write off G2 on the major big stage. पिक किसका था ये? G2 का होगा ना? Inferno का तो G2 ही. Second box and first box. Dark, dead. Just the second box is clear. 4v4. No utility, okay? I'm top ruins, guys. And shit. I'm top ruins. I wait for it to fade. I'm taking the fade of the banana, guys. I don't see banana, guys. Chill. Let us shoot. Careful. You're all by yourself, Roger. I can take banana if you wanna play. Take. I'm peeking with you, Nima, okay? Yeah. I'm more ruins. Holding city. I'm more in ruins. City over 2. Both. Okay, I'm hiding. I'm playing the bomb. You shoot, MeGuSSa.
There is op saving and he is leaving. You need to take the op. Take Ilias op. Nice, Ilya! Guys, fucking good job, guys. I'm leaving with Ilias op. Ой, блядь, Торзи, welcome to the major. टॉर्जी को ट्रोल कर रहे क्या वो? वही मार रहा है ना. बट ये क्या प्ले था बे? उन्होंने आगे स्मोक किया इस बार उन्होंने मॉली भी नहीं किया ताकि वो बंदे पीछे ना आए, मतलब पीछे ना रहे. आगे स्मोक किया, वो बंदा स्मोक के थ्रू ही पुश कर गया. Level up your gaming space with metal posters from Displates. Hang your displates in seconds. Swap them whenever you like. Get official art from your favorite games on a uniquely designed metal canvas and choose from thousands of posters. Join over 3 million collectors now. Your wall upgrade is here. Shop now at displate.com. वो तो प्रमोशन है. खेले एपेक्स खेले? नहीं. देख रहे हैं हम ना, देख रहे हैं. क्या देखिएगा भाई? क्या मजा नहीं आ रहा तेरे को? मेरे को तो बड़ा मजा आता है भाई देखने में. भाई 548 लोगों को भाई वहीं चलते हैं आप. पीछे से खेलते, पीछे से अब 200 FPS आ रही है हार्डली. What's popular? It's loud. It's commercial. But ASON spent all the money to make the headphones. 300-400 तो आती होगी आपको. आपका पीछे तो अच्छा है स्ट्रीम में. नहीं यार. So I'm gonna need you to have CS में एवरेज आती है 140 से लेके 200-250 तक. मेरे को तो CS में ज्यादा अरे ठीक है, 300 प्लस रहती है दोनों गेम में. अब पहले तो 350 350 बहुत नॉर्मल था. साफ ऑफ करा लो फिर. नहीं अभी कल इसका कल वो चेंज करूंगा. क्या थर्मल पेस्ट? थर्मल पेस्ट क्या चेंज करेगा? थर्मल पेस्ट. हाँ हाल तेरे से होगा. बोले किया हुआ मैंने 3-4 बार ऑलरेडी. तभी तो इतना करना भी नहीं पड़ता है ये. मैंने एक बार भी नहीं किया अभी तक. साल में एक बार ही करना. साल 1.5 साल में एक बार कर लो तो कर लो. कृष्णा 4 साल हो गए. वो तो कृष्णा है ना, तभी तो तेरे को फर्क नहीं पड़ता. तू क्या? मैंने नहीं किया भोसड़ी के. तू कर भी नहीं पाएगा तू. मैंने कर रखा है भोसड़ी के 3-4 बार. अरे इसको बोल रहा हूँ, कृष्णा को. कृष्णा को बोल रहा क्या? तू नहीं कर पाएगा भोसड़ी के. कहाँ लगा दे थर्मल पेस्ट? अपने लौड़े पे लगाऊंगा और तेरे कान में डालूंगा ठंडा ठंडा. अब बोल. लगाइए लगाइए. ये बंदे क्या वो लगा रखा है इसने ग्लिटर. तो लगाएगी. वो जैसे वो बचपन में प्रोजेक्ट मिलता था तो फिर हम लोग ग्लिटर लगा के हाथ चमक रहे होते थे. Definitely stunning work on that. Absolutely stunning from HooXi. And पेन सा आता था ना वो ग्लिटर वाला. पेन भी आता था वरना एक ट्यूब भी आती थी. ट्यूब तो आती थी. ट्यूब तो वो फिर जब साइंस प्रोजेक्ट वगैरह बनाते थे चार्ट बनाना था. साला टीचर लोगों को पक्का पैसे ऐसे मिलते होंगे चार्ट वार्ट बेचने के बेंच. लेकिन अरे रद्दी में बेचते थे. तूने वो नहीं देखा? वीआईटी की रद्दी देखी है कभी? देखी हुई है मैंने. अबे स्कूल की रद्दी तो मैंने फेंकी भी हुई है. वही तो बता रहे हैं. Built upon it, right? They responded to win round 2, but not just that. The first gun round, he's double killing with the MAC-10 coming through that smoke and Banana. So both sides of the map, HooXi's actually defending Banana as well. Him and Nico were monumentally aggressive down Banana in the second half as well. That entire map, we talk always with Inferno how important Banana is just in terms of controlling it for the CT side. Dude, G2 owned Banana on both sides of the map. I mean, listen, for Mouse, there was nowhere to be. Like, I have to say, not only was the utility plan from G2 close to perfection, and anytime Mouse tried to be a little bit aggressive, they got blocked between mollies, nade on top of that, were forced to commit to fight they had nothing to do with. And when they tried to play by the rules, you had flying HooXi through smokes, you had Nico being pushed over by his flashes. It was impossible to play. An absolute display. Look at the scoreline, 43 kills. Look, if HooXi was supposed to ruin Nico's dream at a major, right there, he's up with him.
building that dream. Also, isn't this kind of a dream scoreboard? Of course, you would love MeGuSSa also to be up there, but I really don't care about that if you're G2 probably, right? Nobody caring about MeGuSSa's scoreline when you got NiKo and HooXi fragging. Holy hell. Because look at the game plan. Right out of the gate, G2 made this a recovery mission for MOUZ. They went up so big, so fast, that it was all about trying to just scrape together what you could. And I want to take a look at round one more in depth and into the psychology of this one, Maniac. Yeah, I think this was a very important moment for G2. You look at the start of it, and it's MOUZ being on the offense, on the aggression, assertiveness. They take the space and they take the kills. The issue is, when you're supposed to close that 4v1 and you're supposed to be comfortable into the matchup, you give away these 2 kills, absolutely laughable kills, and then you create a 1v2 where everyone is stressed. You were supposed to be comfortable, and then you allow HooXi to stress the shit out of you, and that's what happened in this first gun round, and they paid the price. You were saying the second round after that, that's an immediate punish from MOUZ. Yeah, and then you have the economic advantage, and then you can maintain, you can actually call that fast, aggressive game plan, getting up Banana with the MAC-10 coming through a smoke. You're punishing the low economy so early on, you're able to stack up those rounds really, really quickly. That wasn't supposed to happen. And remember, we even heard it in the little listen-in before we came back in of MeGuSSa going, ooh, Torji, it's a major. And he knows, like, that the pressure you put on them in this situation with that kind of a lead and that aggressively that early on is monumental. Yeah, I mean, it's rarely that you can read so far into a single round and extrapolate so much in terms of everything, but that's because of everything we've said before this match even started, because of the pedigree that the players on G2 have on stage, and the things that MOUZ still have to prove when it comes to these stages. Definitely, and when there is such a differential, these small differences will have massive echoes, massive reverberation throughout the game, and that's what happened here. The fact that G2 were able to dictate the pace of the next 6 rounds and make it look easy, make it look like MOUZ had nothing to say, that is a small advantage turning into a bigger one, and honestly, just hard to watch. Yeah, well, I mean, not if you want a G2 in this one, and some of the stuff they were busting out is really cool. This is round 7, look at this execute, good utility, force the defense back, you get an opening kill, and off this, all of a sudden, you're going to call a really creative play. It's a little bit of a different way to attack this B bomb site, and NiKo's actually to come through the CT spawn smoke, completely blind as Shuhei, trying to slow things down with utility, and then you put all the pressure on Brolin, and you're like, bro, pick a spot. Where do you want to watch? You want to stay in the bomb site? Are you going to watch towards Coffin? You going to watch Banana? What you want to do? To be fair, this was phenomenally played by G2. I have to say, the fact that they were able to slow down when they realized, wait, hold on a second, Brolin is here, Brolin is here, NiKo is behind, and this is where you can misplay your hand very quickly, but no, they hit the brakes, they give time to the smokes to low, NiKo comes from behind, Brolin is sandwiched. That was picture perfect from G2. You were asking me if there was like a team underneath some of the struggles of G2 coming into the series, and I'll tell you what, you start feeling like there's a real team when you're hitting rounds like that to start things out, when you go up to that kind of a lead. It's real easy to be a cohesive unit, real easy to have those comms flowing, especially when Homeboy's doing this. It's good that I'm hosting and Richard isn't, because look at that full screen. I mean, thank God we don't have Richard right there. I don't know how he would cope with this. This would be a heart attack. But listen, this is just a fact. We have to deal with that. HooXi had an incredible map. That is true. Someone that's pointing out his liability, not at all. He was leading both in terms of calls, which we already highlighted, but in terms of frags, what a combination. We can't be positive all the time, otherwise we wouldn't be an analyst desk, but I'm going to start actually on the G2 side, because some of those CT rounds did leave me wanting. Retake server up now, please, because, I mean, that's how you tilt yourself. I mean, they allowed MOUZ the right to dream. They allowed MOUZ the right to come back into the game, at least mentally. Yimpat's going to deserve a whole lot of praises because, hell, anytime he was presented, listen, he's the truth. Like, that player, he's the truth. He's legit as it comes. I say more. Is he the only one with Brolin that showed us something out of the MOUZ camp? Torji was here. Torji was here. And if he's someone that we love to pick on when it comes to playoff games, he was the first one to actually stand his ground with the AWP. He had double multi-kills from different positions as well. He was looking for kills. That sequence in apps where he gets a kill and a leg shot and he goes back with the P250, that tells you the mentality he was in. He was in for the difference making. And I'm not going to hold it against Torji. I think he tried his best. There is another name that needs to be mentioned. Leaves the odd duck out, Jason. Yeah, I mean, unfortunately, you do kind of have to mention Exertion in the next pile of just a really, really bad game. And we kind of mentioned it, so, you know, with his kind of play style, sometimes it's going to look awesome, sometimes it's going to look terrible. And unfortunately, this is that terrible game where it just felt like he couldn't get anything going. Now, let's be fair, too. G2 put a lot of pressure on him, a lot of different looks at that. There was nothing going his way. हाँ भाई सेक्स कर दिया भाई के ने उनके साथ जो सुनील नारायण ने हिजड़ा बना दिया उन्हें अभी ने भाई दूसरे तीसरे उसने 50 मारे ना 30 बॉलों में मैंने साला बैटिंग नहीं देखी मतलब फर्स्ट इनिंग देखी पूरी अच्छा खेला कोहली क्योंकि बहन जो सबकी विकेट गिर रही थी
हाँ वो स्ट्राइक रेट कम था उसका भी, पर क्या ही करता भाई, जो दिख टिक ठीक है विकटें भाई, गिरी एक तरफ से। 54-57 बॉल में मारा है उसने, 80 करी, 80 हाँ करी। 140 का स्ट्राइक रेट कुछ तो था, बट प्रॉब्लम ये है कि फिर दूसरी तरफ विकेट गिरी तो बंदा क्या करे, या तो अबे मार टीम, ले या तो अबे दूसरे संभाल ले। वो कौन बंदा आया था, पाटीदार क्या था वो, गड्ढा। रजत पाटीदार। गड्ढा भाई, उसको वो उसने साला उसने पहली बॉल खेली ना, मैंने बोला ये अगले 10 बॉल में आउट होगा ये। इतना 10 बॉल तो बहुत अबे ज्यादा उनकी होती है टीम T20 में मैनेजमेंट ने भाई। बहुत गंदे वो लिए हैं अबे प्लेयर्स। अबे तो उन्होंने खर्चा तो मोस्टली कोहली, स्टार्क, कोहली पे डू कोई खर्चा नहीं। डुप्लेसिस, कोहली भाई, कोहली को क्या था, पैसे तो क्या देते ही होंगे अच्छा खासा। हाँ बट अरे मतलब रिटेनिंग का उतना नहीं लगता है, वही तो बोल रहा हूँ। अबे नहीं मतलब उसका होगा 30-40 करोड़ का कॉस्ट जो भी, बट स्टिल अबे इतना पैसा होता है भाई फ्रेंचाइज पे, कोई पैसे की कमी हाँ छोड़ना है। अरे मतलब प्लेयर वो सिलेक्शन अच्छा नहीं फ्रेंचाइज है। की कैप में नहीं जाता ना उनका उनका। रेवेन्यू वही मुझे दिक्कत है। ब्लैक बॉर्डरलाइन में, रेवेन्यू पता है उनका ब्रांड का ही कितना है, बट मैं वही बोल रहा हूँ उसमें उसी में उनका काम चल सकता है प्लेयर प्लेयर अरे के। वो लोग अंडर द टेबल भी देते हैं, वो लोग ऊपर व्हाइट एंड ब्लैक देते ही देते हैं उनको। बात हाँ हाँ। अरे बात लाइक उसका नहीं है, बट पूरा टीम अच्छा नहीं है वो। पूरा अरे टीम बहुत क्या। गंदा भाई, ट्रेविस हेड को भी जाने दिया उन्होंने, इतना अच्छा प्लेयर बहन पेला सब ना तो भाई ने, उन्होंने कर दिया। फेल दिया उसने भाई। सनराइज 273 चौबीस उन्हीं का रिकॉर्ड तोड़ा है। 24 बॉल पे कितने मारे उसने, बस उठ गया, चौवन अरे चौके। उसने उसके साथ वो अलग ही पगलाया हुआ था अभिषेक शर्मा। इनकी टीम में, उसने तो कोई लगा ही नहीं मुझे, वो जैसे अरे इनकी बॉलिंग तो बहुत गंदी है। साला सीएसके में उसने मतलब एक गड्ढा। जबकि सिराज है इनके पास। हम्म सिराज कितने कितने पे गया आज, शायद 40-45 रन खाए उसने 4 ओवर में। सिराज तो भाई, तो सिराज के पेस है ज्यादा, सीम थोड़ा कम है वैसे भी। इंडियन उसमें पिचेस में सीम उतना कोई साला कोई कर ही नहीं पाता। एक साला उसको ले रखा है स्टार्क को, वो गड्ढा उसको स्टार्क इनके पास कहाँ है। केकेआर के पास है ना। हाँ स्टार्क तो गड्ढा हो रखा है। भाई स्टार्क की बॉल सिंग ही नहीं कर रही भाई। अरे उसके लिए पिच थोड़ी ना है वो। वही तो बोल रहा हूँ, इंडिया के पिच उतनी स्विंग स्विंग है नहीं। और स्टार्क तो उसका है ना चूतिए, ट्रेविस हेड के साथ। नहीं नहीं एसआरएच। क्या भाई, केकेआर आज कर रहा था बॉलिंग। अच्छा हाँ कमिंस है उसने कमिंस लिया था, इनने स्टार्ट लिया था हाँ। कमिंस ठीक है भाई, मीडियम पेसर है, फास्ट बॉलर भी नहीं है, बट लाइन टू लाइन को अरे करता है वो ये भी है, वो ट्राई भी नहीं कर रहा ना इतना, हाँ। उसको तुम देखो बॉलिंग करते हुए बहुत ही कम दिखेगा तुमको। नहीं वो बॉलिंग भी खेलता, विकेट के लिए नहीं करता, वो बस प्रेशर बनाता है बस। वर्ल्ड कप में भाई उसके 10 ओवर में जान मार दी है, खेलते उसकी सबकी। विकेट निकाल लेते उसने हाँ तो। स्लोअर बाउंसर जो आया चला गया। एक वो पांड्या देखा है। उसको छोड़ दो तो क्या हो तो छोड़ दिया। वो बेचारा भी इतना ट्रोल आ रहा है, ट्रोल हो रहा है, मैं उसको ट्रोल करने का मन भी नहीं करता। अरे भाई वही तो। अरे तो वो करम भी तो ऐसे कर रहा है, कैप्टन बना पहला मैच पहला ओवर मैं डालूंगा। और जब रन पड़ गए तब बुमराह को बुला लिया, वो बुमराह ने विकेट निकाल के दे दिया। उसके बाद देख लो फिर सेकंड मैच में भी 10-11 ओवर हो गए थे, बुमराह ने 1 ओवर किया था उसमें से। प्रेशर तो बनाने नहीं दे रहा ना बुमराह। फिर उसको सनराइजर वाले में कल मैच में बुमराह को यूज किया, फिर लास्ट में साला स्पिनर लास्ट में ओवर ही नहीं बचे किसी के पास। अरे बुमराह को तू कब यूज किया है पता है तेरे को, 11 ओवर हो गए थे, बुमराह ने 1 ओवर डाला था उसमें। और सेकंड ओवर फिर से पांड्या ने डाला था। जो उसको मारा है ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने भगा भगा के। तो वही हो रहा ना, हीरो बन रहा है तो वही होगा। एक वो कुत्ते वाला इंसिडेंट तो हुआ ही था, हार्दिक हार्दिक चिल्ला रहे थे लोग। साला उसको इंडियन क्रिकेट टीम में उसको मतलब मिड लेवल का बॉलर है राइट, वो अरे वही इकोनॉमिक तो बोल रहा मतलब हूँ। स्प्रेड फील्डिंग में आता है वो। उसका ना तो बैटिंग में ऐसा इम्पैक्टफुल है ना बॉलिंग में है, बट एज एन ऑलराउंडर है बेसिकली। मतलब जो भी बंदा फिल इन, दोनों चीज में फिल इन है। ऑलराउंडर ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, ऑलराउंडर ऐसे करता अश्विन भी है जो वही तो नरेन मैं भी वही है, बता रहा हूँ, नरेन भी है। उसका कैप्टन जैसा कुछ वो भी नहीं था, उतना इम्पैक्ट भी नहीं दिखा ना उसका, किसी मैच में नहीं दिखा। मैं तो बोल रहा हूँ, अगर मुंबई इंडियंस 10 मैच हार गई तो क्या होगा।
अबे दिल्ली का लाइनअप भी अब अच्छा हो गया ना इस साल थोड़ा। दिल्ली का तो हो गया हाँ इस साल उनके वही है ना इस साल जो प्लेयर्स हैं वो चल रहे हैं ढंग से। वही है अभी। वो देखो गुजरात का अलग ही कर रखा है उसने गुजरात का पर ज्यादा नहीं जीतेगी गुजरात का ठीक ठाक ही है और शुभम गिल कुछ कर ही नहीं रहा ज्यादा। अरे उससे मतलब नहीं है ना कि अभी भी रन रेट उन्होंने ढंग से ही मेंटेन कर रखा है और पॉइंट 2 जीत चुके ना वो। अच्छा मैं तो आज एक ही नहीं देखा फिर उसका देखा सीएस के मैचेस आ गए तो मैं बोला ये देख लेता हूं। मजे तो बस उसमें आ रहे हैं सीएसके के मैच में। सीएसके में धोनी तो बैटिंग पे 7-8 आ रहा है। आए नहीं दोनों मैच में बैटिंग कर दी। वही मैं बोल रहा हूँ वो ट्राई कर रहा है बस जडेजा को बोलता साले आउट हो गए बताइयो। अरे उसने 6-7 विकेट तक हो गए थे वो बैटिंग करने नहीं आया था धोनी ने। क्या भाई अभी प्लेयर अपीयरेंस पे खेल रहा है ऐसे भी। हाँ स्पेशल अपीयरेंस चल रही है उसकी बढ़िया। वहाँ पे गाय तोड़ मजे ले रहा है उससे। गाय तो मजे ले रहा है वो उसको बोलता है 1 ओवर डाल दो देखा तो वाला मीम। वो धोनी को बोलता है 1 ओवर बॉलिंग कर लो। धोनी बैटिंग नहीं आ रहा मैच वही तो वो विकेट के पीछे खड़ा रहता है बस उसका काम वही है अभी। Sometimes when you need a little bit of help from a PC or something like that, oh my God, make it into the playoffs. But then you're there. कितनी बकर करेंगे जो आधे घंटे का ब्रेक है क्या? 15 Yeah, you can't fault them for it. They didn't do anything wrong. Seize the moment now when they're doing it. They've done it on map 1. Now bring it home on Vertigo, and if you can't, you've got one more map. They've given themselves a great situation to move deeper on into this tournament. So, devil's advocate, do you think there's a way on Vertigo, just situationally on the map, to play as free-flowing and free spirit as they did on Inferno? I don't think that's the case. I think the map sort of blocks them more. It's a bit more claustrophobic. I don't think you can have wild. I mean, A-Ram, you're going to tell me they're going to just cross smokes like wild horses? I'll tell you what, there's a similarity to Inferno when you think how important Banana is to Inferno and taking control of that on the CT side or on the T side. And then A-Ramp, if CTs can't hold A-Ramp, if G2's just going to be able to barrel up and get, 1-for-1 trades, 2 opening kills, Hooksy with his MAC-10, Nico with his AK-47, if you're going to have that much success, there is a world. It's a critical part of the map the same way Banana is. There is a world. He's staring into the abyss, this guy. You just don't want to admit it. Listen, all of the conditions materialized for G2. Like, if you're a G2 fan, life is amazing. Hooksy had a good game. Nico showed up. Like, what else do you need? Everything's coming together. But if I'm a neutral fan here in the Royal Arena, I want to see Mouse play to their best level, and I want to see them bring it to a अरे गब्बू भाई स्टार्ट करवाओ यार क्या कर रहे हो मैच? All I want for Christmas. So let's head over to Scrawny and Launders. उसको मिला थोड़ा सा स्क्रीन टाइम लेने दे भाई को। This is no longer the basement of a hotel. भाई को दिख रहे थे कि बहन को मुझे पता है। This is the major stage. तो मिल ही जाता है। बहन को जितना भी मतलब टाइम मिलता है वो पूरा चूस लेती है उसे। एक लिटर लगा के मेहनत की है दिखाएगी तो यही। And we see it, but under the bright lights in the Royal Arena. यही तुम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हो यस मैडम देना ग्लिटर। भाई वैसे बाहर की लड़कियां बहुत सारी जगह ग्लिटर लगाती हैं जैसे भाई बहुत बड़ी स्क्रीन है भाई बहुत बड़ी स्क्रीन। अरे ऐसे लगता है यार यहाँ से कि छोटा है बहुत बड़ा स्टेज है तुम्हें ऐसे लगेगा कि आईफा मोड का स्टेज है भाई बहुत बड़ा है। ये तो खैर फिर भी छोटा है। G2 सिटी खेलेंगे ना। And yet here they are fighting on. Nothing they can do but play. G2 ने अगर निकाल लिया तो निकाल लिया नहीं तो ठुकेगी तीसरे मैप पे मेरे हिसाब से तो। Mouse's map pick beginning on the T side, rolling out to top middle. Started with a pistol. Mouse का लेगेसी मैप पे लेके गए, but G2 भी अच्छा खेलती है। नेक्स्ट कॉल कर लेते हैं इस मैप पे। Suddenly it crumbled. Weird back and forth, letting G2 have that momentum, letting G2 have that initial lead. By the way, something you just can't give over to players like MeGuSSa, like Nico. That's going to be this title of someone's documentary, okay, in this playoffs. Somehow it crumbled. Again and again, if you are on the side of Mouse, all too often. I hate to admit it, but Vertigo's given us some great mass at this major. Yeah, that it happened. This might be one more. Shall we? Smoke into the elevator to cut off 3. अरे okay. God player है भाई। भाई कॉन्डम निकाल के मार रहे हैं तो। Taps away the couple that do try to emerge from top ramp. We said top ramp is going to be important.
Oh, Torzy, just the two. All they're gonna get. G2 with another pistol. $6 लाख दिए भाई actually sort of falter on pistols somewhat. A team that I think have the उसका best pistols. उसका एक वीडियो नहीं देखा वो नया वाला वो साला उसने एस लिया तो उसने पहला मारा फिर दूसरा मारा प्लस 6000 प्लस 6000 बोला तेरा कुछ ट्विच का मीम था वो अरे हाँ हाँ उसने भी तो बनाई है सुपर स्टिटफ ने वीडियो And I think even though pistol rounds, as Sean Gear said, भाई maybe they're स्पिरिट not पे real बनाई है CS, मस्त it still वीडियो shows you who's देखना nervous. Sure. And it shows you who's not. And it still puts a 1 up on the top of the screen. G2 securing it. रीटेक सिमुलेटर ये भी सो गया क्या गांडू? Desk had a lot to say about banana control versus ramp इसकी control. शांति में तू कैसे देख रहा है? Vertigo for that मार reason. दिए बेंचो माउस क्या करूं? कोई नहीं यार See if G2 can get their hooks into एक it. स्प्लिट को लिया था बेंचो तो वो भी हार गई। अब माउस को लिया मैंने आगे के लिए बेंचो तो वो भी हार जाएगी तो बेंचो क्या ये सही होगा? तूने ले क्लाउड और किसको लिया था? वाइटलिटी वाइटलिटी अब तो तुमने जिताया किसको है? स्प्लिट को स्प्लिट हाँ तो सब हार गए ना। हाँ तो फाइनल तो वैसे भी खराब ही है। You take down dunk one time, you think you're all that. स्प्लिट लिया क्या? सभी ने स्पिरिट लिया ऑलमोस्ट। भाई स्पिरिट ही लिया भाई वो सबने और इतना क्लोज गेम था देखा तुम लोगों ने हाँ नहीं गेम अच्छा था उन्होंने थोड़ा चोक कर गया वो लोग ओटी में चोक कर It's you guys, by the way. You're the reason. पहले फेज ओटी में चोक किया Games फिर are different here on stage. और पता है फेज ने 7-0 लीड निकाल ली थी लास्ट मैप में फिर उसके बाद कमबैक किया उन लोगों ने फेक कमबैक पे इतना टाइम वेस्ट 4 मिनट तक बैठ के But this is a team of young players with no experience in it, right? Not even that sprinkle of veterancy. So maybe that's the problem. Here comes the rush with just Glocks. They waited. And they think maybe they can take the site by storm. If that will get the one. All's good. G2 gonna convert. R99 है भाई वो। And another beat of sweat. निकल जाती है वो एक बारी में। The most shining review you could give of G2 in this situation is they have a really good connection to their CT players. When we talk about a B site that's very hard to hold alone, you'll have very good flashes, rotations from G2. नहीं देखा जा रहा था ऐसा। Fuck off, देखा नहीं जा रहा मेरे से। Their strongest attribute. आँख बंद कर ले। Map agnostic thing that they've मार got के आ going जा यार on, कब that के they भाई can really take advantage of extremely coordinated rotations without leaving too many gaps at the same time, right? कभी को ना मैं दिन में कभी CS खेल रहा था तो मैं ना स्टीम पे इसको वॉइस करता रुक ऑफिस पे स्क्रीनशॉट भेजता हूं So opening back towards ramp, we get a good अरे पनिशर भाई आप भी बैंगलोर रहते हो क्या? Two sets of eyes peeking down. आप भी बैंगलोर रहते हो It's क्या? going to be on Zershin, I think, to really kind of puff his chest. When there's not numbers here for Mouse, he's going to have कहाँ to पे be रहते हो larger than life. And it's always a Bang- tantalizing dance Bangalore में कहाँ to पे रहते हो? spam through those ramp smokes. And all of a sudden, CT's come barreling down on you, and you've got a swarm of defenders to deal with. Right now, it's going to be NeGuSSa under pressure. Keeps his head tucked. The mid player comes over. HooXi looking to join him. HooXi and NeGuSSa, though. Are these the pieces that you want in place to stop the attack of Mouse? Nothing will say more than the live round. Big भाई रियान flank. परक को तो Here's जीरो ने already down जर्सी the भेजी ramp, थी right? He's already attacking this because Zershin had given over that control. Given the space. Now we're starting to get that stack. Third CT into place. This is G2 being mobile. Mouse caught sleeping. How much time do you have? Nico and NeGuSSa 3 kills like it's nothing. We get this late lurk out from top middle. Brolin could be the solution. Whoa, haphazard. MeGuSSa just jumps around. Hunter keeps his gun quiet, then reclaims the one. But he knows, surely, that this is the bomb going back to the other side. Now, Torzy, he walked half the distance. CTs will join him late. Torzy, do you have a clutch in you? Do you have that clutch with the AK? Smoke gets popped open. Hunter jumping up. Could go for the chance before the teammates are here. Oh, wait, Torzy. Oh! यार He had a दूसरा निकाल लेता तो queued up, but Hunter, I like that he doesn't waste time. No, he jumps. And that's the thing, like, they're on the same page in terms of how fast and aggressive they want to play. And that's on CT sides. इस बंदे का फोन देखो। पिकअप दिखा रहा है comfortable doing it on CT. Staying cohesive. Found the Mouse fan. Nowhere to run. Cyclone has been very liberal on taking these pauses early. Yes. Something across Inferno, and now again right out of the gate here on Vertigo. Love to see that. I mean, the comeback was late towards the end of Inferno, but it was a real comeback. There were some good rounds in there. It was good individual moments from Jim Pat. It was good shots from Torzy. It was good calls from Shuhei. You did have the ingredients to make that stew taste good.
You asked him to bring the pressure. Nico in the last round. Oh, man. The moment Xerxen left, and, you know, he did everything he was supposed to. He spammed his smokes. He walked away. He wasn't obvious with the departure. That was a matter of sort of retraining something they already knew how to do. They took too long to get forward and execute that they already knew how to do. Not taking time in this one. Very quickly up behind Tarp. Of course, shunned by utility, as this is just pistols. Shuhei to lead it up on short, and Nico's gonna make quick work of that one. No chance with the lesser weapons. Flashbang comes around the corner. They're not gonna catch any CTs out of position. There's just the right amount of hesitation here from G2. Very risk averse in placing these rifles forward. God forbid you give an M4 over to a member of MeGuSSa. So they'll stay tightly tethered. Only Nico kind of out on his own, but he too just inches this one back. Still enough smokes to put up the wall. Expect that next once the time comes. Minute on the clock, so there's still this uncertainty on the other parts of the map. ऐसे तो नहीं चलेगा माउस भाई. And in doing so, this is going to stall out MeGuSSa. We already saw them stalled one round prior. Oh, they're on a quiet route towards the A side, watching their flank, and the CTs I don't think are too bothered by it. Layering their utility, spacing it out slightly, putting on little bits of pressure here and there. Fourth player comes and joins them. That's Brolin with the second smoke. That wall is still inevitable. Flash goes out. Nico disruptive. भाई अगर G2 ने नावी को हरा दिया ना तो I think हरा देगा अच्छा चांस है. हरा देगा हरा देगी I think हरा देगी I think जैसे वो खेल रहे थे आज लड़के की तरह हरा देगी जब फॉर्म तो अच्छा लग रहा है इनका. अभी भी लास्ट ही हारे हैं ना उनसे तो अभी भाई एकदम गुस्से में रहेंगे. पर G2 जीत जाएगा अच्छा लगेगा भाई. निको भी डिजर्व करता है भाई एक मेजर तो भाई. भाई उस टाइम पता है उसके बाद कितना बुरा हुआ जो स्टॉकहोम वाला मेजर था, याद है आपको? भाग दिया था ना उसमें जो सैंपल पे. भाई मैंने वो पूरा मतलब मुंह के सामने देखा था और भाई पागल हो गए थे भाई लोग. लिटरली कार्लोस था वहाँ पे. कार्लोस भी पागल हो गया था भाई. It was the question of who is going to be better. Even you forgot, right? We casted them back then. People had to place bets. Was it MeGuSSa, who was flashy but also good, or was it Torzy, who was actually the good one? Now they're both here in a major playoffs, head-to-head. Don't doubt his impact. Remember, Torzy was one of the first NXT players to get called up onto main MeGuSSa. Nico looking to shut it down. He will be a pressure point on this ramp. They will chase. Now MeGuSSa locked in behind Sandbag with the smoke to work. Starts to drop his util just in case he's not long for this. Oh, yes. Clean snapshot back. We said Torzy looked better on map 1. MeGuSSa off to the races, recovering from those missed shots in the round prior. That's what you want. Full power MeGuSSa, full power Torzy. Because the conversation was, if G2 were going to cause this upset, it felt like it would all come from MeGuSSa. Line them up. Hunter almost knocks both down, but it will fall on the shoulders of the young Swede in a 1v4, turn 3. 1v3. It feels like anything is possible for Brolin these days. Looking for vindication since joining MeGuSSa. He's been doing nothing but winning, and he's been set up beautifully under Shuhei on this new international lineup. Brolin doesn't have the time to go back to the other side of the map. It's also the back door that's being shut behind him. But does he have a way to brawl his way into the site? Surely not. He's gonna step on the trap wire. Oh, भाई वो molly लेके खड़ा हो रहा है. He puts the smoke down. Good thing he's got the smoke, huh? That's how that molly is, and he gets it off. Interesting turn of events. Brolin will waste no time. Cautious about the flank. He is right. There is somebody there. And he takes him down with minimal damage. Nexa did not do enough to queue up a guaranteed clutch here for G2. Now that smoke could come back to haunt him. MeGuSSa's got the kit. Brolin, that's 3 kills deep. And as he goes back down the ramp, the reload's in. Hooksy's calling his bluff. He goes around. वो निकल गया राउंड G2 का. It is never B-roll with हाँ Brolin. लॉल. The highlight reel keeps rolling. मैंने छोड़ा ही नहीं. You are vindicated, my friend. Shine bright on stage. Almost 0.1 second, 0.2 second. Saw before today. भाई मेरे दोस्त की पिक्चर पोस्ट भी कर दी माउस ने. लॉल. वो स्टेडियम में देखने गई हुई है ना. उसकी फोटो पोस्ट करी माउस ने. लॉल. That's a lovely moment from Brolin. Somebody we know, an overpass on the CT side can bail you out of an NT go, getting
4 kills off of one and done position. You know, that's the kind of spray control he has. It's not all the time that you get him in the late moments to show off his CS IQ. Down to the wire. Wait. Wait, what? Look at the score. Wait, what am I? What? That's a defuse. He got it? Oh my. Oh my. भाई ये कास्टर्स मैच देख रहे हैं क्या मजाक कर रहे हैं? Well, it's not वो just खुद Mouse कंफ्यूज है क्या हो क्या रहा है? बहुत बकचोद है by the skin of his goddamn teeth. मोहन और स्क्रॉनी। All right, snap back to reality. इंडियन इनमें से तो एक। किन में से? ये जो कास्टर है। अच्छा वो तो है। Brolin goes down again. Mouse do not need this right now. Silently, they'll creep back towards B site again. Oh, what could have been? Failed boost. Man. Starting to struggle, huh? I thought he wasn't even close to pulling that off since Brolin ran up onto the site right away. HooXi was that much deeper though, right? You look back at MeGuSSa, just an inch forward around the crane, dies. Oh my God, 5 straight here for G2. And another perfect खड़ा हुआ stop here. कैसे है Standing वहाँ पे? behind the Molly is MeGuSSa. My God, Molly man, का there's भाई no खत्म overflow. This is खत्म है भाई domination सीन्स ही नहीं है map to कुछ map. Maybe we just wanted to over, believe it so it's bad, over. just so they would have नहीं a ये round. G2 का बहुत common problem है। Something, bro. They just need a glimmer of hope, because this is a feeling that has become all too frequent. And not just losses, but now the nature of the rounds. Oh man, that is uncomfortable here. It's got Cyclone crouched behind them. Another perfect time to call the timeout. I don't think you can really waste them when you don't have any rounds now. It's his job to get them standing straight up. Right now, Mouse are slumped over. Is G2O real? At a major, no less, Yeah. right? The door left open, they sneak in. And no doubt making the most of it. So, guns back up. The tools are there for Mouse. It's just the round wins that aren't. Damage, and Shuhei wants to pounce. We've seen this MAC-10 kind of catch G2 off guard. Activation out of G2, Nico takes a glance. Honestly, G2 have been content to forego a little bit of ramp control, because even when Mouse gets a crane, even when they throw that util over, it's a test that G2 keep passing, the recovery of the A site. Oh man, they gotta win back so much space. And Nico, he's happy to keep peeing. I feel like they know in the back of their minds that he's standing here, shoulder peeking his angle with confidence. Sprays a little wild, some damage in. Then he turns, that little distraction on Oh, crane. man. Cold enough. Maybe, finally, something सैक for सूक्स Mouse. कर देगा इसके साथ तो It is numbers inside the bomb site. Oh, All गया oh, down he goes. The flat bomb is हो गया। planted. Save, At save, the very save. least, they've got that. G2 decide to concede it. This is the first for Mouse, but the first of how many? Shades of Inferno again. Wow. और G2 साला चोक भी डिसाइड पे करता Sometimes all है it takes is getting the door open. That's the one opportunity you need. Just Just shake like off us. all the doubt that you had, that you can get back into this game. That Vertigo was a हम good लोग हर pick. जगह चोक करते हैं। Again, a map that they beat Spirit on. And yeah, it feels like that's where we see FaZe take Spirit. He's right at this point because they've seen him lose in that situation. But every map was difficult. नाक में and कुछ now नहीं हो रही क्या showed a कब good यहाँ veto पे to sort of set the stage. Put in a lot of preparation. Imagine how much prep you would put in, knowing you're going to आपने play against a team like Spirit गेम this के लिए year, एक रूम अलग से बना रखा है क्या and then end up winning. नहीं नहीं हॉल है हॉल में One of the most हॉल में impressive गेम VO3s that we रूम saw में was सोना Mouse winning that game. 1 BHK में 1 BHK अच्छा सही है But again, it wasn't a stage match, and that's the difference. आपका जेपी नगर है ना Vertigo just got that much नहीं harder. नहीं इंद्रानगर मैं और
मेरे साथ मतलब बगल में रहता है, अगल-बगल में। Wild that the form they bring to the table is always enough to make you believe, right? They hit the ground running again here. आपकी कंपनी सेम है क्या दोनों की? And you think this is surely the time. You know, Maniac's had enough of it back on the desk. पनिशर भाई भी पहाड़ी है? नहीं। कि आपके कॉलेज के दोस्त? कॉलेज। Before it's safe to write off Mouse. Chance to reclaim. आप बैंगलोर में ही पढ़ते थे क्या? Walk away tie. You just got to keep it Valor. clean. And they did get that streak Oh, going अच्छा, in the VIT. first map. You've got to bank on that belief. Tap into कहाँ it. पहाड़ से सीधे चेन्नई में टपके हो गया अब बारिश Safe के to बाद। say, Nico's giving them no room to breathe on this ramp, right? Constantly behind these smokes, क्या गर्मी constantly होती with है भाई, numbers, गांड and posting MeGuSSa on the gap too. तमिलनाडु There's में। one team playing for info, peeking everything. That's G2. 2022 में गया था लास्ट। Gets him off the angle at the very least. Zershin climbing along the wall, but MeGuSSa missing chances. टपली पड़ेगी So, सेट। Zershin able to pounce. But the Get a quick move from the elevator. Gun goes empty. Hunter making the most भाई of it. देखो तेरी माँ And he's got support from YT too. He wins his duel just like देख। that. Back into the even ये kill. देख, MeGuSSa bitch। picks one up. That's down towards B. They're all getting a piece. Brolin's got the response, but YT still has eyes on sight. He knows where Brolin's at. He gets out of the smoke. And that is 2 Ts to fall back onto short side. Minimal है। He'll let them go. Don't हाँ, reset. इनका स्मोक भी है। Quick बट readjustment. प्लांट इतना गंदी जगह ना वो Then they take स्पैम over the इतना site, and they do भयंकर it होता है। quietly. And yet again, we've got a smoke on top of that bomb. Things could get weird. The Molotov they wanted does not have or any impact. So Torji, little spray through. It's another situation where they could stick the bomb. Looking for the damage, and Brolin, nightmares rolling in his mind. He is now the one inside of the smoke. Lol, Not again. YT's on top of it a second time. Not Brolin's again. knifing. He's knifing, and this time he's got it. Not twice. No way. Oh, and with a little Lol. cash to splash on the side with the knife kill. Woo! Was it worth the I'd jump beat in heart on in a rate? 1v1। I think a little adrenaline could do Maz some good. Now that's a classic vertigo situation that we haven't seen in some time. Since you can break those smokes open, my God. आ गई एक ओपन। All right, now, Brolin, you're vindicated. You got your rounds. Could have been 2. Could have been an opening here earlier on in the half, but it's still an opening. Still chance for 6.5. Look how broke G2 are. Ooh, good flash. Should try and set up the deke, but Nico's not presented anything to bite down on. Brolin slips out through middle, catching YT off. So pistols start to fall, but the one M4 here for MeGuSSa has found his victim. MeGuSSa's doing a great job over towards that B site. We haven't seen it too often because the action's here on ramp, but picking up frags versus Jimpat now a couple of times, keeping him down at 2 and 8, keeping the hopes of a robbery here in round 9 alive. Sitting back on ramp towards 2 bullets in the magazine. It's going to be a critical reload at some point for what's left of this. Oh, MeGuSSa Takes one from behind. वे ये राउंड जीते हो। ducks down, pops up. इनके भोसड़ी वाले को टहलते डीगल शॉट सर पे लग जाता है, हमारा लगता नहीं मैच। ये तो है। बैठ के भी मारो मैच, देख के क्राउड चुकी भी तो भी मैच नहीं लगता। MeGuSSa M4's been able to rotate over. MeGuSSa still AD pressing along करते these करते बजा smokes. We देते get the climb up sight from Zershin. He sees them both. Okay. They'll clear the board. Maus are yet again reclaiming a half. Yeah, Brolin on your screen. Again, it isn't in vain this time. He gets the round, they get the follow-up. The anti-eco's closed up. Again, potential for 6 in the half. You never want to see a team have to come back into 2 games in a row. You know, if it is nerves or whatever, because the scoreline will catch up to you. Even if G2 get worse, ओ भाई सर पे बना रखा लौंडे ने। still win because they had such a good सर start. पे G2 बना रखा है। That's the benefit of what G2 have showed us. भाई that they're फैन ready for this match. फैन हो तो ऐसे होगा, भाई आप भी बना लो मैच। Now, Mouse have to fight a little harder. But we can see a glimpse of it. We see it's in there. And again, the round that ends on a knife kill ends up being another anti-eco off of that. This time, finally, B site's wide open. No MeGuSSa to stop them. They send reinforcements for Yimfat's half of the map. Nice shot from Torzi, reminding us that, again, throughout the series, Op's been good. Yeah, it'll be great to look back on his stats head-to-head with MeGuSSa after this. Yeah, no pistol antics here for G2. They'll claim forklift and try to pressure Brolin. He's
He's looking for the multi spray down. All too easy for Mouse. This half is truly alive now. 13 and 6, made up for it and more. But that defuse will remain the one that got away. Luckily, it didn't put an end to his rampage, topping the boards as he tends to since his inclusion on this Mouse. Losing Inferno made this veto interesting because it showed us that G2 are playing better than expectation. Overpass potentially up next, and Mouse can bring this back, but they've got to bring it back first. Oh, Shuhei said, come over here. Excellent coverage there. You can see MeGuSSa trying to power up for the shot. And Torres in the pocket with vision over fire. But then that's Hunter to take his place to try and creep in, and that AWP is not going to let you any closer. Torshi on the T is for timing. He comes back and finds his way back in. जो 6-0 से कहाँ आ गया कब देखो Climbing to 11 frags so far. All impact. The choke is real. ये भी मरा उसी. Oh, भाई दोनों. The lineup happens, but Nexa's there to recover something. One kill, all you get. बेचारा में हल्ट भी स्टार्ट कर दी भाई. हाँ, बेगी अंदर बचा है. अगला फिर कम होगा ना. And his nemesis all wrapped up into one. And what does Kerrigan do better than anybody? Keeps his team in it, brings them back. Yeah. With an abundance of comebacks in the history of FaZe for him to be proud of. It also took him a long time to figure things out, to get those wins over the line. Yeah. Well, Shuhei is in that realm right now. Yeah, that's right. And stealing a major away from Nico would be a good first step. Oh yeah, it would. Yeah, that's his aim right now. But let's be real, as it stands, it's G2 stealing this potential semis from Mouse instead. Final round of the half from G2. We're a long time since that streak of rounds off of the pistol win, since HooXi's defuse. Shuhei's gonna make sure that HooXi's dropped out of this one again. So yes, a reclaimed half if they can close this 5v4 and tie this up at 6. If anything, you know, Mouse are showing us that their ability to find timings to break open smokes are some of the best here in playoffs. Like, they're a team that obviously with Shuhei peaked at the end of CSGO all the way to the major final. But in CS2, they're playing CS2. They're playing it as a new game together. क्या गंदा एंगल खेल रहा है old habits. हाय हाय. Oh wow. Feels like Yimfat's been conditioned to be cautious on this approach. Him and Nexa, Oh, they've been duking it out 1v1 for the majority of the half. Don't get one by Slip and Jimmy, please. Hunter will instead catch Shuhei. Great chance here for Nico. He's been pretty reserved, standing back into the corner of short. This time goes a little wider, a little wilder, as he attempts to swing for sight 3v3, queued right back up. And Hunter on the MP9 in an attempt to press smoke soon enough. Final 30 seconds of the half. ये राउंड निकाल लेगी G2 मेरे हिसाब से. From the CT side has been made. Is it a matter of time? They've gotten the footing into the site. They've got a smoke still to work with. Oh, CT's banking on the guns, and MeGuSSa's just going to pick it up with the Bombus. Oh भाई ये क्या लेना था? Onto the bomb plant. That should be canceled by the smoke, but Brolin goes deep. Well played. मुझे पता था ये राउंड निकाल लेगी क्योंकि उसका फ्लैंक भी बहुत सॉलिड था. More sprinkled at the end to remind you of G2's form. Yeah, love that. And G2, again, they win that pistol to start things out. Can they sustain another pistol loss, Mouse? Mouse और Puma हम दोनों. That's the question. Mouse और हम दोनों Puma could have been Inferno. And there was basically no chance that they win it. G2 looked too sharp to open up halves. But you gotta say they need this one again. G2 let this lead go somewhat, but keeping it 7-5. I think it's still a dignified half. We have a top fragging MeGuSSa, but not an indomitable one. Torzi is right there. Critical territory now.
लैग हो गया क्या बॉय आपका? हेलो क्या हो गया पीजीएल को? पीजीएल को कुछ नहीं हुआ, मैच पॉज हुआ है। मेरा तो आ ही नहीं रहा। आपका ट्विच फक्ड अप। वही देख रहा हूँ। अबे क्रोम भी कम गधा नहीं है बे, पेल देता है पूरा। Yes, Chrome is gonna. ये आवाज क्यों नहीं आ रहा मुझे? कुछ बोल नहीं रहे क्या ये लोग? For G2 अच्छा esports, बोल they रहे। are coming into the नहीं नहीं Battlefield Copenhagen नहीं major, नहीं but ठीक it है लोग कुछ बोल ही certainly नहीं रहे। wasn't an easy run. We've got Nico and Hooksy here. Hooksy's already smiling before we even got started. You feeling good today, mate? I was just smiling because you said it was not an easy road, and that's definitely true. And Nico, you're smiling now, but at times during this whole tournament, even when you were winning, I was worried for your everything, because there's moments I'm like, G2 are winning. Oh shit, Nico still looks very unhappy. So what's going on inside your brain throughout all of this? I was happy that we won, but I was like still under so much stress that I didn't even realize that we qualified. But yesterday when I woke up, I was so happy, feeling relieved, and good. Now like everything is fine, and I just can't wait to get the playoffs started. Yeah, that's where we expect G2 to shine and perform for sure. Hooksy, for you, first time making playoffs since you've been in G2. The last time you were doing it was with Copenhagen Flames. What's that feeling like for you? Because obviously on paper, everyone would say he goes from Flames to G2. Yeah, that's easy. Playoffs all the time. Yeah, kind of a milestone, even though a lot of people expect us to be here. I think if I had to pick one of the majors to make the playoffs, it would be this one as well. So I'm pleased in the end. But obviously, I doubt you are happy with how this went for you, even though you did make it to playoffs. Honestly, I don't care if it's 3-0 or 3-2. A lot of the time we were playing really well. Like I think we had leads in every game up to like 10 rounds or something like that, and then we have trouble closing out the games. Only a very few like halves where we had maybe a bad plan or we didn't play good as a team. It's a major, it's good teams. We are going up against good opponents. It's just like not a walk in the park. And in terms of looking at this major bracket you've got in front of you, what do you think of it? I'll start with you, Hooks, but just to get your both thoughts, because it's so stacked. We've got it's probably the best major bracket we've ever had. Of course, we have to beat MeGuSSa, but then we have to cheer with everything we've got for Eternal Fire, so we don't have to play Na'Vi again. One of the better players we have ever had in the majors, so definitely going to be exciting games. I probably would say that we kind of got a little bit easier of a bracket. I think the upper bracket with Spirit, Phase and Vitality, I think that one is a pretty tough one. Yeah. But for the team that make it through these 2 games, they're going to be very confident going into the finals. So there's also a good part about that bracket. And looking at what happens for both of you, and it's kind of in different ways, do you feel like some of the criticism you both receive is sometimes unfair that you get from the community, and does it bother you anymore? You've obviously gone for it, I think, a bit longer. There's always something good about you being criticized. That means that people are watching you, people care about the team. I just learned how to deal with it. I think same goes for him. I think even like at events, he doesn't even have much time to read through all the criticisms. It doesn't matter what results we're making. We're still getting criticism. I'm pretty certain I could win every event of the year with this team and still get criticized by like at least, I don't know, 500 people or something like that. In between games, in between like playoffs, I wish a day would be 30 hours instead of 24, because I'm pretty. One thing I want to look at with Taz coming into the team, there's one quote I'm taking from where he says about he's here to help with the rest after you guys believe in yourself, do what you need to do on the server. What is the rest that he's helping with right now? What extra is he able to give you? First of all, he's bringing a lot of mood, an actual clown, like half the time. A clown in a good way. And somehow he's a clown, but still maintains that authority that a coach should have. The way I look at him, Nika, maybe you'll agree with it, I don't see him like some coaches you see as like a dad, but I see him more like a big brother. Would you agree? That's what I'm viewing when I see him with you guys. Yeah, he definitely is like a very kind person. He wants to make jokes with you. He's just funny guy. If we played like this major last year without him, I don't think we would have gotten through the stage, for example, because I think he helped us the biggest change that I've seen in us since he came, and probably one of the most important ones as well, because that's probably what we have struggled sometimes. I'm confident that we're going to make a deep run. Very confident. Now going for it, now knowing how close you could be to that trophy, what's the feeling?
a unique opportunity for me because when are we going to have a major in Denmark again? Just being on the stage in Denmark is already something off my bucket list. If we could go all the way and win the trophy, that would obviously be amazing. We're going to see some HooXi trying to bring the crowd on your side. I don't even know if I'm scared after beating Ecstatic. But 3 Danes in 1 game, which is pretty unfortunate. Well, I wish you the best of luck. Thank you very much, boys, and we'll see you in the arena. Thank you. MOUZ Sports are cruising on through to the Royal Arena here for the PGL Major Copenhagen. I got Shuhei and Yimfat with me here. First of all, how you guys doing? Great. Feels good to be here. Good as well. Really excited. I'm sure you are excited. For you, highest rated player in the tournament at the moment. Okay, there's a bit of not so many maps played because you had quite an easy run, but you must be feeling pretty damn confident, mate, especially at your first major. Yeah, I'm still feeling really confident, and I know we can win this tournament as long as we play good as a team. So. And I like this. When I speak to all of the MOUZ players, you guys are aware that when it comes to the arena, it is different. I don't think it's fair to say you struggle on the arena because you've met FaZe both times with this roster, right? But you're still new to it. So is there something that sits in your mind on this? I mean, we're all still very young, and going into the arena, playing in front of thousands of people is definitely a huge factor. Stress and pressure that comes in. Now that we have Zippix coming in, he's helping a little bit with that. Obviously, our sports psychologist also helps with dealing pressure in front of thousands of people. But we're still working every day to be a better team. So that day will come. Is there some training you can do? Is there any way that you can really try and prepare for it? So maybe what was something that works for me wouldn't work for Jimmy. Our sports psychologist is bringing us ideas, like some players are doing breathing exercises before the game, excluding all the factors that would be like outside factors, so fans or anything like this. There is some different things I do before the game. Example, Kamil mentioned breathing. Okay, so that's good for you. Yeah, it's something what I do. The pressure goes away a little bit, kinda. I'm more focused and stuff like this. For me, it's really important to have a good sleep before the game day. Like if I sleep bad, I know it instantly at the morning, and I know that it will be a rough time. Now, looking at recent form for you guys, 3-0 at the RMRs, 3-0 at the elimination stage as well. That's pretty damn impressive. But which stage was harder? Yeah, I wouldn't say there is a specific stage that was tough for us. Each game is a battle. You've had a lot of time off as well. And Jimmy, what have you been doing? How have you guys stayed good? How do you stay in the same form you've been in? I mean, we have played some practice as well, but it's more just like having a good team bond and just having a good time together, have some fun time together and just troll around. And yeah, it works for us. I'm glad you said troll around, because one thing, people may think it's just on social media when we see you, but to me, when I see you guys, you are always together. So is it just full team time for most of it? Yeah, I think it's mostly like the full team, but of course they're like individual as well. Like we are really good with each other, like we are really good friends, and we like to spend time together. So it goes kind of in both ways. I wanted to get your thoughts, start with you, Yumi, on just when you saw this playoff bracket and how stacked it is. Was there a bit of relief because the side of the bracket on? Did you guys care so much? What did you think? I believe at least that you have to like beat every team in case you want to win the tournament. Like how we're playing right now is really we are playing really good, and we really do have a chance to win this major, I believe. So I will just say that we are all pretty confident. This is a good matchup for you in your current form, in your current shape. It's one of the toughest playoffs actually brackets that we've had in a long time. Each game is going to be very tough. We cleared a few things up. We made a clear vision of how we want to continue, and I feel like with the additions of Zippix and Brolan, it has given us a lot of confidence and like a small new dynamic in the team that creates a little bit of freshness, as you like to call it, whenever you're a new roster. So we feel the most prepared and confident that we have ever been. The most confident and prepared you've ever been. That's a key statement to have. I like what I'm hearing. For you, Yimvat, looking at the fact that it's your first major and you have a real chance to win this, what would that mean to you? What would that be like? Can you even begin to... अबे यार कुछ नहीं, मैं मूवी देख रहा था। कौन से देख रहा है? अरे वो बाहुबली का कॉमेडी सीन देख रहा हूँ। So they're like made it to the final. Love story वाला part. He didn't finish it, so I have job to do still. Has your brother said anything to you when you got this far? So has he sent you a message or something? No, not really. Like but the thing is, so finished. Not really, but he will come here actually. He will come to watch me. So Sick.
I want to make him proud. Oh, definitely. That's lovely. For you, Shuhei, Paris, you were there, second place, right? You went through this whole journey. For you to go all the way here, is it like an extra thing of, okay, look, my consistency, my ability as in-game leader, how do you view it? The way I look at it is I'm on a completely different journey now, and what I did with Gamer Legion, it stays there. Obviously, it was a great achievement. Now I'm with people that I basically started off my career with. How I work here, how I developed here, is different to what I've been in Gamer Legion. So now it's a different structure, different system, a different way to get to the final, and it's just a matter of figuring that out again. How do I get there, and what do I need to do? How can I piece my pieces together in game? So I'm on a different journey now, and I'm very excited for it. I'm excited to see it all go down as well. Best of luck to you both. Thank you very much. Thank you. Scene for the people who have dreams, because also we are the small teams, like we are the big dreams here. We just follow the dreams, but not today. You did win it as a on Mirage, and then you guys had to claw it back after an amazing start. What the hell happened? I was a little embarrassed. I had to come back a little bit, but we got warmed up and we won this as a team. You did win it as a team, but this wasn't the prettiest of Counter-Strike across both maps here. You got the win, you got the job done, but you must know that this was a bit too close. It was too close for sure, but it's nice we got the win, and we know what we're going to expect for the semi-finals. And we were seeing shotguns from Wonderful, we were seeing MP5s from Big. This is just a new style you wanted to add? Alex is going to use the negative next, trust me. I don't believe you for 1 second there, mate, but I will say, when it comes to looking at this crowd, right, and how much support the Na'Vi Nation get with it, you must feel pretty good. You want to say anything to these guys? It was crazy. Thank you all for your support. You're fucking amazing, and I love you. Mwah! And lastly, I'll ask mate top that this better game leader, and we're going to go to the finals for sure. For made it to ordered major. He's in Japan. Counter-Strike, that's a massive scalp to the shoulders as well. You look at this game and you think they had opportunities. They could have won Mirage, they definitely could have remained. Just realize, wait a minute, no time at home, Matthew? You know, we're doing good. Matthew, try not to make a relationship reference. I'm trying to have people connect to our topics in everyday experiences, you know? HooXi, Copenhagen, pretty special for you. Yeah, that's a first time as well. It's a dream coming true, honestly, and it's just so special to be in front of a Danish crowd. And this Danish crowd is very special. But I've got to ask you, your first time reaching playoffs since you've been in G2, does this feel like your best chance to put your hands on that trophy? On a major trophy, definitely. And how ready are you for this battle against MOUZ? Because this is what it all comes down to, right? People are putting them as the favorites right now, especially after what they saw from you. Yeah, I think that it suits us fine to not be the favorites, and they have been playing really well lately. So, but we feel comfortable in our own game and confident as well. So we're ready. And are we ready for some G2 big stage plays? Huh? Some big G2 stage plays? Yeah, that's you know how we normally do things here. So yeah. All right, I'm looking forward to seeing it. Now, Georgie, MOUZ right now, looking hot. Does it feel good to come in as the favorites? Yeah, we feel really confident to play, and also, you know, coming to the stage, we are really excited. We are young and we are really hot, and yeah, we are just excited to play here. So yeah, it's gonna be a banger game. Now, I know you're excited, but the stage sometimes, you guys have been honest with it, that it can be difficult. So what have you done? What have you tried to achieve here to make sure that doesn't happen again? Nothing special. You always have to give your 100%,
it's just another game. You don't have to do anything special. So we just prepared as the same as any games. So yeah, we will see. And what do you think of this G2 right now? Do you feel they stand a chance against you? I think they are a good team, but yeah, we are really confident in our game style and gameplay. So we will see. We will see. Guys, the fist bumps are done. You can go and take the battle. Are you guys ready? Specifically. Good as well. Really excited. I'm sure. बहनचोद अरे कबू भाई व्हाट द फक अबे सिक्योरिटी शो कर लोग स्टेज पे चढ़ गए कहां पर चल रहा था तेरे को अरे अभी सिंपल ने भी ट्वीट डाला तो मैंने ट्विटर खोला बहनचोद लोग स्टेज पे चढ़ रहे हैं किस लड़ाई सिक्योरिटी शो हो गया बहुत बड़ा हमें भी दिखाओ कैसे दिखाऊं ट्विटर पे दिखाओ अरे ट्विटर पे उनको रुक जा दिखा रहा हूं अपना लाइव करके ताता ये देखो बैठ की जूत पंगे हो गए मारो 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 सालों को वहाँ की चूत देख रहे हो क्या इनका सिक्योरिटी पेल नहीं सकता है किसी को अरे यार वही पता ना गोरो का थोड़ा वो है पेलते नहीं इतना इजीली इंडिया की तरह मारो पुलिस लड़ रहा है गांड में डंडा आ जाएगा क्या रे हीरो बनेगा ले मैंने तो सिंपल का ट्वीट देखा खोला उसने मैंने पढ़ा कि क्या कह रहा है बहनचोद हाँ हाँ लाइक दिस ये रही मेरी दोस्त वगैरह था ना मेजर में ये साला इंस्टाग्राम ज्यादा लग रहा है अबे थोड़ा सा अगर यूआई चेंज करता तो इंस्टाग्राम ही है तो इंस्टाग्राम ही बना रखा उन लोगों ने लिंक्डइन भी आजकल इंस्टाग्राम बना हुआ है बेंच हां उठता नहीं मैं कभी साला झाड़ू लाके जो सबको 11.5 करोड़ लेके रखा है ओ भाई माल दिया मैंने तब तो
ओ भाई ट्विटर पे लोग चैट लिख रहा है UFC। ट्विटर पे कि ट्विच पे? हाँ इसमें ट्विच पे चैट पे UFC फिर बैक इन्वेस्टिगेट ड्रंक कोपेनहेगन। सोचो जो बंदे लड़ रहे हैं उनको सिर्फ हैक बैन दे दिया, कुछ और नहीं हो रहा है। सिर्फ हैक बैन। अच्छा ओ भाई G2 का पैका। ओ भाई G2 का जो मैनेजर है उसने भी फेंका अपने प्लेयर्स के पास से बंदों को। वीडियो देखा वीडियो। और बैच देखो ना, लाइव है मेरा तो। अच्छा ये देखो देखा ये G2 का मैनेजर वो पैका ट्रॉफी भी गिराती मैच। ये गिरी ट्रॉफी, ये दैड ओश। तो फेंको बे, क्या मतलब यहाँ की पब्लिक सही चूतिया है बहनचोद। इनको पता नहीं क्या लगता है बहनचोद। अच्छा ये पेलो, मैं तो बोल रहा हूँ साला को। भाई आई डोंट ब्लेम यहाँ के लोग भाई, डेनमार्क की बियर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा। बियर डजंट मैटर भाई बियर, वो बियर ऐसा लगता था बियर ही तो है भाई, नहीं होती वो बियर ही तो है। इट्स नॉट लाइक दैट। भाई कल से सिक्योरिटी 4x कर देंगे लोग। प्लेयर्स तो गाली दे ही रहे होंगे ना बहनचोद। उनका तो फ्लो बिगड़ रहा है। Figure up from the stage. ओ भाई श्राउड की चैट में भी लोग बज रहे होंगे। देख श्राउड तो आराम ही है साला। Global utility, bro. श्राउड को तो मजा आ रहा होगा। अच्छा हुआ CS में ऐसा हो रहा है। उन्होंने तो क्या G2 winning lol ऐसा they had us in the first half not corner lol। मुझे लाइव दिखा देते इनकी वॉच शेट। नहीं भाई भाई देख कितना बड़ा स्टेज है भाई, देख इतना बड़ा स्टेज बंदे के व्यू से देख तो पता लगता है। क्या मदर चोद नामी वाले। Wonderful has been hospitalized for severe back pain after carrying Nami on his back to semis। देखो हमारा भाई उसने 20 पाशा भाई सब भाई बाइक चला के आया मैं बुलेट से। They can't control me. You get what I'm saying? What's it like, Monday or something? I should be out running or something. Fuck. Try. Yeah. Order. How was the match so far?
You tell me. I mean, possible. No, I mean from home. Like for me, I'm like frozen in my chair. I don't even know how is it from home. Like, is it hyped? It's good. It was Dona. Like when they raided the stage. अच्छा Dona के साथ live stream हो what was going on. They muted the crowd, so we wouldn't. They didn't give them any attention, and then all of a sudden, Launder said, these cringe lords" or something like this, and then stream not too soon. We had no idea. I mean, good, no. Yeah, I don't know what you see because, like, you know, of course I watch it live. Like, I don't watch the stream, so I didn't even know like what was happening. So I just recorded it and I instantly sent you. Yeah, Dona, they handled it amazing. And then One, and then they came, and then they like the Petsa, you know, the GM from G2 who slammed the guy down who was running to the stage. He took us, and then everyone from the team, like Mouse and G2 plus like family and whoever and staff had to go like backstage, like for safety reasons. Like the managers took everyone, and then we were like, what the fuck is happening? Like, yeah. Oh god, it looks scary at first. Huxi, yeah. Listen, Huxi instantly into focus mode. Like, we talked for 30 seconds what happened. Everyone was like, oh, Petsa, our MVP, you know? And then they instantly kept talking, like, you know, about game and everything. Super professional, didn't talk about it anymore. Yes, crazy. And now the crowd, they're just chilling. The mood is good, I think. It's just annoying that it's like, you know, slowing down everything now, so... Yeah. I wonder if it will affect the teams, you know, because like 100%, Ona, 100%. I mean, like, you never know, like you're like in the moment, and then when you have like such a long break, you can lose your focus, everything, you know. Like, let's say a player who is doing good, and then maybe he loses his focus because or someone shits their pants. All of a sudden, someone runs on the stage. You don't know what's going on. Yeah, at first I didn't even know it was like a prank. I was like scared that someone, because the guy ran towards like mouse stage. I was like, what the fuck? He's gonna do something to a player or something. Yeah, same. Like, we didn't know. And then 10 people like threw himself at him. And then the second guy, he took the opportunity because they were distracted, and then he ran also towards the trophy. And then, oh my God, it was crazy. Yeah, damn. Okay, One, let's talk to some fans, yeah? Yeah. One, I feel like, I don't even know, this is such so cool. I mean, it's not cool, but like, you know, like so much is happening. I feel like we're like co-streaming like what for 2 days? Yeah. I feel like so much is happening. 100%. This major is different. And also the teams that are still in it, like this is ridiculous. Yeah, it's like so stacked. Oh my God, sorry, I'm blabbering so much, but I'm so like overhyped. Like, this major is crazy. क्या लग रहा है? होने की चैट में वो लड़की वहां से दिखा रही ना। हाँ। तो एक बंदा होने की चैट में लिख रहा है war time journalist. We have actual content, guys. That's like almost. That's over. Yeah, stream time. Yeah, let's go, man. Boss. Oh man. Holy shit. Let's go, guys. Holy shit. Give all this alone. No way. Let's go. Bro. That is so sweet. I feel like I'm playing. I feel like I'm about to play. You. Holy shit. I love all of them, bro. Fuck me, man. Only one day you will come to a major or something, and then you will play a show match. Yeah, Shanghai. Oh shit. Next major, Shanghai. Only come to Shanghai for real this time. Shanghai. Only promise. Nine. Only do promise deluxe. Oh God. Is it at Shanghai? Is where? Is it in Germany? Hey. No, come on. Like what? Hey guys, what up? W dodge. Bro! Oh my God. What's going on? I'm going to my seat. Are we going in? BENQ is on the stage right now. Yeah. BENQ is on the stage. See you. Can you leave open? Can you leave open? Because it still says soon. Yeah. This is backstage info. Sick. One sec. W bank. Thank you everyone for your patience. There was a small disruption, but the security staff and PGL have done their job. And all I want to do right now is focus on the Counter-Strike!
And one thing I need from all of you and everyone at home is to stay positive, stay hype, and give everyone your energy. Are you ready to raise the roof? Royal Arena, it's Scordian Lawler's time to take the mic. Make some noise! Give it to him, James. Goddamn right. Can't stop Counter-Strike. Can't stop Counter-Strike. And here we are back into the match. Start again. Score 7-5. G2 in the lead. Right in the middle of the game. In case you missed it, it was a tight first half. G2 winning in the end. MeGuSSa clawing back somewhat. Torji looking good. But I think G2 winning with confidence. They've been doing good on pistols. This one might seal the deal in this series if they get another one. MeGuSSa have to fight this. Can't be afraid now. Torzi slips down. Sudden pop, but Berettas. Oh. And those Berettas churn through a couple. Brolin with a helping hand falls back into the site. And so 2v4 is demanded here of G2. You said at the uptick in pistols, something that's been going well for them. Well, reclaim the 2v4 on top, why don't you? Was it both on Inferno? G2 won? They won the second round of the map after MeGuSSa's one pistol. That's right. That force buy that caught him. So, looking to split 2-2 in the series thus far. Util goes out, good clear of sandbags. Gush on the boost. That's an open door. That's Nico shaving one off before the push comes out. A little pry over top of the jump up, still cautious of what feels like an inevitable flank, but so far Xerxin keeps his head down. They keep looking for it. They don't find them just yet, so he's got a good timing. Good job of clearing out all the potential positions though, right? Sandbag, short side, all is here for G2. They've got a clear picture of what they have to do to get this one over the line, but they were right. Slowly but surely, that flank comes through. Xerxin plays his hand, Nico's dropped, and we've got MeGuSSa to respond with pistol. Yeah, at least they made him work for it. G2 will be happy to get a plant in this situation, and the one thing that MeGuSSa have to prove, as you pointed out, is when they won their pistol on Inferno, it was immediately stolen back in round 2, opening the game. Sometimes it can do more to your mentality to lose the follow-up round, not just the pistol, so this is a good start, but they know a full buy is coming in. Love to see that energy from Torji. No doubt ahead of the game. He was so on point when it came to the complexity match as well. So good. Yeah, tore through it. You know, and at times he was the biggest question mark on the MeGuSSa lineup. Man, they were calling for his head. Right now, feeling like a win condition for MeGuSSa. HooXi, again the SMG. G2, that's a second. That's another force buy that's starting to work out. With a nade on sight, it'll soften them up nicely. Xerxin trying to clean them up. We get Hunter pressed into green. Deagle's right behind him. This Galil! It's a double kill! And it so falls on Torzi. Flash is fantastic, but nobody jumps on the moment. It's fine, they've got more to throw. They've got more pressure to chuck his way. He waits and hopes that Hunter oversteps, but they're lined up for the swing. They go wide. And a force buy out of G2 yet again. Yeah, perfectly coordinated. And the hunt is officially on. Couple good kills in that first map. Make some love. Make some love की लिख रखा है. And now another strong moment. Pistols up for MeGuSSa. Making love is something different. So despite the fact that they've won 2 pistols in these 2 maps, no conversions. This could be damning. They made almost no mistakes from first complexity. It was complexity they forced to make all the errors. Who knew G2 were going to play this good? Nice. Felt like he had some timing there as Hunter was playing with grenades. But all this forward move from MeGuSSa will be pulled apart. Fast move out from middle G2. No hesitation on this split. And hold on. Hold on. Okay. All's good. You know, you start to question whether you can skip a single protocol, whether you think a moment is safe.
Nico going to make sure that the depths of this map stay in the hands of G2, that lead is secured off of the back of the force by G2 looking for early team momentum. As if there was no gap in the action, G2 start off lightning quick, only headshots, minimal deaths here. No gun saved for MeGuSSa. Touching on 10 already. Within what feels like 20 minutes of the map starting. Is this really it? After all that MeGuSSa have shown us, flying through the RMR, barely losing any games. There's the duality to that statement though, right? All that MeGuSSa have shown us, well, they've shown us great things at the start of events, but they've also shown us time and time again these struggles in the playoffs. Cato. That was the last time. Everything looked great. Pressure. Until their final match. Pistols trying to throw something into the works from top mid, but again, anytime some slight advantage falls into the hands of MeGuSSa, there's a just as fast response. HooXi calling quick, and the pack of G2 players work their way up ramp. Again, it is just the vanilla pistols, that AK in the hands of Roland. Going for the boost, cut down, and Nico knows there's a second right there. He's not gonna give you a chance to catch your breath. He will not let you catch them off guard. This is G2 securing double digits early on in this T side. They will hunt each and every member of MeGuSSa down, and they will give them no space to breathe. Man, it's seldom you see so many teams like stage their run so well and then look so good coming into big matches that they should win and suddenly fail almost, it seems like, exclusively because of the pressure. It's unbelievable what we saw in the Spirit match yesterday. It might be unbelievable what we're watching versus MeGuSSa with MeGuSSa right now. But I'm sure there's also a part of MeGuSSa that wish that they had been tested a bit more, right? I mean, flying through in RMR, flying through a legend stage, or a elimination stage, excuse me, it's always nice to do. You would never choose to play more harder games and almost not make it, but... I believe you spoke to Cyclone once in the hotel. He said the same thing. He said, I wish my boys were pushed a little. Yeah. I wish that they were tested. And to be honest, in their opening best of ones, they were 11 rounds from a static, 11 rounds from Eternal Fire. It was that complexity smash that suddenly sent the uptick in confidence for MeGuSSa. So here we stand, 4-round game. G2 on the precipice of winning their quarter. Hunter very rapid on the chase. Brolin, ooh, catching MeGuSSa. So it's Brolin's eyes down the ramp early on, now softened up to 40 health. His teammate towards B2. Okay. Him and Torji side by side here, looking to draw the line in the sand on the ramp. And HooXi's off, not enough to reclaim just yet. Guns out for MeGuSSa, and a 2K answer. Yeah, that's an excellent start here. We saw this moment on Inferno. It led to some rounds back. It's less deep of a scoreline right now. G2 5v3. I think they have this in the bag. This has been a key position to play, to hold on the site, play in passive setups. G2 know they have the map to themselves. That is the basement. No push will come. What do we think? Can they secure a plant? Well, they definitely crept close enough, that's no doubt. This boosted position, he's not reloaded this whole entire time. Torsi's working with 8 bullets. 8 bullets, yeah, and they have no nades actually. It's not a lot, man. He's gonna have to get the first kill and hope that there's not a multi-frag that presents itself. HooXi softened up, Hunter comes in from the sidelines, and now with his hands busy, he's covered out by Nexa. They got close enough, a ton of space given over. Oh, G2. This might be a mistake too many. What do you have in store? Numbers have been evened out. Now more damage. Where's that even coming from? It's got to be spam from the back line. HooXi nails it. This is a 3v5. An op on HooXi. A 3v5 they walk away from. They pick 2 passive positions to hold down that site to get 1 kill and keep the advantage alive. And Torsi is sitting up top with 8 bullets on not an op and no retake utility between either player there.
अरे Don't they have a मैक्स single लॉस बोनस पे है फिर flashbang? भी Not in a position to use it. मतलब ठीक है कर सकते हैं एक ड्रॉप आई थिंक I don't think Shuhei would have let that happen if he was sitting on the site. What was the idea there? Obviously, if Torzi 8 bullets, sharpshooter gets a shot. But there was 40 seconds between when he got boosted up and when he first made contact with anybody. That's not a good sign. I mean, I don't know how else to put it. This is a round that started off 5v3. Perfect opening play down the ramp, lots of pressure. G2 with one play to make, no flanks coming in. But the bag is fumbled. Catching Shuhei as he tried to walk up. You know, he was looking to take that deeper angle. That one smoke on the short side kind of pushes Shuhei into the waiting scope of HooXi. Ooh, missed shot. A lifeline here for Mouse. Looking like they want to pressure down. And sure enough, Brolin keeps it clean to drop Nico. Bob's not far off. Oh, what? He tracks him down. Short. Shuhei tries to get frisky. MeGuSSa's down to dance. And with that, man advantage reclaimed. He sees a sliver of your head. Brolin's got to keep it crouched. It's like one-way glass for him. Little peek out from Brolin as he crawled out. MeGuSSa's not going to let him get away. That wall bang's so damn close. It's as if he knows Torzi's going to be feeling that. Yet again, he's not working with the AWP. His second set of hands comes over from Zershin, looking to be the help that's needed here on ramp. They're actually just waiting for Act 2. Same exact approach, different timing. But again, forego control of that ramp, allow for G2 to get close, and suddenly you've got bigger problems. An incendiary meant to disrupt them at 25, still enough time for them to try and overwhelm this site. It's Zershin quick on that rotation, but just like that, G2 are gone. Now, Nex has got a choice. Does he come over mid as they arrive, or does he try to cut off the rotates that is indeed barreling back? 10 Zershin seconds. looking to come help Jimpat. Jimpat, oh, he's gonna cut down the first cross. There's Hunter running forward with the bomb. He's got time. Just in time to plant. Down it goes. And so Torzi has to somehow get this site rolling. A peek back from MeGuSSa, and G2 will give them no chance. MeGuSSa was suffocating Impact right there. 4 frags peppered in throughout that default on the A ramp, shutting down the pushes. Bringing forward a fight, a bright future here at G2. The tracking shot on the no-scope to Shuhei to kick things off, and it felt like that was going to be the one for fun. You got out of the round. No, he kept it going. He wants the final word in this head-to-head between him and Torzi. Yeah, it wasn't looking good for MeGuSSa at the start. Torzi had the angle, but MeGuSSa को सबके सब पहले लो कर दे रहे हैं. The one piece of G2 that the confidence never falls away from. This could be it. We get the peek out of HooXi on the ramp. Everything goes the way of G2. Inch by inch, frag by frag, they can feel it. The CT's presence and their chance to extend into the semifinals. Torzi, what? No way! MeGuSSa is ripping them apart. There is no heartbeat, there is no lifeline, there is no future here in Copenhagen for MeGuSSa. Yimfat dreamed of a chance to play to the finals like his brother before him. And with that SMG, 4 kills to his name, he is cut down. Wow. And just like that, they've managed. Divine intervention ushers them into the playoffs, and the soldiers of God march on. It's a massive moment for G2 here in top 8, proving they deserve to be here. Everyone played so damn well in a match that not many believed in them to win. And if you had just started watching CS recently, you wouldn't understand why. You think G2, that's a name I recognize. But MOUZ, what they did to get here, how cleanly they executed each of their opponents to set the stage for a major finals run. And now in the quarters, they get cut down. It's the experience that ends up shining through. 2 of the youngest rosters in the event between Spirit and MOUZ, and both falter.
FaZe and G2 will continue. बहुत सारी देख ली देख ली हाँ इस साल भी कुछ कुछ आई है क्या करते हैं अच्छा But he said that if देख it लो was कोई going देख to सकता है happen, तो it had to be him. All of G2 come together, pick up both pistols, and then the pistols they lose, they force buy to take that back. The pressure was on MeGuSSa from the get-go. And that pressure is where they crumble yet again. अभी जो रेड आई थी वो अच्छी And what matters here is that this crowd has stayed very strong. देख Even though सकते this हो, was देखो भी क्या है। a wild series and a wild experience for you, I want to focus on the positives. Your Inferno has been looking great in general, but this is probably the best it's looked throughout the whole tournament. Would you agree? Yeah, I mean, the result speaks for itself. So, yeah, very happy with how we played both maps, and it's looking good so far in playoffs. And HooXi, top fragging, are we going to rely on that a little bit further? Yeah, he has been insane. Honestly, I feel so bad that he didn't clutch his pistol as well. He played it amazing, so I'm really happy to see him play so good and call as well in front of the home crowd. So everything is going good in our camp right now. And in terms of things going good in your camp right now, what was it like for you guys just feeling the stage again and feeling yourselves here? Could you notice an improvement? Yeah, I think we definitely geared up a bit more than the group stage, and we knew that MeGuSSa is a very strong team, but I don't think we could have played worse than we did in the group stage. So I think we really focused on how to improve ourselves. I don't think we needed to fix so many things in game, but more like outside and mentality-wise. So I'm really happy with how we just approached the game in general, and we were the one dictating the pace all the time, and we were the one being aggressive, getting the entries left and right. So I would say, I mean, we have more experience on the stage for sure, and I'm happy that it's showing. And in terms of it showing, your next game will now be against Na'Vi, and they have been a difficult team for you. You looking forward to that one? Yeah, I mean, that's definitely going to be a harder game, especially against them. We have lost, I think, last 4 or 5 times we played versus them, but if we win tomorrow, I take all of these losses, and I think tomorrow is going to be, it's going to even out with that win tomorrow. That's what it's all about. Anything you want to say to all the fans out here supporting you guys? Thank you all, guys, for staying with us here tonight. We obviously had some difficult situations, but yeah, I'm just happy that you guys still stay calm, showed so much passion. Atmosphere was amazing throughout the whole game. Nothing could disturb us. So thank you all for coming, and I hope you're going to get even more exciting games from tomorrow on. That is what it's all about. You have been amazing, Royal Arena. Give it up for Nico and G2. Thank you so much, Banks and Nico, and thank you for that wonderful message to indeed the part of our crowd that has been supporting you and all of us for all that time. It's a little bit hard right now to talk about everything, but I want to take Banks' example and talk about the positive, being the positive energy that was here, not the other stuff, and the positive energy that G2 brought onto the server. And I mean, we did say it before. We said, if it's not gelling, but you get on stage and you